From the foundation. From the foundation. No, sir, General Colonel Malik. नहीं Colonel Malik. Colonel Malik. Good morning, everyone. It gives my co-host, Colonel Amit, and me immense pleasure to extend you a very warm welcome on behalf of the United Service Institution of India and the War Wounded Foundation to today's joint seminar on war disabled personnel of Indian Armed Forces, challenges, concerns, and aspirations. Before we begin today's proceedings, may I request you all to please put your mobile phones on silent. As you already know, this is a joint seminar of the United Service Institution of India and the War Wounded Foundation. And before I request the Director USI of India to deliver his welcome address, I will briefly share his profile with you. Major General B.K. Sharma, the Director of the prestigious United Service Institution of India, which is the oldest think tank of the country. He assumed the directorship of USI in January 2020. Prior to his elevation, he was the Director, Research and Head of the Center for Strategic Studies and Simulation at the USI. He specializes in strategic net assessment, scenario building, and strategic gaming. He is a member of the Academic Council at the National Defense College and commanded the 6th Sikh Light Infantry and Infantry Brigade in a strike corps and a mountain division on the China border. A recipient of awards of the Ati Vishesh Seva Medal and Sena Medal twice from the President of India for rendering distinguished national service and display of courage and bravery. He regularly writes for Indian and foreign journals and participates in seminars in India and abroad. I would now request Director USI, Major General B.K. Sharma, to deliver the welcome address. नमस्कार। टाइम बचाने के लिए मैं हिंदी में बात करूंगा। सबसे पहले मैं यूएसआई और वॉर वुंडेड फाउंडेशन की तरफ से जनरल वीपी मलिक, जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन सीओएससी रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल ओबराय, जो हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और साथ में अभी प्रेसिडेंट हैं वॉर वुंडेड फाउंडेशन के। हमारे बीच में जनरल कार्डोजो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वॉर वुंडेड फाउंडेशन के, और जनरल मिस्त्री, जो कुछ लम्हों बाद वॉर वुंडेड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। मेरी तरफ से जितने भी पैनलिस्ट आए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हाउ टू डील विद वॉर वुंडेड इश्यूज, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और ख़ास तौर पे जो बहुत कंट्री के डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे वॉर वुंडेड जो फ्रेटर्निटी आई है, उनका भी स्वागत करता हूं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ डिजिटल मीडियम के द्वारा बाहर के स्टेशन से भी जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं
धन्यवाद करना चाहूँगा जनरल ओबराय का, जिनकी विजनरी लीडरशिप के तहत इन्होंने यूएसआई के अंदर एक चेयर ऑफ एक्सेलेंस वॉर वुंडेड के लिए फाइनेंस की, और इस कोलैबोरेशन के द्वारा हम हर साल इस किस्म की इवेंट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे वॉर वुंडेड के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का। फिर इसके अंदर हम जो है हर साल जो है ऐसे कंपटीशन करवाते हैं, और साथ में काफ़ी सारा लिटरेचर और जो ओकेजनल पेपर्स हैं, इस किस्म का लिटरेचर जो पूरी जो इकोसिस्टम है जिसको एड्रेस करना चाहिए वॉर वुंडेड के इश्यूज को, उनको हम सेंसिटाइज करें, उनके साथ हम ये इशू रेज करें, तो उसके लिए वो लिटरेचर निकाल रहे हैं। हम ये सारा काम जो है हमने करना था 2 साल पहले, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से हम ये नहीं कर पाए, और अब पैंडेमिक थोड़ा सा ईज आउट हुआ है तो हमने ये कार्रवाइयाँ जो हैं अभी शुरू की हैं। आप जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नोट पढ़ा है जो जनरल ओबराय ने लिखा है, और ये कॉन्सेप्ट नोट जो है उनका पूरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एज अ वेरी सीनियर मिलिट्री लीडर, और एक वॉर वुंडेड होने के नाते उसका जो निचोड़ है इस के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है, और उसमें इन्होंने खास तौर पे जो बात की है कि एक सोल्जर, सेलर या एयरमैन जब वो मिलिट्री के अंदर आता है तो उसका क्या बिलीफ होता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं सर्विस से, कि कल को अगर वो कैजुअल्टी हो जाता है या वो अपना हाथ पांव गुवा बैठता है तो सिस्टम सोसाइटी उस तरीके से क्या डील करेगी। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और ये इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें इस चीज़ का जिक्र किया है। साथ में इन्होंने ये भी चीज़ जो है, ये मुद्दा अपने कॉन्सेप्ट पेपर में लाया है कि क्यों जो वॉर वुंडेड हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है विज़ावी वो लोग जो किल्ड इन एक्शन हैं या जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं। इन्होंने ये भी इस चीज़ पे जोर दिया है कि किस तरीके से हमारी जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं उनमें उनका हमें रिव्यू करना चाहिए और उनमें बेहतरी लानी चाहिए जो लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं वॉर वुंडेड की, ताकि उनको एड्रेस किया जाए। और इस सब चीज़ के लिए एक एटीट्यूडनल चेंज, हमारे सोचने का ढंग, हमारा कंडक्ट, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जो है एटीट्यूड से शुरू होती है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो इनके कॉन्सेप्ट पेपर में है वो है कि डाटा बैंक ही नहीं है। इतनी सारी एजेंसी जो है वॉर वुंडेड के इश्यूज के साथ डील करती हैं, तो एक पूरा होलिस्टिक जो डाटा बैंक क्रिएट किया जाए, एक सिंगल विंडो हो जिसके तहत हमें पता लगे कि वॉर वुंडेड कौन है, किधर है, कहाँ रहता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि उसको उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। इसके अलावा और भी चीज़ें इन्होंने जो है उसमें ली हैं कि इसमें सिस्टम क्या होना चाहिए, अवार्डिंग ऑफ डिसेबिलिटी का, ये चीज़ सारी चीज़ें मुद्दे आगे आएंगे। और एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है उसके बारे में इन्होंने बात की है, किस तरीके से देनी चाहिए, एनजीओज के साथ क्या कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जो एप्लीकेबिलिटी है डिसेबिलिटी एक्ट 1995 उसमें डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में, और जो सर्विंग या जो हमारे रिटायर्ड डिसेबल्ड है उनके बीच में। इसी तरीके से एक एस्पिरेशन देने की ज़रूरत है वॉर वुंडेड को, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अब उसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो गई है। किस तरीके से वो एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर या पैरा ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सोसाइटी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या इंसेंटिव्स होने चाहिए, और एक किस तरीके से वॉर वुंडेड के जो इश्यूज हैं उनको विजिबिलिटी दी जाए। खासकर आज डिजिटल मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका, तो इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात की है। अब जब मैं कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ रहा था और साथ में जो बाकी जो पैनलिस्ट बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को जो पैनलिस्ट के पेपर्स हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं या उनको और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी लाते हैं, जो आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो आपका जो बेसिकली आज का जो सेमिनार है उसमें हम बात करेंगे चैलेंजेस और कंसर्न्स वॉर वुंडेड के, किस तरीके से उनको एक डिग्निटी, एक इज्जत का मुकाम हम दें, किस तरीके से हम एक इकोसिस्टम पैदा करें जो इंडिविजुअल से लेके, यूनिट से लेके, मिलिट्री से लेके, सोसाइटी से लेके,
गवर्नमेंट से लेके नेशन से लेके ऑल होल ऑफ नेशन अप्रोच लेके चलें, उसके ऊपर बात होगी। और CSR के थ्रू जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू और NGOs के थ्रू सब मिलजुल कर किस तरीके से हम इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं और क्या प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें ताकि जो उसके अंदर जो जोश जज्बा जो उनके अंदर टैलेंट है, हम ऐसा माहौल पैदा करें कि वो सारा जो उनके अंदर जो टैलेंट है उसको आगे निखरने का मौका मिले। तो मैं अपनी तरफ से USI की तरफ से जितनी भी अभी आगे के सेशंस हैं उनके लिए सबको एक शुभकामनाएं देता हूं कि हो सकता है कि इस इवेंट के बाद कुछ हम ऐसा एक पॉलिसी पेपर बनाएं जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस इसकी जो हैं वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी इन द मिलिट्री एंड इन द गवर्नमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है वहां पे चली जाएं और फिर हम ऐसा एक और माहौल पैदा करें कि जो भी रिकमेंडेशन है देखें कि किस तरीके से एक माहौल पैदा किया जाए कि वो रिकमेंडेशंस जो है इम्प्लीमेंट हों। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जनरल ओबराय और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खासकर जनरल मलिक का जो इतनी दूर से इस मौके पे एज अ की नोट स्पीकर आए। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Let me now introduce Lieutenant General Asif Mistry, President Designate of the War Wounded Foundation. Lieutenant General Asif Mistry was commissioned into the Maratha Light Infantry Regiment. He superannuated on the 1st of November 2021, and his last assignment in service was as the Commandant, National Defense Academy, Karakwasla. Prior to that, he was the GOC in C, Delhi area. He has also been the Colonel of the Maratha Light Infantry, and the General has served in the most difficult assignments in the Army, including in Siachen and in counter-insurgency operations. General Mistry commanded an infantry battalion in Siachen Glacier, a mountain brigade in Upper Assam, and Rashtriya Rifle Force in Kashmir. He has now joined the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, as Director of the School of Internal Security, Defense, and Strategic Studies. I now request Lieutenant General Mistry to give us a brief on the activities of the War Wounded Foundation. General VP Malik, the former Chief of Army Staff, our chief guest for today. General Oberoi, the founder president of War Wounded Foundation. General Ian Cardozo, the vice president, two of the stalwart founder pillars and motivating force of this foundation. General B.K. Sharma, the director of USI, distinguished guests, friends from media, ladies and gentlemen, and above all, the war wounded personnel who have come for this webinar. On behalf of the foundation, it is my privilege to welcome you all for this joint seminar co-hosted by the USI and War Wounded Foundation and give you a brief insight into the activities of the foundation. The primary purpose of the seminar is to highlight the challenges, concerns, and aspirations of the war disabled personnel of our country, create greater awareness and understanding of the problems, is also to share experiences and learn from each other, particularly through some very inspirational stories of the war wounded personnel themselves. I would like to thank you all for your presence, which is ample testimony of your support for the worthy cause of looking after these brave men who lost their limbs and organs in the prime of their youth on many a battlefield defending the nation. The War Wounded Foundation was incorporated in August 2002, almost 20 years ago, by General Oberoi just after his superannuation from service on 1st October 2001. He's been very ably supported by General Cardozo in this venture. The foundation has been set up
with the aim of creating a sustainable avenue for the financial independence and long-term rehabilitation of war-disabled personnel of the armed forces. The aim is to ensure that all war-disabled personnel become productive citizens by participating in the economic development of the nation, besides being able to supplement the pension, including the war injury pension, and thereby empowering them to lead a comfortable, respectable, and most important, a fulfilling life. There are nearly 10,000 war-disabled personnel scattered in all parts of the country. On account of the extensive employment of our armed forces on both the external and internal challenges faced by the nation even today, regrettably, there is a constant addition to the number of such personnel. This is an environmental reality, a part of the professional hazards we face. Therefore, we have to have adequate arrangements to look after war-wounded personnel. And in this venture, we must be able to supplement the efforts of the system by way of such committed institutions like War Wounded Foundation. The foundation is managed by only 3 persons. The office bearers take neither any pay nor an honorarium. We have a modest office in Delhi manned by 2 persons who are paid employees. We are now in the process of setting up regional offices in different zones of the country. The foundation does not get any fund from any government agency. All activities are wholly and solely financed by donations from individuals, trusts, groups, military formations, and philanthropists. During the initial period of the foundation, recognizing the reality that most war-disabled personnel would want to remain in or around their villages, having served in far-flung areas, we endeavored to take the work to them by organizing outlets or sub-dealerships for them in their villages or close to them, in conjunction with select corporate houses whose products have a rural market. This innovation resulted in these soldiers becoming soldier entrepreneurs. They sold the products in their villages and earned commission on the sales without feeling overhead. This was a successful venture, and we were able to secure outlets for nearly 100 disabled persons. A few years after, we changed tack and commenced providing skills that would assist them to stand on their feet. The skills identified are spoken English, computer literacy, communication skills, small repairs on TV, mobile, radios, etc., welding, cycle repair, and driving autos. As some of the older war-disabled personnel were reluctant to learn new skills, we have opened the facility to their wards too. Today, even in bigger villages and small towns, commercial training institutions are available. Hence, those desirous to learn new skills close to their homes, the foundation pays for their training. We call them skill scholarships. We have so far disbursed more than 6 lakh rupees for such scholarships. We visualize more personnel coming up to acquire skills for themselves or their wards. The foundation's other activities include filling teams of war-disabled personnel in various marathons. We had been doing so for the past 10 years before COVID brought temporary suspensions of such activities. Our participation, especially in Mumbai Marathon, which is a well-organized and lively affair, has been highly appreciated. We have taken part in the Delhi Marathon too, but I have found that the ambience lacks spontaneity, maybe because it is far too bureaucratic a city. Both our Vice President, General Cardozo, and the President, General Oberoi, with their artificial legs, have prominently participated in these marathons. Such participation is for the twin reasons of visibility
and motivation, besides mutual bonding and showing that disability is not the end of life. Our next project has been for provision of disabled-friendly toilets for those who are confined to wheelchairs at their homes. Over the years, it was realized that soldiers with paraplegia or quadriplegia often lead a dejected life due to complete dependence on their family members for everything, including the most basic requirements like use of toilets. Therefore, it was decided to provide disabled-friendly toilets along with suitably modified wheelchairs so as to minimize their dependence on others. We have so far provided this facility to 7 war-wounded soldiers. This indeed is a capital-intensive venture, but we are determined to implement it, as the benefits to the seriously disabled persons are immense. We also plan to provide such special toilets at facilities which the veterans usually frequent, yet those confined to wheelchairs are reluctant to do. The places we have in mind are the Jilla Sainik Board offices, which are co-located with veterans' canteens and pension-paying offices, as also ECHS clinics. We would request active support of Command Headquarters and Rajya Sainik Boards for this venture. Conducting rallies of war-disabled personnel has been one of the major outreach activities of War Wounded Foundation. We have so far organized 4 major rallies in the past. The first was at Delhi in 2007, with General J.J. Singh as the chief guest. The second was at Chennai in 2012, where the chief guest was General S. Padmanabhan. The third was in June 2016 at Chandi Mandir, where the chief guest was General K.J. Singh. And the fourth was held at Pune on 6th May 2017, where the chief guest was the then COS, late General Bipin Rawat. Albeit COVID-related restrictions over the last 2 years have greatly constrained these outreach activities. However, with gradual improvement of the situation, we would ramp up such initiatives. We have a dynamic and active website where insight into the activities of the foundation are uploaded. Observing norms of complete transparency and probity, details of all contributions are declared on the website. As we complete 2 decades of dedicated service, 2 of the pioneers will be hanging their boots, so to say. That is the President, General Oberoi, and Vice President, General Cardozo. I would be failing in my duty if I do not acknowledge their most invaluable contribution right from laying the foundation of the War Wounded Foundation and nurturing it over the years, building its financial strength and organizational capability, and providing a yeoman service to the war wounded. On behalf of the next generation of the leadership of War Wounded Foundation, I would like to reassure them of our commitment, sincerity of efforts, and honesty of purpose. I'm also sanguine that we would continue to benefit from their experience, knowledge, and wisdom. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir. Although most of you are well aware of our chief guest, I will say a few words on him. Our Honorable Chief Guest, General V.P. Malik, was Chief of the Army Staff of the Indian Army from October 1997 to September 2000. Concurrently, he was Chairman, Chief of Staff Committee of India from 1st January 1999 to 30th September 2000. During his tenure, he coordinated and oversaw planning and execution of Operation Vijay to successfully defeat Pakistan's attempted intrusion in Kabul sector in 1999. He was awarded the Ati Vishishta Seva Medal in 1986 and Param Vishesh Seva Medal for Distinguished Services in India in 1996. He was given the Excellence in Leadership Award by Atul Foundation, Pune
Distinguished Fellowship of the Institute of Directors, New Delhi in 1999, and Pride of the Nation Award by the Doon Citizens Council in July 2000, and the Punjab Ratna Award in 2019. Post-retirement, he was nominated as a member of the National Security Advisory Board for 2 terms. Apart from writing opinion columns in newspapers and professional magazines, he has authored 2 books, Kargil, From Surprise to Victory, and India's Military Conflicts and Diplomacy, an inside view of decision-making, published by HarperCollins, India. Currently, he serves as chairman member on the board of some well-known multinational companies. He speaks frequently to multinational corporate houses and institutions on strategic management and leadership issues. Sir, may I now request you to deliver the inaugural address? जनरल मालिक सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के सेशन का उत्तर दें। General Oberoi, President of the War Wounded Foundation, General Asit Mistry, President Designate of the War Wounded Foundation, General B.K. Sharma from my regiment, Director of the USI, chairpersons of the panel discussions, distinguished chairpersons, war wounded, war disabled friends, ladies and gentlemen. And amongst you, I can also see many distinguished people who have been working for the cause of the soldiers, not only in one part, but all over India. Jai Hind to all of you. आप लोग जो सारे रेड टी शर्ट में बैठे हुए हैं, आप तो एक चैलेंज फेस किया है आप लोगों ने, सर्विस के अंदर भी और सर्विस के बाहर भी, और अभी भी वो फेस कर रहे हो। एक छोटा सा चैलेंज मुझे आज फेस करना है। मैं अपना जो लेक्चर है वो इंग्लिश में लिख के आया है, और मैं समझता हूँ कि वो जो है उसको थोड़ा ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बताना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कितने हैं आप में से जो इंग्लिश भी समझ सकते हैं? हाथ खड़ा करें। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करूँ। पहले तो मैं जनरल ओबरॉय और जनरल शर्मा दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना मांगता हूँ कि उन्होंने इस जॉइंट सेमिनार के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सबके बीच में बैठकर एक बहुत बड़ी इज्जत दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सेमिनार आज हो रहा है, दिस जॉइंट सेमिनार, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। अभी तक शायद आपने 4-5 बताए किए हैं, लेकिन ज़रूरत है और भी करने की, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम ही नहीं है आप लोगों की देखभाल करना। ये काम जो है पूरे देश का है और सब सिटीजन्स का है, देशवासियों का है। जब आप लोग लड़ाई में गए थे तो उस वक़्त आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और जख्मी हुए। क्यों? क्योंकि आपको देश की कंसर्न थी और देशवासियों की कंसर्न थी। अभी ये जो कंसर्न है वो मैं समझता हूँ देशवासियों की है, आप सबको देखभाल करने के लिए, क्योंकि आपने उनके लिए काम किया है पहले। तो ये सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह का ये नहीं काम है, और ये जो काम फाउंडेशन कर रही है, मैं बाद में भी बोलूँगा, अभी शुरू से मैं बोल देता हूँ कि इसको अपना जो दायरा है विजिबिलिटी का, लोगों से बातचीत करने का, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको और दायरा को बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं होना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उनका काम है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी बनती है, लेकिन ये फ़र्ज जो है ये देशवासियों का भी है। चैलेंजेस, कंसर्न्स, एस्पिरेशंस एक सोशल सब्जेक्ट है और सोशल सब्जेक्ट्स जो होते हैं सोशल, वो बदलते रहते हैं समय समय के बाद भी। जो सोशल चीज़ें हम लोगों को अफेक्ट करती थी, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या इवन लास्ट वॉर जो 99 में हुआ जब मैं चीफ था, वो सोशल इवेंट्स और सोशल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बदल गए हैं। तो इसलिए हमको जो काम करना है वो एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते हो, उसको हमको आगे आगे देखना पड़ेगा। जनरल ओबराय ने जो अपना ब्रीफ लिखा है उसके बीच में उन्होंने बोला है, आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ रैशनलाइजेशन सच चैलेंजेस सून बिकम बिगर, डिफिकल्ट एज द डेज पास टू मंथ्स एंड एट टाइम्स टू ईयर्स। और मैंने खुद देखा है कि जिनको शेल वुंड्स हुए, जिनके हड्डियों को स्प्लिंटर्स लगे, या वो जो तकलीफ उनको पहले थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो तकलीफ, वो दर्द, वो बढ़ता भी जाता है। अभी मैं जनरल कार्डोजो से बात कर रहा था, मैंने उनको पहले देखा हुआ है भागते हुए, पर अभी वो तकलीफ में हैं। इसी तरीके से मेजर डीपी सिंह हैं जिन्होंने अपनी टांग खोई है, उनसे भी मैं देखता हूँ कि उनकी भी तकलीफ बढ़ गई है। तो ये जो बदल रही है और तकलीफ बढ़ती है, तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ें लागू थी 15 साल पहले, उसको हमको दोबारा देखने की ज़रूरत है। वही चीज़ें, वो फिक्स जो चीज़ें नोटिफिकेशन निकले हुए हैं गवर्नमेंट के, वो जब तक रिव्यू नहीं हम करते रहेंगे, उनको फिर देखते नहीं रहेंगे और उनको फिर नए समय के साथ में उनको एप्लीकेबल नहीं बनाएंगे, तो वो काफ़ी नहीं है। मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब आई फील दैट देयर वाज मोर ट्रिविया देन सब्सटेंस फ्रैंकली, एंड आई एम, अब उसमें लिखा हुआ है कि उनको टेलीफोन दिया जाएगा। आज किसको परवाह है टेलीफोन की? ये चीज़ लिखने की है ही नहीं, पर अभी भी वो नोटिफिकेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो एक दफ़ा नोटिफिकेशन लिख दिया और उसके बाद में फिर उसको पीरियोडिकली 3-4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में रिव्यू नहीं किया, तो वो मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं है। तो ये प्रेशर जो है हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, या अपने सर्विस हेडक्वार्टर्स में, और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बना हुआ है, इन सब जगह के ऊपर हमको ये कहने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले, मैं 4-5 दिन पहले गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में गया, लैंसडाउन में। और क्योंकि मुझे यहाँ पर आना था तो सब्जेक्ट जो है मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट से बात की कि आपके पास कितने वॉर डिसेबल्ड लोग हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी उनको। फिर उन्होंने बोला कि वॉर डिसेबल्ड हमारे 40-50 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक अपनी एंटाइटलमेंट के बारे में पूरा पता नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वॉर में आपको वुंड लगा, उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि मुझे इसका बाद में क्या एंटाइटलमेंट मेरी बनती है। उस वक्त तो आपको यही था कि कईयों ने तो मुझे बोला कि सब हमको वापस जाने दो पलटन में। मुझे याद है 1999 की लड़ाई में।
तो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड्स में ये और उनके सेंटर कमांडेंट से बात जब की तो तकरीबन उन्होंने बोला कि 40-45 लोग ऐसे हैं वॉर डिसेबल्ड और वॉर वुंडेड जो उनको मालूम नहीं है कि उनकी इंटाइटलमेंट क्या बनती है, अब उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि वो लोग पहाड़ों में फैले हुए हैं गढ़वाल के सोल्जर्स, तो उनके साथ में मिलाप करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्होंने कईयों ने अपने टेलीफोन नंबर बदल दिए हैं। प्रैक्टिकल बात है। और उसके अलावा उनके पास तकरीबन 150 लोग और ऐसे हैं जो दूसरे वजह से डिसेबल हुए हैं। और हालत ऐसी है कि अब क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर अपना फैसला करने के, जिनको मालूम है वो कोर्ट्स में जाते हैं, जिनको नहीं मालूम है तो वो बेचारे जहाँ पर भी बैठे हुए हैं तो वो सहते रहते हैं। अब उन्होंने एक जैग ऑफिसर को वहाँ पर उस सेंटर में लगाया है सिर्फ इस बात को देखने के लिए। So you can imagine the difficulties that people are facing on account of lack of data at the basic place. Soldiers' home. If there is no data available and if the data is not being updated at the regimental center or in the units, how do you expect to do justice with these people? I'm trying to explain this more to thee. I mean, this is something which I saw with my own experience just a few days ago. So, पहली बात तो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि हमारे इंटाइटलमेंट्स क्या बनती है, हमारी मेडिकल बेनिफिट्स हमको क्या मिलते हैं, और जिनको पता है तो वो कई हैं जो किस्मत, एक किस्मत बड़ी चीज़ है हमारे हिंदू धर्म में कि ये तो मेरी किस्मत में लिखा हो, उसको छोड़ देते हैं। और कई हैं थोड़े से जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं। जनरल ओबरॉय ने, जैसा कि जनरल शर्मा भी बता रहे थे, एक बहुत अच्छा ब्रीफ बनाया है और मुझे भी वो उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है इन चीज़ों के ऊपर। और सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये जो नोटिफिकेशंस या सर्विस एक्ट्स बने हैं या रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, वो उसको हमको हर 3-4 साल के बाद में रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो हालात 5-7 साल पहले थे और आजकल तो समझ थोड़ा जल्दी ही निकल रहा है, गुजर रहा है, तो उसको। और जब ये नोटिफिकेशन बनते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर war disabled people are incorporated in those consultations or not, and I doubt it. So जब तक एक एक्सपीरियंस आदमी, और आप सब जो रेड टी शर्ट में बैठे हुए हैं, उनको साथ में बिठाया नहीं जाए, एक बाबू साउथ ब्लॉक में या कहीं और, उसको नहीं समझ आएगी कि हमको क्या क्या चीज़ देखनी है। So I believe that this review of these notifications, this needs to be done not only amongst those stakeholders who are wearing uniform or who are wearing those ties and all, but also with the stakeholders who have been affected. And I'm making this point, and that's where I feel that the War Foundation representatives should be there when those are being reviewed. अभी मुझे बता रहे थे कि वॉर वुंडेड 10,000 सोल्जर्स हैं, वॉर डिसेबल्ड. You mentioned that, somebody mentioned that. I'm not sure whether that's a correct figure. I'll give you some figures that I have seen. Generally, एक आदमी जब लड़ाई में मरता है, शहीद होता है, तो 3 गुने लोग उसमें wounded होते हैं. मेरे पास फिगर्स हैं. 1947-48
इंडो पाक वॉर में 1104 सोल्जर्स किल्ड, 3154 वर वुंडेड। 65 में 3264 वर किल्ड, 8623 personnel were wounded. In 1971 war, 3843 were killed, 9850 were wounded. And in Kargil war, and I should know that, we had 473 soldiers killed due to enemy action. I'm not talking about other action. I think the total figure went to 525, but 473 were enemy action. And 1060 personnel were wounded. So इसलिए मैं आपकी जो फिगर है 10,000 की उसको थोड़ा शक से देख रहा हूँ. I know. I can, but even then, I mean, I'm giving you these large figures. And amongst the wounded, coming to your point, 53.20%, I'm talking of Kargil war, they suffered splinter and shell injuries. 21.03% were victims of gunshot wounds. And the remaining 26.73% were afflicted by burns, fractures, frostbite, and so on. One officer and 3 other ranks during Kargil war lost sight from both eyes. That's why I am asking. These are the figures I know because पर लड़ाई में जब ये चीजें गर्मा गर्मी होती है तो उस वक्त हमारे जवान क्या देखते हैं. मैं आपको छोटे से 2 किस्से बताता हूँ. मैं प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को उन दिनों में 92 बेस हॉस्पिटल जो श्रीनगर में है वहाँ पर लेके गया. तो एक जवान के पास जब गया, कैसा है, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि सब ठीक है साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. साहब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो मुझे वापस पलटन में भेज दो. गढ़वाली जवान था, मुझे याद है. थोड़ी देर आगे गए तो एक शायद एनसीओ या हवलदार शायद नाइक या हवलदार था. फिर वही बात, कैसे हो, सब ठीक है. उसने कहा हाँ सब ठीक है. तो उस वक्त कोई नहीं कहता कि सर मेरा बाद में क्या होगा या क्या होगा. थोड़ी देर आगे गए तो प्राइम मिनिस्टर को उसने फिर आवाज़ ऐसे दी कि सर. तो हम लोग वापस गए उसके पास. तो उसने मुझे बोला कि साहब, को भी प्राइम मिनिस्टर थे, कि सर हमको हथियार जो है थोड़ा हल्के हथियार दो ताकि पहाड़ चढ़ने में हमको दिक्कत नहीं आए. सो जब ये इंजरीज आपको लगती हैं, वुंड लगते हैं, उस वक्त नोबडी थिंक्स ऑफ कि मेरे साथ में लाइफ में क्या होगा. एंड दैट इज व्हाट पीपल हैव टू रियलाइज. द सफरिंग कम्स लेटर. और जैसे जैसे वो बढ़ती है तो उस वक्त हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. उस वक्त मोमेंट नहीं, बाद में भी. इंसिडेंटली आजकल जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं, आई मस्ट मेंशन टू यू, at an average 2 to 3 persons get wounded every day. Every day. That is the average. Who's talking about them? Nobody. Even if a person is killed these days, there is no mention, hardly any mention in the newspapers. What to talk of these wounded people? So it's a, मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं. और जब आगे जाके देखेंगे तो आपके जो हथियार अभी ऐसे बन रहे हैं, यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे टीवी के ऊपर, कि वो हथियारों की एक्यूरेसी, हथियारों की लिथैलिटी, हथियारों की रेंज बढ़ती जा रही है. और उसकी वजह से जो पहले लड़ाई हुई है उनसे ज़्यादा हमारे कैजुअल्टीज होंगी, both killed and wounded. So we have to think of that. And therefore I feel
that just having one war wounded foundation and working is not good enough. You have to now expand, think of not only present but you have to think of future. हमको आगे का भी देखना है, उन चीजों को सोच के प्लान करना पड़ेगा। सो हम लोगों के जो काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म में या यूनिफॉर्म के सिविलियन जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को देखा जाए और इन चीज़ों को अपडेट किया जाए, which I feel is not being done adequately. I mean, I'm in touch with some people, you know, and not only with the war disabled or war wounded, but one has seen boys who get wounded, who get injured during training. I mean, nothing is being done for them. Asit knows it, he's been in India. We need to do a lot more about these things. And दूसरी बात यह है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है, और एक और जो हम लोग एक लीडरशिप के बारे में जब बात करते हैं तो एक लीडरशिप की क्वालिटी है एम्पैथी। I think that empathy part is gradually getting eroded somewhere. Those people sitting in the army headquarters, AG's branch particularly, or the other personnel branch, that word empathy is not there. When you find AFT के बीच में भी कोई केस जीत गया डिसेबिलिटी पेंशन के लिए या ऐसी चीजें हो, फिर भी उसको चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट्स में जाकर कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों देना है, इसको क्यों देना है। सो दो तीन बातें मैं आपको पहले बोलूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे जो डेटाबेस है सेंटर्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर, और फिर जब वो बन जाए, ठीक हो जाए। इंसिडेंटली पिछले जो 2 साल में हमारे जो जवान रिटायर हुए हैं, घर गए हैं, वो लोग सारे यूनिट से डायरेक्टली घर गए हैं। वो लोग सेंटर में नहीं गए, रिकॉर्ड्स में नहीं गए, और उसकी वजह से और भी खराब हालत हुई है इन चीज़ों के ऊपर। They never went to records, they never went to the center last 2 years because of the COVID condition. So situation which was bad over the last 2 years had become worse. और एम्पैथी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हर एक लीडर की ड्यूटी बनती है। इसीलिए ही आपने देखा होगा कि जब भी लड़ाई होती है तो जितने भी नेता हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब जाते हैं हॉस्पिटल में पता करने के लिए या कहीं पर भी उनको मिलने के लिए। एक बड़ी मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर को मैं 2-3 हॉस्पिटल में लेके गया उस वक्त उन लड़ाइयों में। फील्ड मार्शल मैनिक शॉ कुन्नूर से दिल्ली में आए और वो हॉस्पिटल में जाने के लिए खास वहाँ से मेरी वाइफ उनको लेके गई RNR हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में जाने के लिए। सो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है, और उसको समझाना पड़ेगा जो लोग जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, देख पाते हैं। और फिर मैं इसलिए यही कहता हूँ कि हमको ये दायरा जो है और इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ मेरे से पूछेंगे कि आपने जब चीफ थे तो क्या किया, खासकर लड़ाई के वक्त। मैं थोड़ी से 2-3 बातें बताता हूँ। लड़ाई के वक्त तो आयरन इज हॉट सो यू हैव टू स्ट्राइक, दिस इज व्हाट वी डिड। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं आती कि जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोला तो उन्होंने किया। और एक तो उस वक्त हमने बेनिफिट जो थे, फाइनेंशियल बेनिफिट बढ़ाए, बोथ फॉर पीपल किल्ड एंड दूसरा हमारे पास पैसे बहुत आए, और इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिर पब्लिक जो है ऐसी जगह के ऊपर ऐसे चीज़ों में मदद करने के लिए बहुत तैयार है हमारे इंडिया में। सो इतना पैसा आ गया कि मुझे अपने आप क्या करेंगे, तो हमने बोला कि 1947-48 के बाद में जो भी लोग शहीद हुए हैं या जिनके परिवार अभी हैं, नेक्स्ट ऑफ किन इज देयर, हमने उनको 1-1 लाख रुपया
सीधा ही दे दिया। और जो जो wounded थे, we gave them 50,000. Now, this is being claimed by the Ministry of Defense in their notification. Let me assure you, they did nothing at all. This money was given to donated to the Army Central Welfare Fund, and we made use of this Army Central Welfare Fund to give this money, because I didn't want to keep so much of money in our coffers. और प्राइम मिनिस्टर को मैंने बोला कि एक हमारे पास सेंटर था उस वक्त इन पुणे फॉर द आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। सो उनको बोला, मैंने कहा कि एक काफ़ी नहीं है। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसे दिए। सो वी ओपनड 5 more. Today I think there are 6 सब सेंटर्स, 5 और सब सेंटर्स खुल गए, क्योंकि लड़ाई में ज़्यादातर जो है हड्डियों की ही ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो उसमें वो किया। और ये एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ अपने आवा के बारे में। खासकर उस वक्त हमारे आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बहुत काम किया। एंड आई जस्ट वांट टू अप्राइज पीपल हु आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, आई हैव जस्ट नोटेड दिस। Often, this is extract from my book, really. Often the wounded soldiers arrived in blood-splattered clothing straight from the grisly battlefield. Naturally, they had no personal clothing or toiletries with them. The AWA rushed to provide them with undergarments, shaving kits, soaps, shampoos, sleeping suits, airbags, slippers, thermos flasks, writing material, and pens and magazines in regional languages. AWA get well cards with personal handwritten messages were placed on their bedside table. As piles of encouraging and supporting letters arrived from all over, the AWA volunteers read them out to the individual recipients. They also replied to letters on their behalf, on the wounded soldiers' behalf. Some volunteers took along their cell phones every evening so that bedridden patients could speak to their loved ones. I've just taken this extract of the AWA activities, and I was fortunate my wife was then ex officio president of AWA. और मैंने ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये हालत होती है उस वक्त. And I think the NGOs need to realize this. And therefore, we have to have some kind of a connect with the NGOs, and not only the AWAs, but even the other NGOs. डेटाबेस के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पहले भी कह चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा नहीं बोलूँगा। और बट दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और जब तक वो डेटाबेस नहीं बनेगी, और एक दफ़ा डेटाबेस बन गई तो मुझे दिक्कत नहीं है इस बात की कि वो इस मैटर में कि why can't it be shared with the Zilla Sainik boards? Or if the Zilla Sainik boards are not functioning, why can't the station headquarters share it with the NGOs who are prepared to help? And I know all over India they are prepared to help. So I think we have to reach out for these things also. जनरल ओब्रायन ने मेंशन किया हुआ है, मेरा अपना विचार ये है कि अब हमको एक स्पेशल सेल खोलने पड़ेंगे फॉर वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स। ये हर एक को मिलाकर और उनके लिए इकट्ठे जो नोटिफिकेशन बन रहे हैं, दे आर नॉट गुड इनफ। तो थोड़ा बहुत उसमें कार्रवाई हो गई है कि वो जो दूसरे डिसेबल्ड सोल्जर बिकॉज ऑफ अदर इंजरीज और जो वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनको अलग अलग बेनिफिट उन्होंने लिखने शुरू कर दिए हैं। बट यू हैव टू हैव सेपरेट नोटिफिकेशन so that you can now focus more on this aspect. And unless you have the separate notifications, तो वो नहीं काम नहीं होगा। कुछ बातें आपने जो मनी मैटर्स के बारे में बोली हैं आपके पेपर में जनरल ओबरॉय,
awarding percentages of disability and the ex gratia grant. I will not be able to speak. I'm not in a position, but I think everybody has to show greater empathy for these. That's what I will say. At the moment, there are some negative people, and these negative people are not only the civilian babus, but let me assure you, there are some people in uniform also. We have a large number of bureaucrats there. So one more thing that I want to, that the DESW has already now started functioning with the NGOs. I know Mrs. Girish is sitting here. She attended last time. I didn't go for that function even, but they have now started taking note of the NGOs. And there are a very large number of NGOs, who are prepared, who want to help. And therefore, we have to gradually reach out to them. And I'm sure that they will do. Now, one point that I want to mention. अभी हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, मेरा पक्का मानना है। बहुत पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, सीधी बातों के लिए भी और गलत बातों के ऊपर भी। और अभी जो है सब कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो हैं, वो अपना 2% पैसा प्रॉफिट का CSR फंड में उनको देना पड़ता है। I'm not sure whether you are reaching out adequately. अभी पिछले साल मैंने ही अपनी कंपनी से, I'm an independent director there, I got 1 crore given to AWA for a working girls hostel. And this is the first sort of installment. He said that you keep working on that, we can give you more. अभी आप बता रहे थे Godrej हैं और कंपनियां हैं. So there are a very large companies, number of companies, and you have to reach out to them. And they are, जो CSR कमेटी में बैठे हुए हैं मेरे जैसे लोग, हमको पता नहीं चलता कि हम कहाँ दें पैसे. So you have to reach out to them, and there will be no problem of funds. I mean, giving 1 crore was not a big deal for a big company. So that's another source of, but of course they want proper documentation वगैरह. बहुत ज़्यादा भी नहीं, but the work is being done. So you have to do that also. Now there is a mention of the Disability Act which was passed by the Parliament in 1995. आपने लिखा है. उसमें I have to confess that although I became chief later on, I didn't get to know about this act at all. And I'm now looking forward to Navdeep's talk on this subject when he comes or wherever he speaks for. And one would like to see कि उसमें क्या हम कर सकते हैं. Lastly, मैं एक दफा फिर ये बताना चाहता हूँ कि while I do laud the efforts which are being made by the foundation to bring all war disabled soldiers under its umbrella and its work for their cause, but I do feel, and I'm emphasizing it again, that we need to further decentralize these efforts. And these efforts should now be visible not only at the central body, but even at the state and district level. It is possible for us. Let me assure you, by and large, Indian citizens have got a lot of sympathy for soldiers, and particularly those soldiers who are disabled. Every time I used to meet a person with a war wound medal, my first question used to be, कहाँ पर चोट लगी, कहाँ पर क्या है, अभी हालत क्या है, ठीक है. So it's not that, I mean, for us it was a duty, but others, they are, so you have to further decentralize your efforts and reach out to more people. And I think I've taken more time, but let me also wish you, your present joint seminar, as well as all your endeavors now and in future, a huge success. You'll need that. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. I now request the current president of the War Wounded Foundation, General Oberoi, to please commence the change of hierarchy proceedings.
अब हम निवेदन करते हैं हमारे मौजूदा अध्यक्ष जनरल ओबरॉय से कि हिरासती में बदलाव की कार्रवाई कर। वॉर वुंडेड फाउंडेशन आज से 20 साल पहले 2002 में सेटअप किया गया था। इस 20 साल में 2 या 3 लोगों ने काफी मेहनत करके, काफी मुशक्कत करके, काफी आप लोगों के लिए काम किया है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनरल कार्डोजो को आप जानते हैं, मुझे भी आप सब लोग जानते हैं। अभी टाइम आ गया है कि नई टीम बनने का, क्योंकि हम लोग अभी काफी दिन हो गया, 20 साल हो गया है, और इसीलिए आज के इस मौके के ऊपर जब हम पूरे वॉर डिसेबल्ड लोगों की बातें कर रहे हैं, हमने सोचा कि ये सबसे अच्छा वक्त है कि मैं अपना और जनरल कार्डोजो का रेजिग्नेशन पेश करूं, और नई जो टीम है, जो कि जनरल आसिफ मिस्त्री साहब अभी कंट्रोल करेंगे, उनको हैंड ओवर करूं। आसिफ, कैन आई कॉल यू टू कम अप हियर प्लीज? स्कूल है। Thank you, and we wish General Mistry the very best in carrying forward the great work of the Foundation. I now request Lieutenant General Vijay Oberoi to present the Honorable Chief Guest, General V.P. Malik, Director USI, Major General B.K. Sharma, and Lieutenant General Asif Mistry with mementos. अब हम निवेदन करते हैं हमारे अध्यक्ष जनरल ओबरॉय को, हमारे चीफ गेस्ट जनरल मलिक आज हमारे बीच 100 से ऊपर वॉर डिसेबल्ड सैनिक इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम चाहते थे कि आप में से हर एक को हम स्टेज पे बुला के सम्मानित करें, लेकिन समय की कमी की वजह से संभव नहीं हो पाएगा। तो हम 4 जो मेरे वेंचर की और 4 राज्यों के आएंगे जो आपके बिहार पे सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले हरियाणा से सरदार तस्वीर सिंह।
सूबेदार डूंगा राम राजस्थान से। पंजाब और राजस्थान के डिसेबल्ड सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जगदीप सिंह। और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन पी दयालन सेना मेडल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के डिसेबल्ड सैनिकों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारा इनॉग्रल सेशन समाप्त होता है और मैं निवेदन करता हूँ व्हील चेयर के डिसेबल्ड सैनिकों और लेडीज का कि वो फॉयर में चाय लगाई गई है, अपने चाय का प्रबंध किया गया है। बाकी लोगों से निवेदन है कि नीचे कोर्टयार्ड में आप लोग से चाय का प्रबंध किया है और चाय के बाद आप लोग से तीनों सेशंस में मुलाकात होगी। धन्यवाद। रख दिया सर, रख दिया। जनरल मलिक का था, उसने वापस कर दिया। Others will go down. Take it as your base. Wonderful. Yes.
उसको भी कम रखना, अभी कम रखना बिल्कुल, मैं उसको पढ़ा करूँ, आवाज बहुत ज्यादा गेन होगा। निकालो। लगाओ। इको आ रहा है। ऐसे मुझे नहीं पता लगेगा। इको आ रहा है वैसे ही बिना चलाए। You will know that 40 to 50,000 experiments come out. What is about a Jawan who joins the army at the age of 19 and for 20 to 24 years, 25 years, 40 हेलो साउंड ठीक है। हेलो 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 so the most large places, just forget about that. That's part of what they're signed up for. So let me tell you another dimension of there. If an army Jawan is lucky, he will get 2 months of annual leave per year. If he's lucky. Usually they don't get it because of requirement, but he gets 2 months of leave every year. Do the math. हेलो 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 वीडियो हेलो 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 ये तो है। हेलो 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 And he will do that until the age of 40, and at 40, the government of India will tuck him out into the city street. The only job we get there is 50 पे रखा है, 50 closing doors, taking the bottom of the car. That's the job we get. हाँ 50 पे रखा है तो वहां से बढ़ाओ फिर। Same soldiers, right? Engineering companies are communication networks, when communication networks are built, they are the ones who reach out there and in every disaster, in every they operate short है वहाँ 42 है। and our entire system was in Russian. Labor was in Russian, manuals was in Russian, and 10th class Jawan can operate third generation design. They can try third generation design and our country. हेलो 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 2 या 3 होंगी वीडियो। हाँ हेलो 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 Can you show me how the slides come?
I'm sitting. What's up there? Black here, one of the forward, right? Here forward, here again, here forward. दिखाओगे पीछे अभी के लिए ये डाल दो। ये क्या हो गया? Then you will push this on for me? Yes, I will. Sir, no problem. करना है, हाँ शो करना है इसको। अभी के लिए जब तक जनरल कार्डोजो बोले ये वाला डाल दो। अभी सबसे पहले आप ही कौन सा बोले? जनरल कार्डोजो तो उनका ये बैकग्राउंड स्लाइड डाल। सॉरी ठीक है ना? जैसे ये आपने हटा के उनका प्रेजेंटेशन पीछे ऑन है, उसका प्रेजेंटेशन पीछे ऑन है। अगर ये वाला कार्डो सबका है, ये तो ब्लैंक मतलब
क्या स्टॉप माय वीडियो आ रहा है? तो आपने ऑन कर दिया, ये ऑन क्यों कर दिया? स्ट्रीम ऑफ है। ऐसे भी यानी कि सबको ढूंढ रहे हैं, फिर वापस आ गए, यही था क्योंकि जा रहे थे तो आगे से वापस पकड़ लिया आपका। फोटो पे अभी तो है, पूरी इंटरव्यू बता देगा। ठीक है, ये पता नहीं चल रही है। ओके, सब केस लीजिए, बंद कर ले, बंद करिए।
Ladies and gentlemen, welcome back. We will now commence session 1. The subject of the session is challenges and concerns of the war-disabled personnel. And this session will be chaired by Major General Ian Cardozo. General Cardozo was commissioned in the 5th Gurkha Rifles Frontier Force in June 1958 and has fought in the wars of 1962, 65, and 1971. Wounded in the Battle of Sirhet, he did not let the loss of a leg affect his performance. He is the first war-disabled officer to be approved for command of an infantry battalion and brigade. He subsequently commanded an infantry division and retired as Chief of Staff of a corps. Post-retirement, he was appointed by the Government of India as the Chairman of the Rehabilitation Council of India. As an author, his books have been widely acclaimed. I now hand over to you, sir, to begin the proceedings of this session. Thank you. Thank you, Shefali. Can you hear me? No. Can you hear me now? Can you hear me now? Okay, thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here today. I welcome you to the first session on the challenges that people with disability face. What are the aspirations and what are the recommendations? You heard General Malik, what he said. He absolutely hit the nail on the head. And the issues which I would like you to understand is that we who are part of the family of the army, जो हम फौज की खानदान का एक हिस्सा है, हम नहीं चाहते हैं कि we voice our protests and therefore things don't get ironed out. So he spoke exactly what we wanted to hear. Thank you, General Malik. I would like, before we start, to just give you a small aspect about what we felt when we were disabled. When the army told us that, sorry, you've done your bit, अभी जो कुछ आपने काम किया है, अच्छी बात है, अभी आपका टाइम खत्म हो गया है, अभी इसके बाद आप लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता है, और ये फैसला किया जाएगा डॉक्टर्स. Sorry, this is not what we wanted to hear. हम ये सुनना चाहते थे कि आपको मौका मिलेगा आपको काबिलियत दिखाने के लिए. That did not happen. It took us, General Malik and myself and others like me, 7 years to convince Army headquarters that we were not useless appendages to the Indian Army, and we still could prove that we were as good as others, if not better. But we did it. Thanks, because we had chiefs like General Malik, General Raina, General Krishna Rao, who listened to what we said, gave us the opportunities and opened up promotions. And we had General Oberoi rising to an army commander, General B.N. Sharma, army commander, Pankaj Joshi, army commander, and for General Oberoi retired as the vice chief. तो हमारा सिर्फ ये विनती है कि हमको मौका देना, प्रूव करने के लिए कि हम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. So this is what this seminar is all about, and I would like firstly to tell you that we have 3 eminent speakers, and I will now introduce them to you. First is Brigadier Deepak Sinha, who will speak on challenges faced by the war-disabled personnel and recommendations for betterment. He's a second-generation officer of the Paras,
He commanded a para battalion and the para brigade. He has been an instructor at the NDA, Defense Services Staff College, and Bhutan's military school, and is the author of a book, Beyond the Bayonet and Indian Special Ops in the 21st Century. He writes extensively for The Pioneer and is eminently qualified to speak on the subject. Brigadier Sinha, over to you. You're being timed. Thank you, sir. General Malik, sir. Ladies and gentlemen, मैंने अपने प्रेजेंटेशन को हिंदी में किया हुआ है, लेकिन आपसे मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं एक बंगाली हूं जिसको हिंदी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं। मेरा प्रेजेंटेशन वैसे इंग्लिश में था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं अभी सीधा डायरेक्टली आप लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कर रहा हूं। पहली बात तो है कि General Oberoi, sir, thank you very much for giving me this opportunity, sir. And it is tough speaking here because I have my father facing me and staring down at my, it gets a bit tough there. अगले 15 मिनट में मैं आपको जो challenges आप लोग फेस करते हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा और जो कुछ इसको बेहतर करने के तरीके हैं उसके ऊपर बात करूंगा। आप समझ सकते हैं कि मेरा जो है ये प्रेजेंटेशन एक आपके लिए इंट्रोडक्शन टू सैंड मॉडल ही है, क्योंकि बाकी जो मेरे से और क्वालिफाइड हैं बाद में बातचीत करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने जो बाकी डिसेबल्ड हैं, जो पीस के अंदर डिसेबल्ड हैं, खासकर जो जिनका सीरियस डिसेबलमेंट होता है उसके ऊपर भी थोड़ा टच किया है, क्योंकि आमतौर पे उनके लिए भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप जैसे ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक डेटा के बात चल रहा था, तो एक छोटा पॉइंट है कि एएलसी के अंदर जो उनके जो डेटा है, उनके पास कुछ डेटा मैंने देखा है, उसमें वॉर डिसेबल्ड और पीस डिसेबल्ड के बीच में रेशो जो है वो 2:1 है। मतलब 2 वॉर डिसेबल्ड हैं, 1 पीस डिसेबल्ड के तौर पे। तो मैं पहले वाले आपको ये तकरीबन एंशिएंट ग्रीस के टाइम पर 594 बीसी में एथेनियन एक वहाँ के एक लीडर थे, सोलोन करके उनका नाम था। उन्होंने पहले ही बताया था कि जो भी विडोज, ऑर्फन्स और पर्सन्स मेम्ड इन वॉर बी मेंटेन्ड एट पब्लिक चार्ज। और तब से ही इनको सबको समझ आया है कि ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी आप लोगों का देखभाल करे। इसके लिए एक कारण ये 4 कारण मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, जो कि एक तो है कि ताकि ट्रेनिंग करके वो आप अपने ट्रीटमेंट के बाद वापस यूनिट ज्वाइन कर सकें। दूसरा कि अगर इनका देखभाल ना हो तो मोराल पे इफेक्ट करता है। तीसरा कि जो बाहर रिटायर करके बाहर निकल जाते हैं और अगर उनका देखभाल ना हो और उनके पास कोई ना हो तो वो भी सोसाइटी के ऊपर एक प्रॉब्लम हो सकता है। और चौथा जो है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट इनका देखभाल नहीं करेगा तो रिक्रूट कैसे इनवाइट करेंगे। आमतौर पे जो भी अगर आप मिलिट्री मेडिसिन स्टडी करते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, आमतौर पे उनका फोकस जो होता है वो बैटलफील्ड केयर के ऊपर होता है। इवैक्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिकवरी, जो रिकवर करके फिर हॉस्पिटल सिस्टम के अंदर और फिर उनको वापस पलटन में डालने के लिए। आमतौर पे कोई रिहैबिलिटेशन और केयर जो डिसेबल्ड का होना चाहिए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि विदेश में यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स रखा हुआ है जो पूरे एक्स सर्विसमैन का देखभाल करता है, और उन्होंने तकरीबन 1000 हॉस्पिटल, मेडिकल क्लिनिक, नर्सिंग होम और रेसिडेंशियल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। सबसे जनरल मलिक साहब ने भी बताया था कि डेटा का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है।
और डेटा के बिना काम करना या समझने में कितना रिसोर्स चाहिए या कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास डेटा नहीं है। मैंने ये हेडक्वार्टर AFMS से बात किया था, उनके पास पूरा डेटा है लेकिन पूरा क्लासिफाइड है। ये ज़रूरी है कि उनको भी थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि क्या डेटा क्लासिफाइड होना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि मैंने कुछ डेटा मैं फिर भी 2 अनक्लासिफाइड सोर्स से मैंने थोड़ा इकट्ठा किया था, जो कि बताता है कि किस प्रकार का ये प्रॉब्लम किस प्रकार का हमारे लिए है। ये देखिए, तकरीबन ये मैंने पहला वाला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, जो कि टोटल डिसेबिलिटी पीस में जो शामिल है उसके लिए है। तकरीबन 2200 महीने में डिसेबिलिटी के लिए असेसमेंट होते हैं, इसमें सिर्फ 25% एक्सेप्ट होते हैं। ALC के अंदर 1944 और 2003 के बीच में 16,308 मिलिट्री पर्सनल ट्रीट किए गए थे। इसमें ये मैंने डेटा दिया है, 93% ट्रॉमा केसेस हैं, बाकी थिकनेस के हैं। ट्रॉमा केस में 56% जो है माइंड ब्लास्ट, गन शॉट, स्प्लिंटर इंजरीज, 8% कोल्ड इंजरीज, रोड और रेल एक्सीडेंट्स में 28%, एम्पुटेशन 67%, डिफॉर्मिटी 32 का, और डिस्ट्रीब्यूशन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तौर पे है वो है आर्मी के 97%, एयरफोर्स के 2.15 और नेवी के 0.56%। एज प्रोफाइल भी मैंने रखा है, जिसमें 77% 18 और 30 के बीच में जिनको लगता है, 31 और 40 के बीच में 14.57%, 7.65% 41 और 50 के बीच, और उसके ऊपर 0.4% होते हैं। अदर रैंक्स 96% है, ऑफिसर्स 3.94 और JCOs 3.48%। कैटेगराइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये आम तौर पे सबको मालूम ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक रिपीट कर दिया है ये स्लाइड। यही इस तरीके से फौज का जो है कैटेगराइजेशन जो CGDA ने किया हुआ है, ये इस प्रकार से किया हुआ है। कैटेगरी A जो नाना केसेस होते हैं, कैटेगरी B और C आप देखेंगे दोनों में डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, लेकिन तो मुझे समझ नहीं आता क्यों दोनों को एक कैटेगरी क्यों नहीं बनाते हैं, कर सकते थे ये आसानी से। इसके अलावा जो कैटेगरी D है, उनको भी डिसेबिलिटी, उनको जो पेंशन मिलता है वो डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, हालांकि वो कैटेगरी E जो आपका वॉर इंजरी पेंशन है उसके साथ ही मिलता है, वही मिलता है उनको, मतलब वो उनका कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ये भी मेरे ख्याल में हो सकता था कि ये भी इसको भी एक ही कैटेगरी में करते हैं ताकि आसान हो जाता। इस पे सबसे आप समझ सकते हैं कि जो गाइडलाइन और कैटेगरी बनाने का जो तरीका है सबसे काफ़ी ब्रॉड बेस है और काफ़ी उसमें छूट रखा हुआ है। ये ज़रूरी है क्योंकि हर एक में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हर एक चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, खासकर पीस एरिया के, पीस टाइम के लिए, कि जिनको ये पूरा जो इंटरप्रिटेशन होता है ये पूरे डिपेंड करता है जो इसका जो डिसीजन मेकर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि पैराट्रूपर का है, क्योंकि मैं पैरा रेजिमेंट का हूं तो मैं बात कर सकता हूं उस पर, कि कुछ पैराट्रूपर अगर किसी को कोई एक्सरसाइज में या ट्रेनिंग के दौर पे पैराशूट जंप में चोट लग जाए या डेथ हो जाए, तो उसको आप जो बैठा है उधर वो डिसाइड कर सकता है कि उनको वो कैटेगरी E में डाल दें, जैसे जहाँ पे ये दिया हुआ है, या उसको कैटेगरी C में डाल दें, और दोनों में काफ़ी अंतर आ जाता है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो आमतौर पे इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही है कि ये जो है ये थोड़ा सा लूज है, लेकिन इसको इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे साहब बोल रहे थे, एम्पैथी की बात कर रहे थे, वो बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अगला मैं आता हूं कॉम्पनसेशन के ऊपर, जिसके ऊपर बातचीत चल रहा था पहले। सबसे पहले तो
जैसे ओबरॉय साहब ने भी लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन है, जो वॉर इंजरी जिनका है और जो वॉर डिसेबिलिटी है और जो सिविलियन गवर्नमेंट में जो काम करते हैं डिसेबल्ड हो जाते हैं, उनका जो बोर्ड होता है वो जैसे ही हो जाता है वो सर्विस के दौरान ही उनको अपना वॉर डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। लेकिन जो सर्विसमैन है उसको ये नहीं लागू है, उसका वो या वो इनवैलिडेट में जा रहा है या उसका वो रिटायरमेंट जाता है, उस टाइम पर ही उसका बोर्ड होते हैं और उस बोर्ड के बेसिस पे उनको अपना ये वॉर इंजरी एलिमेंट जो है या पेंशन मिलता है। तो ये होना नहीं चाहिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये जरूरी नहीं है, ये एक ही टाइम पर सबका स्टार्ट कर सकते हैं। ये दूसरी बात मैंने लिखा है कि वॉर इंजरी पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन के बीच में अंतर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल डिसेबिलिटी जिसको पीस में होता है वो तो एक्सीडेंट के तौर पे हो सकता है या कोई सिकनेस के तौर पे हो सकता है, लेकिन जो वॉर इंजरी होता है वो जानता है कि मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, मुझे चोट लग सकता है, फिर भी वो करता है काम जो उसको टास्क मिला हुआ है। तो इसलिए इसमें अंतर रखने के लिए, और अंतर बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वॉलंटियर नहीं तो कोई नहीं करेगा अगर सबको एक ही चीज मिलना था। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो इनवैलिडमेंट में जो जाते हैं उनको जब उनका इनवैलिड ये जो वॉर इंजरी एलिमेंट वर्कआउट होता है वो 100% के हिसाब से हो जाता है, अपने जो भी उनका जो पेंशन मिलना है जो सर्विस एलिमेंट के तौर पे। लेकिन जो रिटायरमेंट में बाद में जाते हैं उनको उसको जब वो उनका ये वॉर इंजरी एलिमेंट जो वर्कआउट होता है वो होता है 30% के हिसाब से, जो पूरा जैसे ही डिसेबिलिटी के लिए भी है। तो मेरे ख्याल में इसमें फर्क काफी जरूरी है, और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने चेक किए थे सीडीए के, उससे निकला है ये, तो मैं समझता हूं कि ये चेंज जरूर होना चाहिए। जो वॉर इंजरी पेंशन है उसमें जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मैं बता रहा था कि इनवैलिडेटमेंट में एक तरीका है मिलने के लिए, एक कैलकुलेशन है, जो दूसरा है जो बाद में पेंशन जो प्रीमेच्योर पेंशन चले जाता है, और तीसरा है जो रिटायरमेंट पे जाते हैं। हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेशन का सिस्टम है, ये होना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो 65 या 47 या 71 के हैं उनको अलग पेंशन मिलते हैं और अलग कैलकुलेशन उनका होता है, ये भी चेंज हो जाना चाहिए। इसमें जरूरी है कि सबको एक ही वॉर इंजरी जो एलिमेंट मिले वो सबको एक ही मिलना चाहिए। वॉर इंजरी पेंशन का एक कोई जैसे 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती रहती है, उस पर ये जरूर यहाँ पे तो जरूर ये जरूरी है होना। अगला मैं आता हूँ एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जिसके ऊपर जनरल मलिक साहब ने भी बात किया था, थोड़ा पॉइंट दिया था। ये आम तौर पे जैसे ही चोट लगता है तो सबको एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है। जो इनवैलिड जो डेथ जिनका हो जाता है उनको तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मिलता है, और बाकी जो वुंडेड होते हैं जो एकदम इनवैलिडमेंट पे जाते हैं उनका एक रेट है, और जो अपने सर्विस पूरा करते हैं उनके लिए अलग रेट है। 2 मिनट्स। यस सर। तो इसमें भी थोड़ा जरूरी चेंज होना जरूरी है। बाकी कुछ अलाउंसेस हैं जिसके बारे में आप सब जानते हैं जो होने चाहिए, और जो कुछ मिल रहे हैं जो ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है एटीट्यूड के बारे, और उसमें मैं सिर्फ 3 पॉइंट दूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। जो आमतौर पे ये एमओडी का एटीट्यूड दिखाता है आपको कि किस प्रकार से एमओडी काम करता है और किस लिए उनका ये बदली होना चाहिए। ये पहले 2 जो हैं ये मैंने एक कमेटी फॉर्म किया था, डिफेंस मिनिस्टर ने, पारेकर साहब ने, उस कमेटी के उन्होंने ये कमेंट दिए हुए हैं। एक जो 2008 और 2010 के जो रूल्स हैं उसके ऊपर, पहला वाला उसके ऊपर है, और दूसरा जो है वो किस प्रकार से ये वर्कआउट करते हैं ये इसके ऊपर है। आखिरी पॉइंट जो आया था कि जैसे फौजी भी हमारे कुछ हैं जो गलत कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत केस हो रहे हैं
कोर्ट में जाते हैं तो 3 ऑफिसर ने एक रिकमेंडेशन जो AFMS हेडक्वार्टर में थे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था जो आखिरी में मैं लिखा हूं कि उन्होंने बोला था कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट का जो उसमें वो डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि कोर्ट को ना पता लगे कि क्या दिया हुआ था और चेंज ना कर सके अगर उस जवान को या उस अपना उसका वो अगर वो कोर्ट जाता है। Just take another 2 minutes, sir. Sir, I'll just take a minute. खास मैंने ये इंस्टीट्यूशनल एक्शन लिखे हुए हैं जो होने चाहिए, जैसे कि अपग्रेडिंग DSW का, जो इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड ये जो है अभी ये उस हालत में नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और ऊंचा करने के लिए भी है। इसके अलावा जो 4-5 पॉइंट हैं जो ये सब आप जानते ही हैं, मैंने ये इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी इस पे बहुत ही कम काम किया है। पिछले 75 साल के अंदर सिर्फ 8 पेपर्स टोटल उन्होंने लिखे हैं जो इस सब्जेक्ट के ऊपर डील करते हैं। अगर मेडिकल ही नहीं देखेगा इसका तो और कौन देखेगा। आखिरी में मेरा कंक्लूजन काफ़ी लंबा था लेकिन मैं छोड़ देता हूँ उस पर, और आपके ऊपर सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक मैं कोट करूँगा एक अमेरिकन एक पार्लियामेंटेरियन को, बर्नी सैंडर्स करके, जिन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि वेटरन्स का देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा पैसा लगता है तो लड़ाई में मत जाइए। थैंक यू। Just like to say a couple of things before we go on to the next speaker. That is, which but General Malik talked about, attitude. मतलब दुनिया हम वॉर डिसेबल को किस तरह से देखते हैं। हमारा चीफ Sam Manekshaw, one of the greatest and most loved chiefs of the Indian Army, 71 book लड़ाई के बाद उसका ये सोच था कि अगर वॉर डिसेबल को हम ख्याल नहीं करते हैं, फौज में रिक्रूटमेंट क्या होगा। He said, if we do not look after the career profile with the career prospects of the war disabled, who will stick the necks up and join the army in the future? So this question of attitude is very important. And again, what is the attitude of people, of the bureaucrats and the politicians? 71 की लड़ाई के बाद मुझको और 65 लड़ाई के बाद जनरल ओबराय को और 1999 कारगिल वॉर के बाद हमको ये चिट्ठी मिला है, एज एन ऑफिसर के तौर पर आपने अस्पताल में 6 महीने 6 महीने से ज्यादा आप हॉस्पिटल में दाखिल थे। अभी इसकी वजह से यू आर नाउ ऑन हाफ पे, यू आर ऑल पुट ऑन हाफ पे फॉर व्हाट? फाइटिंग फॉर द कंट्री, फॉर बीइंग डिसेबल्ड इन वॉर, एंड यू विल बी ऑन हाफ पे, you need to cover for your hospital stay. तो एटीट्यूड की बात है, मतलब कि आप 6 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में बैठा है, अभी आज से जब तक के पैसा वापस नहीं देते हैं आपसे, आप ऑफ पे बताओ, you are going to be off. Is this the correct attitude? So these are the issues which General Malik raised, which General Sinha raised, and I think the Babus in uniform and in the city street should understand what this problem is all about. I now ask General Hardev Singh on this issue. मेरे प्यारे बहादुर साथियों and respected guests, डिसेबिलिटी के बाद में उसकी केयर कैसे लेना है और जो ट्रॉमा होता है साइकोलॉजिकल,
उसकी केयर क्या करनी, इसके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, इसके बारे में मेरे को बोलने के लिए बताया गया। दो कैटेगरी के वार डिसेबल्ड होते हैं, एक जो इनिशियल मेडिकल केयर के बाद में बोर्ड आउट हो जाते हैं, दूसरे जो कि सर्विस में रह जाते हैं। डिसेबिलिटी तो होगी परमानेंट, पर वो सर्विस करते हैं। जो मेरे को डाटा मिला किसी के थ्रू एजी ब्रांच का, वो ये है कि जो बॉर्डर आउट हुए हैं 47 से 4788, और जो कारगिल वार के बाद में सर्विस में रहे हैं वो 3368 है। जो हमारे भूतपूर्व चीफ साहब ने बताया उसके मुताबिक ये जो टोटल दोनों कैटेगरी मिलनी चाहिए, तो ये कोई 21 से 25,000 मैंने रफ कैलकुलेट किया था जब उन्होंने बताया था, तो इतना होना चाहिए। ऑफ कोर्स 47 वालों में से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके होंगे इस लाइफ से, तो थोड़ा डिफरेंस होगा। एंड ऑल्सो ये कारगिल वॉर के बाद क्या उससे पहले का क्या हमको पता नहीं है। अब सब लोग बोलते हैं नजरिया, एटीट्यूडनल, सही बात है, यही मेजर प्रॉब्लम है। और ये मेजर प्रॉब्लम एक लेवल पे नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, हम जब हमारा देश जो एनसीआर है, करोड़ कितने की आबादी है, कितने बंदे हैं, 50, वो भी हमारे फैमिली के हैं। क्यों नहीं कोई हमारे को सुनने को तैयार। मेरी किस्मत से मैं 1 साल यूएस में रहा था, वहां मैं देखता था कैसे लोग सिविलियन कितना उत्साह देते हैं अपने सोल्जर को। वॉर वुंडेड की तो बहुत ही वो होती है। ये एटीट्यूडनल चेंज है। पहले मेडिकल के ऊपर हमारा काफी तवज्जो जाती है, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ सोचना और कंसिडरेशन होने की जरूरत है। मैं छोटे लेवल पे एग्जांपल देता हूँ। एक हॉस्पिटल में जाओगे, वहां लिखा हुआ बोर्ड पे प्रायोरिटी मिलेगी वार्ड डिसेबल्ड को, गैलेंट्री अवार्डीज को और सीनियर सिटीजन। मैंने आज तक कहीं कोई पहली 2 कैटेगरी का काउंटर नहीं देखा, कंबाइन करके भी सीनियर सिटीजन के काउंटर जरूर देखे हैं। तो देर में ये बोर्ड सिर्फ लगाने से थोड़ी होता है। अब मैं ऊपर ले जाता हूँ मैक्रो लेवल पे, जो असली प्रॉब्लम है। मैं 2 एनसीओज का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, दोनों की तनख्वाह 50,000 रुपया है। दोनों एक एक्शन में जाते हैं, दोनों डिसेबल हो जाते हैं। एक सर्विस में रह जाता है, एक बॉर्डर आउट हो जाता है। जो बॉर्डर आउट हो जाता है उसको 50%, क्योंकि 50% डिसेबिलिटी है, उसको 50% 25,000 रुपया उसको नॉर्मल पेंशन मिलती है और 25,000 उसको वॉर डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो उसके 50,000 के 50,000 मिलते हैं। जो सर्विस में रह गया उसको भी 50,000 मिलते हैं, अगले 15 साल तक वो सर्विस करता है। लेकिन एटीट्यूड से ये है कि इस डे बंदे ने अपनी टांग कटा ली, सर्विस में रह लिया, एम्पुटेशन हो गई है, और वो नॉर्मल फिट एनसीओ के साथ में ड्यूटी दे रहा है, 100% ड्यूटी दे रहा है। क्या उसका देश का इतना वो है कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है 15 साल तक। अब इसके अगेंस्ट में सिविलियन एम्प्लॉय जिस दिन वो डिसेबल्ड होता है, वार की तो बात छोड़ो, वो तो कहीं एक्सीडेंट में हो जाए तो उसको उसी दिन से डिसेबिलिटी पेंशन लागू है। इससे ज्यादा घोर न्याय कहाँ हो सकता है। ये हमारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट इस पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद में जब रिटायर्ड होते हैं, जैसे जनरल विजय, जनरल कार्डो, जो मैं खुद भी हूँ, 40% कम डिसेबिलिटी, उसी परसेंट से 40% आपको कम मिलेगी। अगर आपको 100 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है जो बॉर्डर आउट है, तो हमको 60 रुपया मिलेगा। अगर इसको लंबे तरीके देखा जाए, मैं इन 2 एनसीओ की बात कर रहा हूँ, तो 15 साल सर्विस, 15 साल सपोजिंग उसके बाद का जीवन है, तो 1 करोड़ से ऊपर मॉन्यूमेंट हो जाता है। ये नहीं कि हम पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन कोई सोचना, कोई सेंसनेस तो होनी चाहिए। तुम इतने लोगों को सिविल में दे सकते हो और जो वार डिसेबल्ड को नहीं दे सकते, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन। अगर यहाँ भी बात खत्म नहीं होती, एक 1971 वॉर के बाद में एक गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन करी थी इनकम टैक्स के ऊपर वार डिसेबल्ड के लिए। 2019 में गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से रूल निकाला कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है ना रिटायर्ड वालों की, वो 40% जो कम वाली है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगाना चाहिए। तो ये तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस है तो इसलिए अभी कुछ नहीं हो रहा, और हम हर दूसरे दिन अखबारों में पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ा अपसेट है गवर्नमेंट के साथ कि एएफटी ने डिसेबिलिटी पेंशन दी है
और गवर्नमेंट केस लेके आ गई उसके लिए। तो ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, ये बंद होनी चाहिए। कैसे बंद होनी चाहिए, हमको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। अब नीचे लेवल पे आए तो जवान और ऑफिसर के बीच में सेम इंजरी के लिए भी ट्रॉमा का डिफरेंट हो जाता है। इनका लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होने से और लेवल ऑफ अवेयरनेस डिफरेंट होने से तो जवान की परेशानी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि साइमल्टेनियसली साथ साथ एक तो इंजरी की पेन होती है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, जिसको वो कोप अप करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं। और रेयर कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी कई बार चाहिए होती हैं, वो फॉरवर्ड हॉस्पिटल में नहीं होती है, ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो फिजिकली अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, उनको अटेंडेंट चाहिए। तो इसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कोई फालतू में बंदा बिठा के रखेगा नहीं। हेल्प करते हैं हॉस्पिटल वाले, काफी अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसके लिए सोचना चाहिए। सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का, जो अकेला बैठा है, इंजर्ड बैठा है अपने बेड में, उसका दिमाग क्योंकि वो अपने बॉडी से अलग हो गया, अपनी फैमिली से गया, तो उसके लिए काफी चैलेंजेस आते हैं। और यूनिट ऑपरेशनली कमिटेड होती है तो वो उसकी लुक आफ्टर नहीं कर सकते इमीडिएटली। हॉस्पिटल घर से 1000 मील दूर हो, घर वाले कैसे आए उसको मिलने के लिए? और इसलिए, और उसकी जो फैमिली अगर आए भी तो कहाँ रहे, उसके बोर्डिंग लॉजिंग के चैलेंजेस हो जाते हैं। तो इसी तरीके से और फैमिली के और खुद के चैलेंजेस भी हो सकते हैं, बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंशियल कमी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो एक डर कि अभी क्या होगा, मैं बोर्ड आउट हो जाऊंगा, मेरा अगला कैरियर क्या होगा, इस तरीके की परेशानियां, क्योंकि रूल्स नहीं पता, एंटाइटलमेंट नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता, तो इसलिए परेशानियां आ जाती हैं। और बहुत छोटे छोटे, जैसे चीफ साहब ने बताया, आवा ने बड़ी मदद करी, लेकिन ये परेशानियां हैं, अंडरगारमेंट नहीं है, बंदे का फोन अपने पास नहीं है, अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता, तो इस तरीके की काफी परेशानियां हो जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो मेन दिमाग के अंदर चोट लगती है, वो दिखा नहीं देता। जो आपकी इंजरी है वो तो दिखाई दे रही है डॉक्टर को, आपको दर्द हो रहा है, बता रहे हो डॉक्टर को, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता। बड़े चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद रिटायर होके, मतलब जैसे भी बाहर जाते हैं, बोर्ड आउट होकर जाते हो रिटायर, तो उसके बाद में सिविल में एम्प्लॉयमेंट ढूंढना आसान नहीं है, अच्छे वाले बंदे को नहीं मिलता, तो हमारे लिए और भी चैलेंजेस हो जाते हैं। और टाइम टू टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट से मदद चाहिए, सिविल गवर्नमेंट से, या कई बार पुलिस से भी मदद चाहिए। तो ऐसी चीजें काफी परेशान करती हैं इंसान को। और मेरी रिकमेंडेशन है कि हो सके तो कैजुअलिटी को उसके होम टाउन के पास में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट करा जाए, ताकि उसकी फैमिली उसके पास आ जा सके। और जो मेजर हॉस्पिटल में तो अच्छे अच्छे सर्जन हैं, फॉरवर्ड एरिया में अगर वो सर्जन नहीं है जो इमीडिएटली चाहिए, तो आउटसोर्स कर लेना चाहिए। बॉर्डर के पास जैसे अमृतसर है, कोई भी अपने सिटीज में बहुत बड़े सिविल में हॉस्पिटल डॉक्टर्स बहुत है जो कि हेल्प कर सकते हैं। यूनिट के अलावा रेजिमेंटल सेंटर को स्टेप इन कर देना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो एक सेंटर कमांडेंट को एक एनसीओ अटैच कर देना चाहिए एमएच के साथ या नजदीक वाली यूनिट के साथ, और कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के सेक्रेटरीट को उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। और एमईएस को अकोमोडेशन को मॉडिफाइड करना चाहिए अगर जरूरत पड़ती है, जैसे व्हील चेयर वाले साथी होते हैं तो रैंप वगैरह बनाना, वो सब करना चाहिए। मिलिट्री हॉस्पिटल जैसे आवा वाले सेल फोन से बात कराते थे, ये एमएच के पास होना चाहिए। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, उनकी कैंटीन फंड से मिल सकता है, कहीं गवर्नमेंट से भी डिमांड कर सकते, तो वो ऐसी छोटी चीज दे देनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे से बात करे, वाइफ से बात करे, तो थोड़ी परेशानी दिमाग की डिस्ट्रेस होती है। और हॉस्पिटल की जो अथॉरिटीज है वो प्राइवेट सेशन इंडिविजुअल का, चाहे वो आपके सामने है या नहीं, दिखाता है या नहीं, उसका साइकोलॉजिस्ट और दूसरे काउंसलर के साथ जरूर सेशन होना चाहिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कुछ लिखा तो है नहीं उसके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब तक उसकी पूरी प्रोग्रेस नहीं हो जाती, ये होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसमें सफर कर चुका हूँ, मुझे मालूम है। और ये वॉर डिसेबल्ड एक्सर्स, उनको कभी
मिलिट्री हॉस्पिटल से डिनाई नहीं करना चाहिए करके आजकल तो एक्सेप्ट करने लगे। बीच में मैं एक जनरल साहब होते हुए भी मैं उसमें जाता ना, मेरे को वो मेरा कार्ड देख के बोलते ECHS वाले, ये आपको यहाँ लागू नहीं, वहाँ जाओ दूसरी जगह पे। आई वांट टू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ जो कि उसके पास ECHS में नहीं है, तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है राइट टू सर्विस एक्ट की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह का एक्ट हो जहाँ पे आप फोन करें, आप अपनी एंटाइटलमेंट चेक करना चाहते हो, एक सेंट्रलाइज होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, हो सकता है कि हमारा NGO एक किसी PCDA से अच्छा वाला ऑफिसर, कोई रिटायर्ड बंदा, उसको बुलाकर के लेके उसको टोल फ्री नंबर दे दो और वो कॉल करे कि सर मैं ये हूँ, मेरी ये परेशानी है, आप मेरे को कैलकुलेट करके बता दो मेरे को क्या क्या लागू है क्या नहीं है, तो सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल फैसिलिटेशन। और नेशनल सिंगल विंडो, सिंगल अथॉरिटी शुड बी सेट अप, जिससे कि कोई भी चैलेंज आता है एक्स सर्विसमैन को, सॉरी वॉर डिसेबल्ड को, वॉर विडो को या गैलेंट्री वार्ड, उसने वहाँ पे फोन से बता दिया या ईमेल से बता दिया कैसे भी, और उसकी टाइम वाइज हर 15 दिन के बाद अपडेट आनी चाहिए, आपका ये प्रॉब्लम था, इसका ये प्रोग्रेस हुई है 15 दिन में, जब तक ये पूरी रिजॉल्व नहीं हो जाती। ऐसे बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए हैं, कोई माइनॉरिटी एक्ट है, कोई कुछ है, ऐसे ऐसा कोई एक्ट हमारा भी होना चाहिए। और वॉर डिसेबल्ड को स्पेशल प्रायोरिटी के लिए जो कार्ड होते हैं ECHS के, अलग कलर के होने चाहिए, शाइनी कलर का होना चाहिए, ताकि अगर वॉर डिसेबल्ड एक लाइन में से आगे काउंटर पे जाता है तो वो कार्ड उसके हाथ में, तो लोग बाकी जो खड़े पेशेंट हैं वो बुरा नहीं मनाते हैं। नहीं तो जाके आप आगे जाओगे तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि आप ये क्या आ गया। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। जैसे आपको दिखाई रहा है कि इतने बड़ी एरिया में से हमारे खुद ही के इतने, हमारे फौज के लोग भी नहीं आए, इतने लोग जहाँ रिटायर्ड रहते हैं। राजीव चंद्रशेखर मेंबर पार्लियामेंट साहब ने 2019 में रिकमेंड करा था कि जो वॉर डिसेबल्ड है, जिनको लंबा पीरियड चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में रिडिप्लॉय कर देना चाहिए या कहीं और डिपो में कर दी, जो कि वो सुटेबली कर सकते हैं। और जो सिविल में एक्ट है, 2016 का एक्ट है, उसके मुताबिक सिविलियन एम्प्लॉय कभी उसको अगर वो उसके लिए टाइप की जॉब नहीं मिलती उसकी डिसेबिलिटी के मुताबिक, वो घर में बैठा रह सकता, सुपरनेमरी पे रिटायर नहीं होगा उसको। और उसका एडवांटेज क्या है, उसको इंक्रीमेंट मिलते रहते, प्रोटेक्टेड रहती है उसकी पे। एंड अगर वो खुदा न खास्ता ग्रुप A सर्विस का है तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचता है, वो जनरल साहब के रैंक तक पहुंचता है, एक कैप्टन मेजर का रैंक है MES का बनता। श्रीलंकन आर्मी ने अच्छा एक्सपीरियंस किया है इस मामले में। सोशल वर्क NGO को पार्टनर करना चाहिए। जी साहब ने भी बताया था, मैं रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिड टाउन का मेंबर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, वो इतने खुश होंगे जाकर, उनको सिर्फ एक्सेस चाहिए कि हॉस्पिटल में जाना दिया जाए। सारे मेंबर बहुत खुश होकर जाकर, जो आपका वॉर डिसेबल्ड वहाँ आ गया, उसको चेयर अप करेंगे, उसको खाने के प्रेजेंट देंगे, क्या कुछ देंगे। ये बहुत अच्छा है। और 3300 क्लब हैं पूरी इंडिया में, चारों तरफ फैले हैं, अपने अपने एरिया में वो अपने वॉर डिसेबल्ड को काफी मदद कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फर्म, जैसे पहले भी किसने बताया कि उनको ट्रेन करना चाहिए और डिसेबल्ड सोल्जर को एम्प्लॉय करना चाहिए, और उनका जो खर्चा होता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अकाउंट होना चाहिए। जहाँ जो कॉर्पोरेट डोनेशन देता है उसमें कंसिडर करना चाहिए। और सेपरेट ग्रुप तो होना ही चाहिए, जैसे वॉर विडोज का, वॉर गैलेंट्री अवार्ड्स का, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि वो ग्रुप बहुत ज्यादा एडवांटेज है, उसमें भी बड़ी त्रुटियां हैं, क्योंकि मैं गैलेंट्री अवार्ड विनर भी हूँ। जैसे पे इंक्रीज होती है, DM इंक्रीज होता है 2.5 टाइम, और गैलेंट्री अवार्ड सिर्फ 2 टाइम। वाई? वो भी तो एक अलाउंस है ना उसके, गवर्नमेंट। बट छोड़ो उसकी बात, यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि सेपरेट होना चाहिए। एंड में मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी को वॉर डिसेबल्ड का खून जो कि बैटल फील्ड पे बहा है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये कुंड केयरलेस, थॉटलेसनेस से एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की तरफ, ताबेदारी की तरफ,
कि आपने हमारे देश के लिए ये किया है, हम आपके ताबेदार हैं। ये होना चाहिए। हम बहुत बड़ी चीज नहीं मांगते, हम सिर्फ डिसेंसी तो है। इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है और यहाँ पे 50 बंदे, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक ऑल्सो। तो ये पूरे सबको मिलके करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट डिसेबिलिटी पेंशन है बोर्डेड आउट को बहुत अच्छा है, बहुत 100% दे रहे हैं बहुत। लेकिन जो पीपल सर्विस में रह गए हैं उन्होंने उन्होंने आप सिविलियन को दे सकते हो, वॉर डिसेबल्ड को नहीं दे सकते। वो अनफॉर्चुनेट है, उसको और सोचना चाहिए। और 50% ऐसे वॉर डिसेबल होते हैं जो लिटरली अपनी डेथ के अगेंस्ट लड़ाई करके जिंदा रहते हैं। तो इतना बड़ा तो वो दे सके। और बाकी कंट्रीज का डाटा देखना चाहिए। कनाडा का तो बहुत ही सुपर है, फैमिली को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। फाइनली मैं ये कहता हूँ, भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा हैं, लेकिन देश को भूलना नहीं चाहिए कि इस तरीके का। जय हिंद। Thank you, General Malik. Thank you very much. I'd just like to say what General Malik said. Now, sorry. What General Malik said. तो मलिक साहब ने कहा था कि जब फौजी लड़ाई के मैदान में नहीं कर रहा तो अपने बारे में विचार नहीं करते। जख्मी होने के बाद जब अस्पताल में है तो उस वक्त हम विचार करते हैं आगे क्या हो। What will be our destiny? What will be our future? Because the army told us, go somewhere. You are now disabled, you can't return to your home. और जो मलिक साहब ने बताया था कि जब रैंक मिनिस्टर में तस्वीर के साथ बात कर रहे थे तो सब बोले जो करते हैं लेट मी गो बैक टू माय डिफेंस। That was not, it was not clear to us at that time when we were in hospital what we could do in the hospital. And in my hospital bed, I wrote a poem which if you have the time on the island, show it on the screen and thank you to you. But what is important to know is ऐसे हो ठीक है ठीक है क्या हुआ आपको सब एक कान नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, बाकी सब ठीक है। This is how the children perceive this part that he has to play for this great country of ours. But people publish in and out of uniform, if you look at it, that are not facing this sort of reason to not solve our problems. Now, if you could have before that, I will just tell you a little bit about General Malik. He's a practicing lawyer from Chandigarh in his past. Hello. Institute of Washington and the Legal Bar Association of Chandigarh. It's commended 11 times by the trial. He has done valuable work of disabled children. He is part of the historical Ministry Justice.
is therefore eminently qualified to speak today on the need for formulating a more at the most person. Major multi-services is virtual. Over to the I'm thankful for the foundation, especially General Malik, who has invited me for this talk. I'm sorry I couldn't be with you physically. The scheduled engagement, which very important, which I could not leave up. But again, it's good that through the march of technology, I'm here with you, and I'll be speaking to you on a few points that I have in mind. The larger picture of which was provided to me by General Malik. Just excuse me because I'm having a runny nose and so just bear with me. I'd like to make my talk to you a little free-flowing, and I don't have a picture or slide, but I'm just going to on a few points, and I would like us all to introspect rather than complain, or rather than ascribe a negative responsibility onto any particular person or any particular organization or any particular entity. When General Oberoi discussed this issue with me and this talk with me, he was of the opinion that we should probably have a protective parliamentary act concerning the war disabled. A statutory document in the form of an act by Parliament which would protect the rights and the privileges of the disabled, of the war disabled. It's a very good idea, but I have a slightly different take on this. Although agreeing with the concept at large, I would feel that rather than having a parliamentary act, we should have a substantive document, substantive policy document, which should deal with the war disabled and also other disabled. Just to be so like this. It's not a big deal in the sense that a policy document, a substantive policy document, can be initiated by the government or by any organization along with stakeholder consultation. And why I'm a little wary of a parliamentary act is the fact that firstly, the amendments and changes and alterations, progressive or otherwise, become very, very difficult in an act of parliament, and which requires an entire statutory system of various provisions, getting them passed, and you have to ultimately engage with so many agencies, and it remains a very, very tough call. So rather than that, we should have a flexible policy document. And the document, what should we have? People might ask. I would say only one thing: proper stakeholder consultation, and of course, it goes along with empathy of the people involved. There are very negative aspects in this regard, which affect the war disabled and also the other disabled. So, I mean, both subjects are intertwined in a manner, so I would be touching upon the travails of other disabled also in between, because both issues are interrelated and very close to each other. What is lacking? What do we think? Firstly, there is a huge gap, and there's a lack of knowledge regarding disabilities, war disability, and other medical conditions. And I wouldn't say directly that empathy is lacking. However, even if there is empathy, there is total lack of knowledge about these issues. What is disability? What should be the changes brought in the regime of disability? How are war disabilities calculated? What post-operative care is required for war disabilities? What post-discharge care is required for war disabilities? The biggest thing that faces us, the biggest challenge that we are faced with, is the lack of a large heart. There is the absence of a large-hearted approach. I'll come to this later. By large-hearted approach, basically I mean that people who are
the policymakers or who have to interpret policy do not have such a large heart and they always view everything with suspicion. This is just not done, especially in cases of disabled personnel and non-disabled personnel, and even other people who are suffering from or affected by any kind of medical condition. Then there is a lack of proper stakeholder consultation, as a result of which the decision-making process and also the final decision remains faulty, and it is initiated and discussed by people who are not experts and who have no inkling at all about disabilities or what disabilities. So at the end of the day, you have decisions taken at the back of what disabled and at the back of other disabled persons, affecting those very what disabled and disabled persons, but in which there is no stake of such affected personnel and their voices are not heard. Hence, in fact, what disabilities is a far call. Even as I said, for regular medical conditions, there is lack of empathy because of lack of knowledge. And people within the organization are not at all aware of how such things function, what are the regulatory policies around it, what is the law around it, what are the courts ruled on disabilities or what disabilities, what are the practical difficulties faced by such people. I mean, to give a very small example, for example, when we're talking of normal medical conditions such as a heart disease or hypertension, you even hear very, very senior doctors saying, "Oh, इसका फौज के साथ करना देना, फौज में हो गया तो क्या हो गया, तो फौज में तो बड़ी स्ट्रेस फील आएगी." You hear people say these. These are very senior doctors. They say that, "Oh, what does hearing loss or hypertension or a coronary artery disease, etc., have to do with military service?" And now I'm just talking of regular medical conditions, not even of what disability. Why this lack of knowledge? Firstly, this also means that we are not educating our personnel, including at the senior ranks and the officer cadre very well on these issues. You open up the rule book, and the rule book, the first appendix that deals with the disabilities which are affected by the stress and strain of military service, you'll find a list of disabilities such as ischemic heart disease, hypertension, psychosis, neurosis, etc., etc. So the opening rule itself says not only for the military but also for the Central Armed Police Forces that such disabilities, such medical conditions are affected by the stress and strain of military service. Interestingly, the rules even say, to take an example, that suicide in case it occurs in a high altitude area is also attributable to military service. But you'll find our people are blissfully unaware of these issues and they make very strong and negative and sweeping statements about these issues, not realizing that it is sensitivity that we require to deal with any person who is dealing with a medical condition. This also leads to unnecessary litigation. And why litigation? When all these issues are covered by the rules and by how these rules have been interpreted by judicial decisions. So as I said, what disabilities or disabilities in the line of duty where one loses a limb, etc. are far call, and even basic knowledge about regular medical conditions is lacking. What to talk of things such as concepts such as PTSD, when there is suspicion and lack of a large-hearted approach, even for regular medical conditions, I think we have a tough task ahead, and that is where all of us come into play. That we have to be very open-minded about these things. We have to be very sensitive. We have to read up. We have to brace up. We have to upgrade our knowledge. We have to talk to people. We have to talk to affected people. We have to talk to the stakeholders. And then only we will be able to do something about our disabled person and more disabled person. There is basic care which should come as a logical after effect of any such eventuality. I'm reminded of my friend Major D.P. Singh, who lost his leg during Operation Vijay. And he was there for dead initially, and then he was revived, and he's a famous sports person, and he's the pride of India. But
One day when I was discussing with him, and he has so many shrapnels in his body, and now he's suffering from Parkinson's also. But when I was talking to him, I came to realize that when he lost his leg, there was nobody to counsel him that you have lost a part of your body. No clinical psychologist, no counselor, no doctor came to him to soften the blow in a way, to comfort him, to tell him that okay, Major DP said you've lost your leg, but don't worry, we will take care of this, and there'll be post-operative care, and we are there to look after you. And losing a leg is not it's a great moment in a person's life, and if there is no one able to talk to you about these things, now, these are very, very basic things which we are lacking. Why I ask? Why I ask? And it's not a very good approach followed by the military community of blaming the bureaucracy or blaming the political executive for every such problem. We have to look within. We have to introspect. No other agency is going to come to save us. It is the military itself which has to work towards these issues. In policy formulation, for example, I remember, in the government data which applies to war disabilities, there is a category E. It is the same on the civil side also in the Central Armed Police Forces. Both categories were approved by the Union Cabinet after the 5th Pay Commission, and the amount of pension and the method of calculation of pension, the voluntary pension, disability pension, etc., is carried out based on this category. Now, within the military setup, the defense ministry, there was a voting sheet floated that a particular manner in which these disabilities are being calculated is leading to undue advantage to war disabled personnel. Whenever the disabilities are of two kinds, one is a non-war disability and one is a war disability, which means that if a person has a regular disability and also battle casualty, then the way the disabilities are calculated, they floated a noting sheet how to change that system, how to reduce the timeline, and they issued a letter. Now imagine this. The same category E applies to CAPS also, and there will be no change in that because it was approved by Union Cabinet. The same parallel analogous letter which applies to the military, also approved by Union Cabinet, has been amended by our own people by using such derogatory terms, undue advantage, etc. Now, where is it coming from? That's why I say a large heart. Why is anybody bothered about what a person is getting? If these are financial dues approved by the government, approved by the Union Cabinet, then who are we to question them? How can we pass a moral judgment on them? How can we say that, oh, there's an undue advantage? I remember even in court, if you file a petition for a war disabled person or for liberalized family pension for a war widow, the kind of replies that are filed by the record officers or even by the AG's branch, they're derogatory to say the least. Again, words like undue advantage or saying that, oh, if a person is allowed to seek premature retirement and we are still supposed to give him war injury pension or their disability pension, including the service element, they'll start taking advantage and people will start retiring, stuff like this. I mean, why are we bothered about these things? When there are rules that are interpreted by the courts of law, it has to flow in terms of the rules, and these conditions have already been approved by the government, approved by judicial dicta. So we are not there to pass moral judgment or say that who will take advantage and who will not take advantage. That is not a job. Let's stick to our jobs, and that job is one, empathy. So the general asked me what should be done about all these issues. I said what should be done is not looking towards the government all the time, or not looking towards external agencies, looking inside, looking inward towards the military community and the policymakers within the military and the policy influencers within the military. Have a large heart, empathize with people who are disabled. Don't use a negative approach while dealing with these issues. 2 days back, somebody told me that for classification of battle casualties, now the AG's branch has suddenly started asking for something which is called as a severity certificate. Now, this certificate was basically only for battle casualties who were war wounded. Now they've started transposing that same certificate on others.
which basically says that he's suffering from he or she is suffering from this injury, which is permanent and does cause a considerable damage, and it is a permanent damage. Now, this certificate was never required for regular battle casualties, but was only required for war-wounded battle casualties, what we call BC WW. Now, look at the nuksan, the damage that this has caused. Now, all battle casualties which are due to climatic conditions, for example, somebody suffers a climatic medical condition, due to climatic conditions in Insurgency glacier. Now, how will he or she get a severity certificate? It's not even applicable. The government of India says that even if your disability is less than 20%, you're entitled to war injury pension. Now, a severity certificate would not be issued to such a person, as a result of which the government of India's policy will fail. Why? Only because nobody applied mind and they started transposing one concept of BCWW onto the regular concept of BC, which has no interplay whatsoever. So, no non-application of mind, and why it is happening? Because there are no experts who are being consulted. So, to conclude, I would say what is required is just one, a substantive policy document where there will be only one call that concerned affected parties, concerned experts, concerned stakeholders, and come to a definite conclusion about policies which affect the war disabled. Develop, apart from this, as I said, develop empathy, have a large heart, don't pass moral judgments on these issues, be concerned only with your work, with a positive frame of mind. Do not go too much into the financial aspects which are determined by the government. It's not our job. It's not a job of the military to do so. From empathy, I'm also reminded that I've seen so many people writing letters to the AG's branch, to the records offices, and there is no reply whatsoever. But you write a letter to the BSF directorate or the CRPF directorate, immediately you get a reply. But over here, there has to be an audit. Let senior officers carry out an audit in the AG's branch and in all record offices for the number of letters received from war disabled or other personnel or any pensioner or widow, the number of letters received and the number of letters replied. The truth will be in front of you. And to conclude again, have a large heart, empathize, consult stakeholders, consult experts. Jai Hind. Thank you, Major Malik. That was very good. Put the nail on the head on all issues concerning legal and non-legal aspects regarding battle casualties. I don't think there is time to go in. Now, ड्राइवर साहब, आपको सिर्फ 3 मिनट है, तो कुछ बोलना है बोल। मौजूद सब आदित्यों को मेरा दिल से नमस्कार। मैं सुबह मेजर ऑनरेरी कैप्टन दयानंद सेना मड़े। मैंने 23 नवंबर 1970 को फौज में भर्ती हुआ। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म करते हुए मैं 8 इंजीनियर रेजिमेंट के साथ पोस्टिंग हुआ। रेजिमेंट के साथ काम करते हुए 1985 में मैं नई सूबेदार बना। साल 1987 में श्रीलंका में IPKF तैनात हुए। उस ऑपरेशन में हमारा रेजिमेंट भी भाग लिए थे। हमारा रेजिमेंट का उसका मेन टास्क था LTT का द्वारा रखा हुआ माइंस को IED को निकालना प्राप्त करना। उसके लिए हमारा रेजिमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनवाए गए थे। मुझे उसमें इंचार्ज बनवाए गए थे। हम लोग ऑपरेशन शुरू किया था। जाफना के पोर्ट के आजू बाजू इलाका में IED और माइंस को निकालना शुरू किया। तब खबर मिला है कि जाफना की पोस्ट ऑफिस का आजू बाजू इलाका में IED लगी हुई। हमारा टास्क फोर्स उधर पहुंचे। मैंने आइडेंटिटी किया था, वहाँ एक IED लगा हुई थी। वो इस प्रकार का था। IED का मतलब आपको पता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। उन्होंने कहीं आजू बाजू में मिलने वाला लोकल सामान से ही एक बम बना देता है, उससे पटाखे मैक्सिमम नुकसान पहुंचे। ये हम लोग आइडेंटिटी किया था, वो ब्लैक जर्किन में थे, उसमें इलेक्ट्रिकल तार से जोड़े हुए थे। मैं उसको पहचानते ही हमारा ट्रुप को दूर जाने का आदेश देते हुए मैं उसको डिफ्यूज करने लगा। जब नजदीक पहुंचा था तो मैं ऑपरेशन को जब
डिफ्यूज कर रहा हूँ, उसी समय एलटीडी ने उसको तार से उड़ा दिया। बॉम्ब पटके थे, मेरे गगरी चोट पहुंची, जैसा कि मेरा बाएं आंख गला कट गया, पूरा बदन में स्वेलिंग हो गई थी, मैं बेहोश पड़ा। तुरंत मुझे जाफना हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करने के बाद तीसरा दिन एमएच चेन्नई में शिफ्ट किया था। वहाँ पर मेरा बाएं आंख पूरा निकालना पड़ा। फिर मेरे को शिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ मेरा लंबा ट्रीटमेंट चल रहा था, 7 ऑपरेशन मुझे सामना करना पड़ा। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके मेरा गला को ठीक करके 1.5 साल मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी समय जो सीनियर ऑफिसर साहब आके, आप लोग हिम्मत नहीं हारना, आगे भी आप लोग सर्विस कर सकता है, पहले ठीक हो के आ जाए। जैसा कि मिसाल के तौर पर जनरल विजय ओबराय साहब, जनरल कर्डोसर साहब का नाम ले रहे थे। साहब लोग वार में एक फायर होने के बाद भी बटालियन कमांड किया, आगे भी सर्विस कर रहा है, प्रमोशन भी पा रहा है। यही उम्मीद था। मैं भी 1.5 साल ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक होकर यूनिट पहुंचाए। बाकी बच्चा हुआ सर्विस को सुधार मेजर आर्मी कैप्टन बन के 2001 में मैं चलो। आखिर में मुझे 100% वार डिसेबल्ड कोशिश किया था। ऑपरेशन के द्वारा मेरा काम से मेरे को सेना मेडल से लग रही। रिटायरमेंट होने के बाद जो जैसा कि जनरल साहब बोला है, एज और रिटायरमेंट का दोनों मिलके हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने इधर आपके सामने एक ही मेरा प्रॉब्लम को जैसे मैंने सामने किया था वो रखना चाहता हूँ। मैं एक आंख से जी रहा हूँ, वो भी पेंडेमिक के दौरान उसमें कार्डियक ऑपरेशन करने का जरूरत पड़ा। जीसीएच वालों ने मुझे एम्पेरियल हॉस्पिटल को डायरेक्ट किया था। वहाँ बोला आपको एक आंख होने के कारण आप लेजिक ऑपरेशन करने से जल्दी ठीक हो जाएगा, बिना किसी की मदद से आप चल फिर सकते हैं। इसके लिए 2 शर्त है, एक स्पेशल रेकमेंड लेके आ जाओ, नहीं तो 60,000 भरना है। मेरा साहब कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ईसीएच को पेंडेमिक के दौरान लेटर और ईमेल से पेंशन मांगा, नहीं मिली। अपना पैसा भर के मैंने वो ऑपरेशन किया है। बाद के रीएम्बर्समेंट के भेजने के बाद 1.5 साल के बाद मुझे रिप्लाई मिला है, आप ये ऑपरेशन के लिए हकदार नहीं है। मैं आपको सामने यही रखना चाहता हूँ, व्हाइट कार्ड दे रहा है, प्रियॉरिटी बोल रहा है, आपको सब मिल रहा है। मैं ये मेरा तकलीफ नहीं बोल रहा हूँ, आगे वाला जवानों को भी जो ऐसा आंख जो है, आप लोग दोनों आंख बंद करके देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये काम के लिए मैं पूछा था, वो नहीं मिला है। सबसे कम आगे वाला पीढ़ियों को ये तकलीफ नहीं होना करके ये भाषण को मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू जयलाल साहब। जयलाल साहब कहानी जो है हमारा खुद का कहानी है और सुनकर हमको भी फोर्स हो रहा है। थैंक यू जयलाल साहब। आई थिंक वी कैन नाउ open the house to questions and answers. Yes, please give us your name first, and then your question and whom it is to be addressed to. Hello, my name is Colonel D.P. I retired on 24 December 2004. I am ordinary. मैं आप सभी से एक चीज बात करना चाहता हूँ, संक्षेप में बात करूंगा, ज्यादा लंबा छोड़ा मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर वॉर शब्द 3 जगह पे इस्तेमाल किया, 3 जगह पे इस्तेमाल किया है। अलॉटमेंट ऑफ बिजनेस रूल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वॉर एक बार इस्तेमाल किया गया है। डिफेंस सर्विस रेगुलेशन ऑफ द आर्मी पैराग्राफ 4 के अंदर दिया, प्रिपरेशन फॉर वॉर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ आर्मी स्टाफ, एंड पैराग्राफ 34 इट सेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमांडिंग ऑफिसर ही इज रेडी फॉर वॉर, रेडी फॉर वॉर। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को दे दिया है। वॉर के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट एंड वी ऑल आर साइलेंट। वॉर के बाद में नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन में करना क्या।
ना उस पर यह दिया हुआ कि अगर वुंड हो गए तो हमारा होगा। द मिस्टेक डजंट लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट लाई विद द, क्योंकि 75 साल से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को कुछ नहीं दिया। अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो 75 साल से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को कुछ भी देगा नहीं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चीज देगा जो कि लीगली रेडी है, तैयार है, पार्लियामेंट ने पास किया। वो पैसा वही देगा जो कि पेट्रोलियम फंड ऑफ इंडिया से रिलीज होगा, जिसके लिए हमने कभी भी कोई मेहनत नहीं की। वी डोंट हैव रेगुलेशन टू रेगुलेट वॉर वुंडेड सोल्जर्स। Thank you. I think you answered the question. Their upkeep, their maintenance, their sustenance after war. Nothing has been given. So we don't have regular to look after ourselves. We don't have regulation to regulate us when we are wounded. Regulation for the medical services is silent. It doesn't give anything. We have got. Okay, I've understood your question. My sir, You don't have time. I have a lot of time. I'm explaining to you. I'm just one thing. Why we are sitting idle? My question: why can't we do it? We have got manpower. We have got thinking person. We are sitting here. We can have our own draft regular act. We can give it to the parliament the month of August. Or we can do it and send it to the President of India for audit. Why can't we try to do it? Why we are having NGO doing? I have said twice that you understand your question. Can I answer? Yeah. Thank you. A very relevant question. Actually, it's not a question, it's a comment. What I'd like to say is that when we look at these issues, we need to have a vision. What is that vision on what you're talking about? Does the army, does the government have a vision on this issue? And if that vision is clear, then you have to have an infrastructure. If all the doubts are clear, then what are we talking about? It is your issue. I'm not against you, but okay. But why are we getting into a concentration situation? I'm agreeing with what you're saying. Okay, can I answer you now? With no further comments, please. We don't have time. Okay, what I want to say is that the 1975 Act on Disability, 1995 Act on Disability was made when I entered the disability sector. The Act was incomplete. It had lots of holes. We wanted a new one. Government would not agree. We went on the streets of Delhi. We were arrested 5 times. Finally, we forced the government to make a new act for persons with disabilities, which is the 2016 Act on Disability. Even that has problems. As a member of that committee, I failed. I failed to get them to accept that this act should be applicable to the armed forces. But they said no. I am aware what you are saying is right, but in reality, this is very difficult. My suggestion, you may or may not agree, is that, you see, I was trying to say when you stopped me, vision, infrastructure, aim, objectives, policy, procedures, activity. This is how it should follow. It has not happened. Yes, it has not happened for 75 years. It must happen. But my solution is slightly different, and that is, we need to have a policy based on the Act to make it applicable to persons in the armed forces, because we are also citizens of this country. We have fought for this country. We have given our blood for this country. Why should this Act not apply to us? All the provisions. Okay, no, we don't have enough time. I've answered your question.
This has to be done. What you're saying is right. We can talk about this later. Thank you. Yes, Pradeep. मेरा नाम है कर्नल प्रदीप कपूर. मेरे दो सवाल हैं. What is the possible role of doctors in meeting the various challenges which we have been discussing? I'll answer your question one by one, otherwise I'll forget. Okay, please. डॉक्टर साहब के रोल में क्या है? When we were in hospital, जब हम अस्पताल में थे, कोई पॉलिसी नहीं. ये इच्छा था कि हम पलटन में वापस जाए, लेकिन उस वक्त तक, as he is rightly saying, 75 years we had no policy, we had no hand, we had no. So we did not know what is our future. As General Malik said, when we go into battle, जब लड़ाई में जाते हैं, हम अपने आप विचार नहीं करते. बाद में सोच आता है हमारा फ्यूचर क्या है. So yes, so we were told at that time, doctors will decide as to what your future will be. Who are doctors to decide? Yes, doctors हमको मदद कर सकते हैं diagnosis में, treatment में, लेकिन what we can do or cannot do depends on us. हमारे ऊपर हम फैसला करना चाहते हैं, which is our right, हक है कि हम क्या कर सकता है. We should decide as to what we can do. Nobody can tell us you cannot do this or you cannot do that. It is up to us to decide and to prove that this challenge is to be turned into an opportunity, and I will prove to you that I am as good, if not better, than people who are not. So, doctors have a place in society. Doctors have a place in disability. They are there to help us to diagnose. Even then, you see, the syllabus of doctors does not include anything on disability. In their diagnosis, at times, is a problem. The first problem a parent has when he takes a child to the table is, what is the diagnosis? So doctors can help. We should bring them on board, but doctors are not to decide as to what I can do or cannot do. This is what we need to do. Can I answer the question? Yes, sir. I have one more. जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 है, के अंदर 21 कैटेगरीज हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं, ऑल ड्रग डिसेबल. उसमें से 7 कैटेगरीज एप्लीकेबल हैं फॉर ऑल बॉडीज. तो हम इन 7 कैटेगरीज के बारे में बात की कर, जबकि ये पास है एज अ लॉ इन पार्लियामेंट. तो ये कैटेगरीज रिकग्नाइज्ड हैं इन पार्लियामेंट, और हमको उस कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करके अपने जो बहुत डिसेबल्ड हैं उनको कैटेगराइज करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम प्रिवेलिंग इन सर्विस सिंपली LMC सिस्टम चल रहा है, नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दीज कैटेगरी. तो हम इनकी बात अगर यहाँ पर नहीं करेंगे तो और कहाँ. Okay, thank you. You like to answer this? The doctor's role. I must tell you the doctor's role. Doctors are also got instructions from our own people. Like my doctor tells me when I'm my medical board, they say actually your category should have been much more this and that, but I can't help it. I say, what do you do? My unit was ordered to go to Sri Lanka. I was a major there. I was told, you will be attached with the station headquarters. I said, why? You were a medical category. I said, look, I have faced bullets. This is nothing to do with the same soldier. No, you can't go. Ultimately, I gave a reverse certificate to the MS block. That's a different thing. My unit was by then ceasefire didn't go. But this is a ridiculous kind of thing we have in our own system. Yes, we
will improve, I'm sure. Thank you. So the second question, we'd love to have you this thing because we haven't studied that act properly. It's very good. Why not? In fact, give us suggestion. We like to take them outwards. One is that the remark that the civilians get their disability attached to them during service if they get disabled. That is not correct. That has changed about 10 years ago. Now the civilians also only get it after they left the service. So that is one point. The other point is that the disabled war veterans get a separate ECHS card, which is white in color, distinct from what the others get. So that is General Hardev Singh's point. These are the 2 comments I wanted to make. The difference, little bit, doesn't make any difference, sir. I'm saying total fleshy, different, which can be seen from far. Yes, this is a different one. वो साहब ने बताया कि वो जो वेटरन के पास है वो डिफरेंट कार्ड होता है, इंजर्ड कार्ड जो वॉर डिसेबल होते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था वो इतना डिफरेंट होना चाहिए, दूर से शाइन करके अलग से दिख जाना चाहिए। अभी पता नहीं चलता कुछ खास उसके बारे में। थैंक यू। ऑन करो। अभी जैसे इसी से कार्ड में जैसे डिसेबल्ड पर्सन लिखा है हुआ उसको उसको देखते हैं, इसी तरह CSC कार्ड में भी होना चाहिए सर। वो लेटर दिया है वो लेकिन से जो देखिए वो लेटर कोई काम नहीं करता, वो दवाई करता है, एक वो चले जाता है उसको पता ही नहीं। दूसरी बात है डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो ये पता नहीं है कि दुकान में कौन सी दवाई लेना। उसके बाद जो हम पर्सन है जो हमारे लिए बात कर रहा हूँ, तो स्पेशल रूम होता है हॉस्पिटल में जहाँ एडमिट होते हैं, वहाँ उसको हमको भी लागू होना चाहिए स्पेशल, ताकि जैसे जिसका टांग नहीं हाथ नहीं वो जनरल वार्ड में डाल देते हैं, तो वहाँ से उनको फीलिंग होता है। क्या हुआ है थैंक यू। सर एक मिनट ले सकते हैं सर? Somebody here wants to speak. हाँ सर, मैं जाट रेजिडेंट से ओनली जाट मेरे डॉक्यूमेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से और गौर से सुने। जो भी हमारा जवान कैटेगरी से भेज देते 50%, 30%, उसको ना तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ दे पाती है ना केंद्र को मिल पाता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में कानून है, लेकिन उस कानून को ना कलेक्टर SDM पालना नहीं करते हैं। जैसे कि 5 साल से डिप्टी कलेक्टर लिखता है SDM के लिए, 5 साल से ज्यादा किसी नौकरी की बाई पे आ जाता है या तो उसको कानून भेज देते हैं, तो उसका SDM भूमि अर्पण का नियम है राजस्थान में, लॉ में है। मैंने कलेक्टर की लॉ में देखा है तो लॉ में है, लेकिन आज तक लॉ में नहीं मिल पाया है, बाकी औरों को मिल जाता। पहला है। दूसरी बात, जैसे कि हमारे को आरक्षण सर्विस में मिला हुआ है, लेकिन जैसे लोकसभा में हमारे कोई परसेंट मांग करें और हमारा इसमें लोकसभा में जाना चाहिए, अगर हमारा वहाँ इस मांग को पूरा होगा तो हमारे सुनाई होगा, ये बाकी नहीं सुनाई होगा। ये मेरा खुद का अनुमान है, अनुभव की बात। धन्यवाद। राम साहब।
Hello. ठीक है, नजदीक करो। हमें ऑटोमेटिक गाड़ी मिले तो आप चला सकते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी हमारी बिल्कुल सही शेड्यूल को सर तो मिल रहा है। बोल रहा है कि आपका सवाल का जवाब नहीं होगा। इसके बाद ये सवाल हमारे पास तो वो कई बार तो नहीं मिलता MBBS में और IIM नहीं, एक दो सीट हमारे बच्चों के लिए जरूर होती है। फिर हमारी की जगह ऐसे IIM बताया है। सर बोल सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, मेरे ना 3-4 पॉइंट थी जिहदे काफ़ी पॉइंट जो मेजर जनरल हरदीप सिंह ते ब्रिगेडियर सर दीपक सिन्हा साहब ने कवर किए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर अपनी फाउंडेशन को कि जो पॉइंट साहब ने रेज किए हैं वो पॉइंट है जो मतलब उन्होंने अमल होना चाहिए जी। जो जिस तरह जो इंडिसक्रिमिनेशन है कलर सर्विस ते इनवैलिड ऑर्डर बड़ा फर्क है तो वो जो खत्म होना चाहिए। तो एक जो पॉइंट है सर सानू जो एडवोकेट जनरल ब्रांच है वो साडे बच्चों को आवाज़ आ रही सर मेरी जी? हाँ, जी एडवोकेट जनरल ब्रांच है वो बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री कोर्स तक ही देती है BA तक। उस तो बाद बच्चे ने किसी ने B.Ed करनी है, किसी ने M.Tech करनी है, वो भी मिलना चाहिए है। हाँ फिर हेलो Section 3. Sir, are you recording all these? Hello? Are you recording? I think we should now go to the question. I can correct my point. Yeah. When it's important to follow the test when the comes member how to what means that because it wants to make a look but young and vertical.
Thank you very much for this interesting session, sir. May I now request General Cardozo to honor the panelists of this session. धन्यवाद। अब हम जनरल कार्डो साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पैनलिस्ट को सम्मान दें। May I now request the panelists for session 2 to come up on the stage and take their seats, please. ना खड़े रहूंगा। Gentlemen, this side, please settle down. Ladies and gentlemen, now on to the second session for the day.
Session 2 will focus on the need for war-disabled personnel to live an honorable life, be financially independent, and stand on their feet. Our chairperson for this panel, General Vijay Oberoi, was commissioned in the 1st Maratha Light Infantry, Jangi Paltan, in June 1961. General Oberoi participated in 2 wars, December 1961 in capturing the Portuguese colony of Daman, and in the 1965 Indo-Pak War. It was in the latter that he had lost his right leg. Despite his disability, he soldiered on till he retired as the Vice Chief of Army Staff on 30th September 2001. His command appointments include command of an armored division, a strike corps, and 2 commands, the Army Training Command and Western Command. His staff appointments include heading the Perspective Planning Directorate before being appointed the DGMO. His 2 stints abroad were as an international fellow at the United States Army War College in 1988 and as Defense Advisor of India at Kuala Lumpur. General Oberoi is a prolific writer. He has edited 5 books and contributed chapters in many others. He was the founder director of the Center for Land and Warfare Studies for 5 years and is currently the founder president of the War Wounded Foundation. Over to you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, this is session 2, which has been sandwiched between 2 important sessions. So we are very, very important in session 2 because all the cream is here today. And I've got excellent speakers who will cover their subjects extremely well. So that makes my task very easy. I would request the panelists to please adhere to the timing. We are running 15 minutes late as at this point of time, and we will cover everything, but at a rapid rate, if it is all right by everybody. Yeah. Now, all of you have read the bios of the people who are sitting here. They're all experts. They're all experienced, both in the services and also post-retired life. And therefore, they will talk to you about actualities. क्या हुआ है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ, इसकी बातें हम इस सेशन 2 में करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनरल भूपेश जैन साहब, जो कि पैरा रेजिमेंट के हैं और साहब GOC 7 इन्फेंट्री डिवीजन फिरोजपुर में GOC थे और अभी दिल्ली में बसे हुए हैं। ये आपसे बात करेंगे कि जो हम लोग वॉर डिसेबल्ड हो जाते हैं उनके ऊपर किस किस का असर पड़ता है, फैमिली का, स्कूल का, ट्रेनिंग का, यूनिट ट्रेनिंग में, लड़ाई का, और उसके बाद गांव का, सोसाइटी का, इसके बारे में ये बात करेंगे क्योंकि ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो खासकर जवानों को, हमारे डिसेबल्ड जवानों को और जीएसयू साहिबान को पसंद आएंगे। ओके, थैंक यू। मेरे साथियों, आवाज सुनाई दे रही है मेरी पीछे तक? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जनरल मालिक सर एंड टू ऑल माय फ्रेंड लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने 4-6 केसेस लिए हैं जो मैंने अपने तजर्बे से देखे। मैं भी एक बैटल कैजुअल्टी हूँ और उस जर्नी के दौरान मुझे कुछ एक लोगों से बात करने का मौका मिला और उसके बारे में बड़ा क्विकली बयान करूंगा ताकि टाइम ना वेस्ट करें और कुछ सवाल हो तो लोग पूछ सकें और कुछ कहना चाहें तो कह सकें। पहला केस मैं लूंगा एक राइफलमैन का, गढ़वाल राइफल के। मैं और वो साथ साथ एक स्ट्रेचर के ऊपर अगल बगल में लेट करके AN-32 से ववूनिया से चेन्नई आए। लड़के की सर्विस मुश्किल से 1 साल थी, मूछियां भी आई नहीं थी, टांग चली गई थी। 1 घंटे चोट लगने के 1 घंटे के दौरान और उस जो है वो हॉस्पिटल उसको जाने को मौका मिल गया था। टांग तो जा चुकी थी माइन की वजह से।
और अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। सामने आया, आईसीयू में मेरे सामने वाले बेड में था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 दिन 3 दिन में मर गया, उसकी डेथ हुई। डॉक्टरों को स्ट्रगल करते हुए देखा और वजह सिर्फ एक थी, अंदर से उसने दम छोड़ दिया था। सर्विंग आर्टिलरी के जेसीओ का बेटा था और वो जेसीओ जब पहुंचा तब तक वो जा चुका था इस दुनिया से। खैर, वो जो मेरी उसके फादर से जो बात हुई वो तो एक आत्मा को जो है निचोड़ देने वाली चीज है, वो अलग सी बात है। पर ये ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने जब सोचा तो ये 4-5 चीजें मेरे दिमाग में आई। यूनिट के अंदर क्लोज बडी सिस्टम, एक इकट्ठापन जो एक लीडर इकट्ठा कर सकता है। अच्छे बीएफएनएस बहुत जरूरी हैं, कि हमने बार बार सीखा और उसका तजर्बा हमने 9 पैरा के अंदर बार बार देखा। फर्स्ट एड अच्छी सी, ऑन साइट, उसके बाद इवैक्यूएशन तेजी से, और सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशनल सपोर्ट। चोट के दौरान जो डिसेबल्ड एकदम से हो गए, जो शॉक होता है, उस दौरान इमोशनल सपोर्ट वो एक बड़ा क्रूशियल चीज है, और वो किस तरह से मिले ये ध्यान रखना है जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने। और इसके अंदर हम जो बैटल कैजुअल्टीज हैं जो नजदीक रहते हैं हॉस्पिटल्स के, ये किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज वॉर वुंडेड फेडरेशन और वॉर डिसेबल्ड फेडरेशन हमें करनी चाहिए। दूसरा केस में दिखाऊंगा, एक दो लड़के हैं 9 पैरा के, एक था बलदेव, माइंड ब्लास्ट में इंजर हुआ, बाकी सबको इवैक्यूएट कर दिया, उसको सबसे एंड में रॉकेट को, क्योंकि बिल्कुल बेहोश था। 3 महीने पूना में रहा। एक रात उठ करके उसने नर्स को टैप किया। उस नर्स की बेचारी का क्या हो वो तो अलग से बात है। 2 साल तक 9 पैरा की अल्फा टीम ने उस लड़के को अपनी लाइन में रखा, उसको खड़ा किया, घर भेजा। वो लड़का जो चल नहीं सकता था, जो कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप से, पलटन की केयर ने फैमिली की सपोर्ट से, उसका परिवार, वो लड़की जो उससे शादी, उसकी शादी तोड़ दी उस लड़की के माता पिता ने, फिर भी उस लड़की ने शादी की। एंड रिजल्ट, जिंदगी जिया, शादी की, 3 बच्चे हुए, दोनों लड़कियां शादीशुदा हैं, लड़का शादी करके पढ़ करके अमेरिका में, अभी अमेरिका में डिप्लॉयड है। फैमिली बहुत ही पिवटल रोल प्ले करती है रिकवरी डिसेबल्ड सोल्जर की। और अगर हम में से जितने भी हम यहाँ साथ बैठे हुए हैं, अगर खड़े हुए हैं इस वक्त, हमें धन्यवाद देना होगा अपने परिवारों का, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया। मैं कम से कम दिल के साथ कह सकता हूं कि पत्नी और परिवार की सपोर्ट के बिना हम लोग वापस रिकवरी के अंदर नहीं आ सकते। बहुत कुछ जो अचीव किया हम लोगों ने परिवार की वजह से किया। उसके साथ साथ जो यूनिट और सब यूनिट लेवल के ऊपर जो जेसीओज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो एक बड़ा ही ध्यानपूर्वक रोल प्ले करते हैं। और हम लोग जो वॉर डिसेबल्ड या वॉर वुंडेड फेडरेशन है, हमको इनकी सपोर्ट में जाना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें हैं जो और अच्छी होनी चाहिए, पर वो तो आप कोशिश करते रहिए इम्प्रूव करने की। वो ज्यादा सवाल पूछने से अच्छा है ये ढूंढे हम बैठ करके हम क्या कर सकते हैं लोगों की सपोर्ट करने के लिए। पॉजिटिव तरीके से हम कर सकते हैं। हम कितने भी चोट लगी है, अगर हम अपने आप को उठाया है और खड़े हुए हैं तो हाथ बढ़ा करके कम से कम एक को और उठाने की कोशिश करनी चाहिए और परिवारों का धन्यवाद देना चाहिए। इसी यूनिट 9 पैरा ने एक एनजीओ क्रिएट की हुई है वार वेटरन्स और रिटायर्ड व्यक्तियों ने, और यहाँ पर 2-3 जेसीओज बैठे हुए हैं। वो कितनी बढ़िया सपोर्ट करते हैं किसी भी डिसेबल्ड को, विडो को, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सारा धन इकट्ठा करते हैं आपस में मिलकर के, वो सपोर्ट करते हैं जा करके, किसी की डेथ, किसी की बीमारी, हर किस्म के अंदर सपोर्ट करते हैं। सो मेरा सुझाव ये रहेगा, इकट्ठे होकर के आप लोग
अपने आप को इकट्ठा करिए और भिन्न भिन्न जगह जाके चैप्टर बनाइए और उस चैप्टर में से उस इलाके के अंदर जो भी कोई आता है वॉर वुंडेड, जब पता चलता है तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ 2 या 3 ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, ऑनररी कैप्टन केशव और ऑनररी कैप्टन जगदेव। ऑनररी कैप्टन जगदेव ने अभी जनरल मलिक साहब के साथ हाथ मिलाया। आप पूछ रहे थे बड़ा जोर से लगाते हो, नेशनल चैंपियन बॉक्सर था सर वो। और केशव साहब बैठे हैं यहाँ, ऑनररी कैप्टन, 20 साल से प्लस सर्विस में कमांडो कोर्स में जाके बेस्ट स्टूडेंट एंड कमांडो टाइगर लेके आए थे। वो गुरु रहे हैं मेरे से, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी हम सीखने, 77 साल की उम्र में भी उनको देख करके ऐसा लगता है कि कोई आदमी चला आ रहा है। इन लोगों ने जो जिस प्रकार से ये अपने आप में एक सपोर्ट दूसरे व्यक्तियों के लिए किया, वो एक काबिल तारीफ है। केशव साहब स्ट्रेचर के ऊपर बैठ करके जब उनकी इमीडिएटली आफ्टर ब्लास्ट पूरी अपना ट्रुप, जब तक उनको हेलीकॉप्टर ने डाला उन्होंने कमांड नहीं दी किसी को, और उसका बयान करते करते आप महसूस कर सकते हैं जो ऑफिसर साथ में रहे होंगे या जो जनरल लीडर उस वक्त सीओ थे जो साथ में थे, क्या महसूस करते हैं आज तक हम उन लोगों के लिए। सो इन लोगों ने आप लोगों ने बहुत अच्छा रोल किया और वो रोल प्ले करते रहना है और उस रोल को प्ले करने की आवश्यकता है और उसको एंड तक करते रहिए। कमियां हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट रहेगी, उसके लिए कोशिश करते रहना है इम्प्रूवमेंट करने की, पर सिर्फ उनकी तरफ नहीं देखना है, ये भी देखना है कि हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं। मेरे विचार से ये जो एक तरह का जज्बा इकट्ठा हुआ, चाहे वो केशव साहब थे, चाहे वो जगदेव साहब थे या बाकी भी व्यक्ति थे, ये जज्बा लीडरशिप से हुआ। सो हम, और ये लीडरशिप अभी खत्म नहीं है, फौज के अंदर अभी भी है, सामने बैठी हुई है यूनिफॉर्म के अंदर कई सारे। उस जज्बे ने, अगर उस जज्बे को बरकरार रखना है और उस जज्बे को बरकरार रखने के लिए ताकि वो लीडरशिप भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहे, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सिर्फ कुछ पॉजिटिव सजेशन भी देने पड़ेंगे और उनकी एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनकी मेहनत, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो जनरल स्टाफ के अंदर व्यक्ति हैं, चाहे वो जीओसीज हैं या आर्मी कमांडर्स हैं, उसकी सपोर्ट, उनको भी एक पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए। आखिरी में बयान करना चाहूंगा, यहाँ पर गुरमेल बैठे हैं, राइफल में पैराट्रूपर थे, मेरा रेडियो ऑपरेटर था, उसी की मदद करते हुए मुझे चोट लगी। 1040 रुपए से फौज से डिसेबल्ड बोर्ड आउट हुआ, 1040। सन 88 गुरमेल, 89 सिक्योरिटी गार्ड से नौकरी शुरू किया। उसी कंपनी में स्टोर कीपर बना, मार्केटिंग रेप बना, मार्केटिंग हेड बना, जब उस कंपनी ने उसको निकाल दिया। 25 साल नौकरी करने के बाद दिल्ली छोड़ा, अपनी कंपनी खड़ी की। लास्ट ईयर का टर्नओवर 20 करोड़ यहाँ हाजिर है और अगले 4 महीने में जिस कंपनी ने उसको निकाला उस कंपनी को खरीदेगा वो। आज की डेट में 80 आदमी एम्प्लॉय करता है और खास ध्यान रखता है लेडीज विडोज का, और आसपास के इलाके में इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने उसको बुला करके और उससे उसकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक लेक्चर देने का मौका दिया, जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा अगर कोई जानना चाहेगा तो। संभव कैसे हुआ? अपना इरादा, इंडिविजुअल का अपना इरादा बहुत जरूरी है। सो सबसे पहला काम है इंडिविजुअल का, जो लीडरशिप जो जज्बा पैदा करती है इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रॉन्ग रहने का, वो बड़ा जरूरी है। दूसरा है परिवार, तीसरा रोल प्ले करता है यूनिट, और चौथा, जब मैं देखता हूं, मुझे कहने को काफी कमियां हैं, पर हायरार्की की तरफ से सपोर्ट में कभी कमी नहीं थी। उदय सिंह डागर का लोलाब के अंदर ब्लास्ट की वजह से दोनों आंखें चला गया, कुछ थोड़ी उम्मीद थी,
फौज ने पूरी सपोर्ट किया उसको शंकर नेत्रालय चेन्नई तक जाके लाने में। ये बात उसकी उसकी आंख ठीक नहीं हुई, पर फौज की तरफ से अगर हम सही तरीके से फौज की रांची को अप्रोच करें तो संभव है कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है हर चीज का हल करने का, और वो रास्ता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। मैं बेसिकली अपने विश्वास पॉजिटिव थॉट के ऊपर रखता हूँ, और मैं इस पूरी चर्चा के दौरान जब ये शुरू हुई असद साहब से बातचीत कि क्या क्या टॉपिक के ऊपर बोला जाए, तो मेरा ध्यान सिर्फ इसी चीज के ऊपर था कि आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज मैं दे के जाऊंगा, अपनी थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखिए। बहुत से नेगेटिव चीजें जिंदगी में मिलती हैं, पर अपना विचार हमेशा पॉजिटिव रखिए। यही पॉजिटिव जो स्पिरिट है कि कुछ नहीं होगा तो हम कोई एक नया रास्ता निकाल ही लेंगे, और वो जो एक बड़ा अच्छा मोटो है, निश्चय कर अपनी जीत करूं, उसको कभी भूलना नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू भूपेश। जनरल भूपेश साहब ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं, और वो है कि अपने पैर पे खड़ा होना है, और अपने पैर पे जो खड़ा होगा, जिसका विचार पॉजिटिव होगा, वही तरक्की करेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म पहना है या यूनिफॉर्म पहन चुका है। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनको ध्यान रखना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनरल भूपेश जैन का, जिन्होंने इतना अच्छा आपको अपना जो तजुर्बा है वो आपको बताया। अभी हमारे इस एक चीज और मैं उनको खास करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना लेक्चर 15 मिनट के बजाय 13 मिनट में खत्म कर दिया। ये चेयरमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे सेकंड पैनलिस्ट इस सेशन के हैं, वो जो मेरे राइट पे जनरल साहब बैठे हैं, जनरल दीपक सापरा। 37 साल की सर्विस के बाद ये रिटायर हुए, और इस सर्विस में उनका एक्सपीरियंस हर एरिया में, हर इम्पोर्टेंट जॉब के ऊपर रहा, और उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्होंने सर्विस छोड़ने के बाद कॉरपोरेट में और दूसरी जगह के ऊपर काम किया। और ये आपको बताएंगे कि कैसे जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, या दूसरे ऑफिसेज हैं, या अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं जो आप उसको कर सकते हैं। जनरल मलिक साहब ने अपने शुरू के लेक्चर में बोला था कि आपने खुद पैर पे खड़ा होना है, और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप भूल जाएं कि हमारे जो लीडर्स हैं, सिविलियन लीडर्स, वो क्या करते हैं, वो बात आपके ऊपर लागू नहीं है। आपने अपने दम से, अपने जोर से पॉजिटिव करना है। तो अभी सब आपको बताएंगे उनका एक्सपीरियंस और कैसे हम अपने इस वॉर डिसेबल्ड की कैटेगरी को कैसे बनाएं। थैंक यू। Jai Hind. I'd like to thank General Oberoi and the WWF for inviting me for this talk. I'm really honored, and I'm honored to be among this great gentleman sitting on my right and the august gathering sitting on my left. The stage has been set. बता दिया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिखते हैं। मेरा टॉपिक है बहुत ही अलग किस्म का है। आप लोगों के लिए कमती लागू होता है, लेकिन मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा। डाटा बेस बनाना। इसके पहले कि मैं डाटा बेस पे आऊँ, एक
इंग्लिश की कोट है, हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा. एंड इट सेज, once the war is over, it is the soldier who must suffer and bear the deepest wounds and scars of war. जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसका सबसे ज्यादा दर्द और दुख एक सोल्जर को झेलना पड़ता है. लड़ाई तो एक नेशनल एम में खत्म हो गई, लेकिन कहानी उसके बाद शुरू होती है. हिंदुस्तान में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे को और सोल्जर्स को मदद करना चाहती हैं. यहाँ जब मैं बात करूंगा सोल्जर्स की और जो लोग हमें मदद करना चाहते हैं, मैं खाली डिसेबल्ड की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन की, मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन के बच्चों की, मैं बात करूंगा नॉट ओनली वॉर वुंडेड की, बट उसके अलावा जो कैजुअलिटीज होती हैं. इतनी कैटेगरीज को हेल्प और सपोर्ट चाहिए कि उन सबके लिए एक डाटा चाहिए. खाली WWF को डाटा नहीं चाहिए, डाटा बहुत लोगों को चाहिए और हर आदमी डाटा के लिए आता है. और वो डाटा का आगे कैसे बढ़ना है उसको लेकर के आज हम वो डिस्कस करेंगे. दिक्कत क्या है वो बताएंगे और आखिर में सॉल्यूशन क्या है वो डिस्कस करेंगे. जो वर्ड डिसेबल्ड है, फौज की भाषा में वो अलग है और सिविल की भाषा में वो अलग है. मैं बताना चाहूंगा, मैं MD AWPO रह चुका, जो साहब कह रहे थे. मैं रिटायर हुआ 2014 में. उसके बाद आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं MD था 7 साल के लिए. हिंदी में इसको बोलेंगे नौकरी.com. मैं आर्मी का नौकरी.com था. मेरा काम था लोगों की नौकरी लगवाना, लेकिन उसके लिए तौर तरीके थे, रजिस्टर होना था और उसके बाद नौकरी मिलेगी. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों में कितने लोग हैं जो AWPO के साथ रजिस्टर्ड है? हाथ खड़ा कर दें. आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने लोग रजिस्टर्ड है? हाथ खड़े कर दें. बिल्कुल ठीक बात है. इस ऑर्गेनाइजेशन का मेरे को भी उस दिन पता चला जिस दिन मैं MD बन गया. उसके पहले मुझे भी नहीं पता था. मैं भी फौज का चढ़ता घोड़ा था, मैं भी दौड़ रहा था. जब आदमी दौड़ रहा होता है ना, तो उसे ये नहीं लगता कि एक सर्विसमैन की क्या दिक्कत और क्या नहीं आएगी. तो मेरा पहली गुजारिश रहेगी जनरल आसिफ सर से कि प्लीज इन सबको AWPO में रजिस्टर करा दीजिए. आज 2015 में, मैं 14 में बना, 2015 में मैं कॉर्पोरेट में गया, इंडस्ट्री में गया. उन्होंने बोला सर हमें आदमी दीजिए, डिसेबल दीजिए, हम नौकरी रखना चाहते हैं. मैंने डाटा निकलवाया, उस डाटे में सिर्फ 35 लोग थे, हर एक के पास नौकरी थी और जिनके पास नहीं थी वो करना नहीं चाहते थे. अब मेरे सामने आप सब बैठे, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, एक बंदे ने वहां से हाथ खड़ा किया, किसी ऑफिसर ने. ये बोलना कि डाटा और कहा क्या, हमारे को ही नहीं पता कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और हम उसमें ही रजिस्टर्ड नहीं है. प्लीज गेट रजिस्टर्ड. उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं, 300 रुपये या 500 रुपया, पर WWF के लिए वो चार्जेस 0, मुफ्त में रजिस्ट्रेशन है. मैं लिख के देता हूँ, आप लोगों को कॉल आएगा. मेरे साथ या किसी कंपनी के चेयरमैन भी बैठे हैं, अगर मैं उनको खड़ा करके बोल दूंगा तो 2 आदमी तो वो ये उठा के ले जाएंगे, आज ही ले जाएंगे. वो इसलिए तो हमारे लिए काम कर सकते हो. रोज बोलते रहते मेरे को एक सर्विसमैन चाहिए. पहली चीज AWPO आप लोग रजिस्टर हो जाइए. होता क्या है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मदद करना चाहती हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मदद चाहती हैं. कौन करना चाहती है और कौन किसको डाटा चाहिए वो सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. ये नहीं कि हमारे पास फौज में डाटा नहीं है, डाटा हमारे पास है, लेकिन वो डाटा हम क्यों नहीं शेयर करते, उसमें क्या चैलेंजेस है, क्या दिक्कतें हैं, आज आप समझ जाएंगे उसके बारे में. उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है वो विचार करेंगे. इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चंद एक बातें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं. इंडियन आर्मी में 50,000 सोल्जर हर साल रिटायर होता है. अगर मैं नेवी और एयरफोर्स ऐड कर दूं तो 60,000 हो जाएगा. 60,000 एबल बॉडीड पर्सन हर साल रिटायर हो जाता है टू कीप इंडियन आर्मी यंग. ये नेशनल रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत नहीं, ये नेशनल रिक्वायरमेंट है. बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1200 से 1500 जवान हर साल मर जाते हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि बैटल फ्रंट पे मरते हैं. बस का एक्सीडेंट हो गया, सांप काट गया, बाढ़ आ गई, फिर वो भी तो मर गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका परिवार नहीं है. तो जब मैं डाटा की बात करता हूं, मैं उन सब के डाटा की भी बात करता हूं, खाली वॉर वुंडेड की नहीं. 12 से 1500 जब जवान मरता है तो करीब 800 से 1000 विधवा विडोज पीछे छोड़ जाते हैं.
उसका ख्याल करना भी हमारी जिम्मेवारी है, और उसका ख्याल करने के लिए भी डाटा चाहिए। क्योंकि मैं एमडी था तो इस समय डील करता था, इसलिए मुझे सब बातें मालूम है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। 1200 से 1500 आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हर साल मर जाए, कभी सुना है आपने? स्केरी, डरावना है ये। इसके अलावा फौज में जो मेडिकल कैटेगरी बन के लोग जाते हैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, वो अलग स्टोरी है। और हमारी कैटेगरी का सिविल में कोई वैल्यू नहीं है। हमारी कैटेगरी जो मेडिकल कैटेगरीज है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, जिसकी सिविल में कोई नहीं है, बिल्कुल फिट है, सिविल में किस बेस पे नौकरी नहीं मिलती। सिविल में नौकरी मिलती है जो ये कैटेगरी बैठी है उसको मिलती है, और बेल्ट पास नहीं, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन किस किस को ये मदद चाहिए? दुनिया भर के एनजीओ हैं, उनको डाटा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डाटा चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी मतलब जो खुद अपने आप में चलती है। जैसे आज की तारीख में WWF एक ऑटोनोमस बॉडी बनती जा रही है और ग्रो कर रही है आगे आगे, इन्हें डाटा चाहिए। ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे तरीके से काम करके और डाटा को यूज करना चाहते हैं। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, कॉर्पोरेट को भी डाटा चाहिए, इंडस्ट्री को भी डाटा चाहिए, जो सिक्योरिटी एजेंसी खड़ी करी है उनको भी डाटा चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि डाटा बाजार में बिकता है। आज जिसके पास सोना है, गोल्ड है, वो रिच है, लेकिन जिसके पास डाटा है वो सुपर रिच है। डाटा इज मोर एक्सपेंसिव। 2015 में जब मैं बैठा था, एक आए लाला जी मेरे पास कि सर आपको नौकरियां लगवानी, हम लगवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, आप डाटा हमें दे दीजिए, इस डाटा को हम डाल देंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, घूमता रहेगा, जिसको कंपनी को नौकरी चाहिए डाटा निकाल के ले लेगा, जैसे नौकरी.com करता है। तो मैंने कहा इसमें मुझे क्या मिलेगा? कहता सर 50,000 नाम के लिए 10,000 रुपए दूंगा। तो जो मेरे पास डाटा था वो बिक रहा था और मेरी टेबल पे बैठ के मेरे से मोल भाव कर रहा था। तो ये जो डाटा की कहानी जिसको नहीं मालूम अभी तक, मैं उनको बताना चाहता हूँ। कई लोग सिर्फ डाटा इसलिए चाहते हैं कि उनकी ब्रांड, आप लोगों को सिविल का शायद पता नहीं है, आर्मी की एक ब्रांड वैल्यू है। हर आदमी आपसे हाथ मिलाना चाहता है, अपनी फोटो लाना चाहता है। जब नौकरियों के लिए मैं ढूंढ रहा था, डायनामाइट कॉर्पोरेट में जा रहा था, तो मैं पहुंच गया अपने बाबा जी है हरिद्वार में, क्या नाम है उनका? रामदेव बाबा जी। मैंने कहा गुरु जी सबसे बड़ा FMCG चला रहे हो, मतलब सबसे बड़ी कंपनी चला रहे हो, उस टाइम तो उनका टर्नओवर 10,000 करोड़ का था। मैंने कहा हमारे जवानों को भी नौकरी दे दीजिए। हाँ जनरल साहब बिल्कुल हो जाएगा, नौकरी देंगे, योगा सिखवाएंगे। मैंने कहा पैसे क्या दोगे? 7,000। मैंने कहा एक सर्विसमैन 7,000 में नौकरी नहीं करता। उनको मैंने बोला आप इतना माल बाजार में बेच लो, मेरे को होलसेल दे दो। अरे कहा सर हम ही 1% पे जी रहे हैं। जब देने की बारी आई तो बाबा जी पीछे हट गए। लेकिन जब फोटो की एक काम करवाते जनरल साहब, आप भी स्टेज पे आ जाइएगा, बाबा जी को बुलवा देंगे और दोनों हाथ मिलवाना, और हाथ मिला के उसको मीडिया में पब्लिसिटी दे देंगे। दैट इज अ ब्रांड वैल्यू। हर आदमी आपको यूज करना चाहता है, उसको भी डाटा चाहिए। तो डाटा की जो कहानी है खाली इतने में नहीं रुकती, ये बहुत फैली हुई कहानी है। अब ये तो हो गए मांगने वाले, डाटा देने वाले। डाटा है किसके पास? एजीज ब्रांच। एजीज ब्रांच एक नाम है, एक वर्चुअल नाम है। एजीज ब्रांच में कौन डाटा रखता है? ऑफिसर का डाटा रखने के लिए MP 586 नाम की चीज है, जवानों का डाटा रखने के लिए रिकॉर्ड या MP 8 बोलते थे, आप चक्करों में मत पड़िए। पर डाटा है हमारे पास डाटा है। ये आर्मी के पास डाटा है, लेकिन आप इसके अंदर बताइए कि क्या गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? तो गवर्नमेंट का ये रोल है कि 2004 में या कितने के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी, उसका नाम है DESW, डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ना। हर चीज की मदद, हर चीज की कहानी की जड़ DESW है। आप कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, वो DESW के थ्रू होगा एक सर्विसमैन के लिए। जब कोई बोलता है कि वर्दी में मैं आपका बॉस हूं, वर्दी टू वर्दी, रिटायरमेंट के बाद वही वर्दी वाला आपका बॉस नहीं होता, उसके बाद वो DESW में चला जाता है। हमारी एक जैक ब्रांच है जो कि लॉ का काम करती है। कोई भी दिक्कत होगी आपकी फाइल रिटायरमेंट के बाद आपकी फाइल उसके पास जाएगी नहीं, इसलिए क्रिएट करें DESW, डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। इसके अंदर IAS लेवल का सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है, उसके नीचे 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं इस लेवल के। आप कोई भी प्रॉब्लम, इतनी आप लोगों ने हम लोग रोना धोना धो दिया, आप एक चिट्ठी लिखो वो टेबल पे जाएगी, उसके गए बगैर वो चिट्ठी आगे बढ़ नहीं सकती। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज एनीबडी कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। DESW के नीचे कौन कौन आता है? ECHS, उसके पास अपना डाटा है। उसके नीचे आता है DGR, डायरेक्टरेट ऑफ रिसेटलमेंट, जिसका काम है आपकी नौकरी लगवाना, उसके पास भी डाटा है।
एक और माई बाप है इसके अलावा, उसको बोलते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड, KSB, केंद्रीय सैनिक बोर्ड होते हैं, उसके नीचे राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड, इनके पास भी डाटा है, इन सबके पास डाटा है। इसके बाद अब आ रही है लाइन डायरेक्टरेट। मैं जॉर्जमेंट का हूं तो मेरे लाइन डायरेक्टरेट में अपना डाटा चल रहा है, पैरास का अपना डाटा चल रहा है। अभी आ जाइए यूनिट, पल्स एंड रेंज, हर एक के पास डाटा है, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं मेथोडोलॉजी ऑफ कीपिंग डाटा एक्टिव। फिर डाटा तो बाजार में घूम रहा है ना, हर एक के पास है, तो डाटा मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। अब DAW को याद रखिएगा, इसके ऊपर मैं बाद में दोबारा बताऊंगा। प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपकी मदद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये नहीं पता मैं जाऊं कहां, किससे बात करूं। वो आजकल एक चीज आ गई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत वो कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन उनके पास किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, जो अफसर हो, जेसी हो, किसी को भी नहीं पता मैंने जाना कहां है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब वो किसी को वो पैसा देना चाहती है कंपनी, और कंपनियां करोड़ों में देती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो ठीक ऑर्गेनाइजेशन भी है कि नहीं है। सिविल के अंदर वैसा आप मेरे को पैसा तो मैं खर्च करवा देता हूँ, बेकार हमारा खा पी के निकल गए। एक शख्स है मैसूर के, उनका बीड़ी का बिजनेस था, देवी या कुछ नाम है। मेरी उनसे मुलाकात हुई एक बारी, और वो कनेक्टेड है हमारे से बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा आप जो ये CSR का पैसा दिया आपने इतने साल पहले, क्यों दिया फौज को? कहता है सर मेरे पास कई लोग आए, हम ये कर देते हैं, ये कहता है मेरे को हर एक पे शक हो गया। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप आर्मी के अंदर जाइए और इसे ऐसे पता कीजिए। बेचारा पता नहीं कहां से पता किया, आपको जान के हैरानी, उस बीड़ी वाले ने 30 करोड़ रुपया दिया हुआ है, जो कि DIAV में यहाँ बीड़ी साहब बैठे, वो हाथ खड़ा करके, मेरा हाथ खड़ा करते बड़ी, ये इनके पास कस्टोडियन है वो, और वो हर साल आते हैं, उसका ऑडिट होता है, फिर वो बताते हैं कि हाँ ये पैसा मेरा ठीक खर्च हो रहा है, इसको आप ऐसा कीजिए, इसको स्कॉलरशिप दे दीजिए। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होती है, वो लंच करते हैं, वो लंच मैंने उनके साथ किया हुआ है। वो इस बात पे बहुत खुश है कि मेरा पैसा ठीक जगह, 30 करोड़ रुपया वो बीड़ी बनाने वाला बंदा दे गया है। अब आजकल उनकी पार्क है, ये है, वो है, दुनिया भर का पैसा है। तो पैसा देने वाले को भी टेंशन है मैं ठीक जगह दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, इसीलिए डाटा की दिक्कत आती है, किसको दूं और किसको ना दूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिकल कैटेगरी है तो मेडिकल वालों के पास डाटा होगा, कृपया करके बच जाइए, किसी मेडिकल वाले के पास कोई डाटा नहीं होता। सारा डाटा जो मैंने बताया है फौज के अंदर है, वो रिकॉर्ड वालों के पास होता है, लेकिन रिकॉर्ड वाला वो आपको डाटा नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। कल मेरी बात हुई, जो सारे रिकॉर्ड का इंचार्ज है, एक ऊपर दिल्ली में बैठता है, इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं, कल मैंने सिन्हा से बात करी, कहता सर रोज प्रेशर आता है कि हमारे को डाटा दे दो, डाटा दे दो। कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब, कहता सर यहां तक दबा दिया मेरा गला कि डाटा दे दो। कहता लेकिन हमने डाटा नहीं दिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा। अगर डाटा शेयर करना इतना ही आसान होता तो 1947 से लेकर 2022 में आया होता, अभी भी डाटा शेयर नहीं हो रहा है। इतना इजी होता तो हमने पहले ही दे दिया होता। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके आंसर हमने कैसे निकालने हैं। जब हम डाटा किसी को देते हैं तो कई बार लोगों को शक हो जाता है कि ये जो बंदा मेरे को टेलीफोन करके पूछ रहा है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, मेरी आवाज आ रही है, फिर वो हट जाता है। हाँ, तो ये शक हो जाता है कि ये डाटा मैं दे रहा हूँ सही आदमी है, कोई गलत आदमी को दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन भी करते हैं हमको। Okay, then I'll give just one. Let me 3-4 minutes. Yeah, okay. मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे कि डाटा जब पहुंच जाता है तो उसमें शक कैसे होता है। कर्नल मुंडालिया बैठे हैं तो कि लोगों की मदद करते रहे। कैन आई रिक्वेस्ट कर्नल मुंडालिया टू प्लीज स्टैंड एंड गिव एन एग्जांपल। जब आपको पूछा गया कि भाई तू कौन है कौन, बता दे एग्जांपल फटाफट। क्या है वो? और जोर से बोलते भाई।
या किसी फैमिली से या किसी भी एक्सर्विसमैन से जब इंटरेक्ट करते हैं तो बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतने लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ये एक शकिया होता है कि क्यों मेरे से बात कर रहे हैं। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी 9 पैरा के एग्जांपल देते हैं। 9 पैरा के अशोक चक्रा, कल मेजर सुधीर उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया है। अशोक चक्र और सेना मेडल बार, जब उनके पिताजी को पेंशन मिल रही है, एक कोई लड़का असम में बैठा हुआ आरटीआई फाइल करता है कि ये 3 अशोक चक्र हैं, इनको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। उसका आरटीआई के उन्होंने उसको जवाब दे दिया कि हम आपको नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने उनकी फैमिली से इंटरेक्ट किया तो उसकी बहन से बात हुई, उसकी बहन को मैंने सारी चीजें बतानी शुरू की तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मतलब है इन चीजों से। फिर उनका हमारी यूनिट हमारी देखभाल कर रही है, आप यूनिट से बात कीजिए। खैर मैंने यूनिट से बात किया, यूनिट से जब बात किया तो पता चल रहा है यूनिट इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन से ज्यादा, या मैं कहूँगा कि जो डाटा बेस से ज्यादा, कि हमें पता ही नहीं कि हमारे एंटाइटलमेंट क्या है। इन्हीं का जो अशोक चक्र का मैं बताऊंगा आपको कि उनको अशोक चक्र अलाउंस पिछले 5 साल से 2017 में बदली हो गया था, 5,000 से डबल हो चुका है उसको वो अलाउंस आधा ही पिछले 5 साल। मैं पूरा कर देता हूँ। तो वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पेंशन ठीक नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा। वो बोले तो है कौन, मेरा नंबर कहाँ से मिला, मेरा डाटा कहाँ से मिला, वो इनको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम है, मैं एकदम 2 मिनट में बताऊंगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है DESW, डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। इसी को जवाब निकालना पड़ेगा कि डाटा चाहिए तो डाटा कैसे मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो ये नहीं कर पाते तो इंडियन आर्मी ने एक लव चाइल्ड पैदा किया। लव चाइल्ड का मतलब हमने खुश होकर पैदा कर दिया। उसके नाम है DIAV, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन। और उसके बॉस हैं ब्रिगेडियर भारद्वाज, मेरे साथ रहे हैं और वो और मैं इकट्ठे बैठते थे, हम यही काम करते थे। तो वो जो सारा काम है वो DIAV करती है, बट इनके पीछे हाथ बंधे हुए, ये पॉलिसी नहीं बना सकते। दे हैव नो टीच, ये सिर्फ फैसिलिटेटर है, आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम यहाँ जाओ, ये प्रॉब्लम, पॉलिसी डिसीजन ये नहीं बना सकते। लेकिन अगर इंडियन आर्मी में जब भी आप प्रॉब्लम होती है, AG ब्रांच बोलते हो, मान के चलिए आपकी प्रॉब्लम DIAV में ही आएगी और कहीं नहीं जा सकती। इसलिए मेरे हिसाब से तो टाटा बैंक मैनेजर शुड बी DIAV। और आवाज नहीं आ रही, कमती आ रही, और आ गई, चलो आराम नाल सुन ले। ठीक है, DIAV ही इस डाटा को मेंटेन करे और वही इस डाटा को फिल्टर करे। दूसरा, जो भी बंदा डाटा चाहता है ही मस्ट गेट रजिस्टर्ड विद DIAV। वो अपने आप को रजिस्टर करे कि सर मेरे को डाटा चाहिए, बोलेगा ठीक है जी हम आपको डाटा दे देंगे, जो जो चीजें देंगे, लेकिन उसका वेरिफिकेशन, उसका ऑथेंटिकेशन, उसका ड्यू डिलिजेंस वो करना DIAV की जिम्मेदारी है। कि मैं WWF को तो डाटा दूंगा लेकिन सप्रा को नहीं दूंगा, तो वो फैसला करना उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब तक डाटा मार्केट में नहीं पहुंचेगा आपकी मदद नहीं हो सकती। बहुत लोग करना चाहते हैं, मैं फिर जिम्मेदारी DIAV को दूंगा। जो डाटा इनके पास है वो फिल्टरेबल है, इनके पास तरीका है, आज भी है कि डाटा फिल्टर, विडो चाहिए, बच्चा चाहिए, एक्स सर्विस में चाहिए, वॉर वुंडेड चाहिए, वो डाटा इनके पास है। लेकिन ये डाटा ओपन डोमेन में खुली हवा में आपको नहीं बढ़ सकता, कोई भी नहीं देगा। बाकी के पॉइंट और है, मैं अलग से डिस्कस करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। बट लास्ट पॉइंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है, चाहे वो WWF है, आई एम वेरी श्योर सर यू मस्ट बी हैविंग योर ओन डाटा, यू मस्ट बी हैविंग योर ओन डाटा, आपके पास डाटा होगा। हमने कर्नल वेटरन्स खड़े किए हर कमांड हेडक्वार्टर में, हर एरिया हेडक्वार्टर, सब एरिया हेडक्वार्टर, कर्नल वेटरन्स के पास ये डाटा है। मैं चाहूंगा सर आप उसके टच में आइए, एंड सिंस यू आर अ जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन और आपको हेल्प चाहिए, कोई कर्नल वेटरन मना नहीं करेगा। ना कि डाटा के लिए कोई भी और दिक्कत है, कृपया करके कर्नल वेटरन को कॉन्टैक्ट कीजिए, लोअर लेवल तक पहुंचा दिए गए हैं और वही आपकी मदद करेंगे। बोलने के लिए बहुत है, बाकी किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, नौकरी की दिक्कत हो, मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं जितना हो सकेगा उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू दीपक। जनरल दीपक सप्रा ने बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई हैं कि किस प्रकार आप बाहर जाके, सर्विस के बाहर जाके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे
बहुत मिसयूज होता है डेटा, वो ठीक बात है, लेकिन गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और फौज को ये पहले देखना चाहिए कि ये जो डेटा मांग रहे हैं ये कौन है और किसके लिए मांग रहे हैं। जो हमारी वॉर वुंडेड फाउंडेशन है वो डेटा बेचती नहीं है, वो सिर्फ डेटा चाहिए आपको मिलन, आपसे बातचीत करने का कि हम ये कर रहे हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा बात की थी और शायद बाद में भी अगर टाइम होगा तो बात करेंगे। लेकिन जो मिसयूज है वो है, लेकिन वो मिसयूज जो है वो ब्रांड नेम्स, कॉर्पोरेट, फैक्ट्री वाले लोग, बीड़ी बनाने वाले लोग एक्सेट्रा वगैरह। लेकिन अगर जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरह की वॉर वुंडेड इंस्टीट्यूशन है, व्हाई द डेटा कैनॉट बी शेयर्ड? I cannot understand. So therefore, we are not talking about data which is sensitive. We are talking about the telephone numbers or the addresses and so on. However, we will cover this again when we come to the question and answer section. I would, pardon? No, not now, in the question and answer section. I can't hear you. You either will take a mic. डाटा मांग रही है उनकी जेन्युइननेस का पता करने की। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हम लोगों ने इतने वक्त से ट्राई कर रहे हैं DIV के साथ से डाटा शेयर किया जाए। Don't they know you? Don't they know the organization? If they are not aware of the organization, they have been dealing. Okay. Thank you. Yeah, I got it. Thank you. Thank you. Gentlemen, ये इस सेशन के तीसरे स्पीकर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद दत्ता, जिन्होंने फौज में हर एक एरिया में सर्विस की है। ये मैंने जब इनका बायोडेटा पढ़ा तो मैं काफी मैंने देखा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो सारी उम्र जनरल स्टाफ में ही गुजार दी है और साहब ने जनरल स्टाफ, लॉजिस्टिक्स, ए ब्रांच, ऑल द फील्ड एरियाज सब में किया। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये आप हमारे साथ बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम वॉर डिसेबल्ड की तरफ उनको ऑनर कर सकते हैं, उनको उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं एंड सो ऑन। ओवर टू यू। Respected General V.P. Malik, former Chief of Army Staff, General Oberoi, sir, ladies and gentlemen, Jai Hind. At the outset, it is my distinct honor to be amidst you all today and talk on a very pertinent and important issue, that is reaching out to war-disabled persons, acknowledging their sacrifices and giving them due honor, recognition, and visibility are of national importance. The fact that this topic as such has been chosen for discussion underscores the aspirational deficit amongst the war disabled in getting their dues. In the same breath, I wish to state that the disabled warriors are extremely proud of the services they rendered despite having suffered serious injuries. We all must understand the effects of war. War brings with it greater risk of injury,
new dynamics of extreme aggression, destruction, and violence. When the war ends, it leaves a trail of destruction and casualties, both dead and grievously wounded. Therefore, it is only stating the obvious that the war disabled have to be given special attention and focus. Sensitivity towards their visible and invisible wounds. For many, the disabled warriors, the physical and emotional consequences of their wounds have endured for long, even after they left the military. Many continue to face the flashbacks of the violent times and mixed memories of the experience they gained during the operations fought. Sensitivity of the war disabled to such invisible wounds also needs to be understood in right earnest and treated suitably through sustainable measures. Range of combat injuries. And we have to understand कि एक जख्मी होने का दर्द क्या है. The pain of being injured. War disabled soldiers are living examples of courage, commitment, character, and they remind us of hazards of war. The common combat injuries leading to disablement includes severe burns, broken bones, shrapnel wounds, nerve and brain damage, spinal cord injuries, paralysis, loss of sight, hearing, limb loss, and post-traumatic stress disorder. Therefore, the service fraternity in specific and the society at large has to visualize how it feels to be wounded. यहाँ पे मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा जो हमारे लेट जनरल विपिन रावत तब चीफ थे. उन्होंने मुझे बताया कि वो एक फंक्शन में एक वॉर डिसेबल्ड वॉरियर के साथ लंच कर रहे थे, लेकिन वो डिसेबिलिटी उनकी ऐसी थी कि वो खुद खाना नहीं खा पा रहे थे वो सोल्जर. तो उनका बेटा उनको खाने के लिए मदद कर रहा था, लेकिन बातों बातों में बेटा का थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हुई और वो किसी और के साथ बात करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा बीच में लम्हा आ गया उनके खिलाने में. तो ये डिसेबल्ड सोल्जर ने खुद अपने आप खाने की कोशिश करी और उसमें क्या है, वो खाना जो है उनके कपड़ों के ऊपर गिर गया. तो यही बेटा एकदम बहुत आग बबूला हो गया और एक किस्म से आप कह लो कि गालियां देने लगा कि आप हमारे ऊपर बहुत बर्डन बन गए हैं. और साथ में उदाहरण देने लगा कि हमारे गांव में एक और जो है सोल्जर था जो कि लड़ाई के बीच में, ऑपरेशन के बीच में मारा गया. उसका घर देखो, उसके बच्चों की तरक्की देखो, उसको इतना पैसा मिला, उसकी इतनी देखरेख हुई कि आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं. हमारी पूरी फैमिली, हमारे अपने पिताजी को देखरेख में सबका समय लगता है और जो है बहुत हमारा जो पैसे का इसमें खर्चा हो रहा है. This I have highlighted to underscore the point which has been brought out earlier, that in terms of emoluments, the money being given for in case of a death in operations and in case of war wounded should be equated. Then I wish to highlight that nation is as strong as the heroes it chooses. The saga of courage and bravery of the war disabled should never be forgotten or their contribution diluted just because they are in need of assistance today. Their hand-holding by the organization is an imperative. To honor them, firstly, there is a need to recognize them as an asset. When you look into the eyes of a war-disabled soldier, you cannot miss the pride that shines in them for having served for one's country, keeping Naam, Namak, Nishan, and the nation uppermost. It is prudent that the honor and dignity of a war disabled has to be kept at the highest
pedestal. The organization support for care of the war disabled should never appear to be under siege, and wholehearted efforts need to be made to showcase how big an asset all the disabled warriors are. Here, I wish to bring out that they should be included as special invitees for various ceremonial functions like the Army Day, investiture ceremonies, at-home functions, and ceremonies at the National War Memorial. They are the role model. So there is a need to create institutionalized memory. The narration of role played by the disabled warriors and their dedication towards the achievement of the military objectives and the overarching national aim should be suitably captured in school books, as also in the form of small storybooks and more formal coffee table book to motivate the future generations. Having faced death at close quarters, soldiers with war disabilities have rich experience of the conflict environment, so they could also write their experiences, and collation of the same could be published in the form of articles and essays with the organizational support. Motivational comic books with characters as the living disabled warriors can also be conceptualized to enhance their image. To highlight their distinct identity in various forums, wearing a suitably designed medal will be absolutely in order. They have to be extended due priorities and courtesies whenever they go to meet civil dignitaries or the military institutions, and especially for medical care. One fondly recalls the ADGPI coverage few months back highlighting presentation of a memento to General Cardozo sir before he was discharged from the hospital. So such like gestures have to be continued. Rank upgradation to those boarded out, I mean, this is an issue which will have wider ramifications and requires in-depth analysis. But in TA, a person who is an officer who's embodied only for 2 months in a year, he continues to get his promotion. And in the case of war disabled, if at the younger service he is boarded out, then he remains with that rank. So maybe there is a case, at least up to the applicable time scale rank, these could be given in the form of an honorary rank with passage of time. Job opportunities, military service instills strong values, selfless service and loyalty, which are desirable attributes in an employee in the civil. However, despite these attributes, many are unable to secure a job. Therefore, a vocational empowerment and employment program through the AWPO, Jal Sapra just spoke, should be crystallized, which should help prepare them for employment and provide counseling through experts for independent living for those who are unable to work. Another suggestion is case for companies hiring war disabled to pay their salary ex CSR or getting the tax breaks could be taken up with the government. This will be a totally win-win situation for both. On compassionate grounds, wards of war disabled who are unable to work could also be given employment on preferential basis. As far as the medical support is concerned, it's an ongoing process. State-of-the-art processes and mobility equipment should be given to them, and it should be ensured that the benefits of advances in medical care gets extended to them automatically. I interacted with the ALC before this talk, and they have told me that they are doing a lot of work in provisioning of artificial intelligence-based processes and use of artificial intelligence-based gate training for those who are amputees.
For the sub-ALCs, currently there is an issue about authorization of the strength on the PE, which needs again to be taken up suitably. As far as various allowances are concerned, that has to be befitting to in recognition of the sacrifices which the wounded warriors have given. So this must be revised periodically and indexed to the inflation levels. And war injury element, which is denied to NOK after unfortunate passing away of a brave heart post boarding out, should be continued and not stopped. To ensure the war disabled, based on their medical condition, remain financially stable, treating them at par with those killed in action as regards the emoluments are concerned, merits consideration. 2 minutes. Right. Other thing is single point of contact. I think DIAV could be the single point of contact, and they could have a dedicated helpline for them. And nowadays is the concept of apps. There could be a special app to meet the special needs of the war wounded. We could have a war disabled bravery program as continuation of the Veterans Day or on any other specified day to showcase their heroic spirit. A movie on the war disabled as a social messaging can also be thought of. So this will have an impact of both visible and invisible scars of war and would go a long way in encouraging a candid discussion in society and create better understanding and awareness of the sacrifices made. In formal, we could have a formal ceremony for the award of wound medal. Currently, the wound medal comes just based on a casualty publication and there is no recognition. So, I mean, there could be a special solemn function to give the wounded wound medal. Portrayal in the museums of the saga of courage and valor, that could also be considered. The disabled warrior games is something which has been taught. To conclude, the societal recognition of war disabled should be a reciprocal obligation by the nation towards their extraordinary contribution by extending them due respect and making them brand ambassadors at the national, state, and armed forces level. The nation must embrace warmly, strongly, and positively all our wounded warriors. The dictum stands true for our disabled warriors. I left the war zone, but the war zone has not left me. Thank you. Thank you very much. Thank you, General Datta. Excellent presentation and full of points, full of suggestions. बहुत अच्छे तरीके से जनरल साहब ने आपको समझाया कि वॉर डिसेबल्ड किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और गवर्नमेंट की और फौज के हर हिस्से की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और अगर दोनों को इकट्ठा करें तो बहुत ही अच्छा होगा सबके लिए, देश के लिए भी और हमारे वॉर डिसेबल्ड वॉरियर्स के लिए। अभी हमारा इस सेशन 2 का आखिरी स्पीकर है नायक धर्मवीर, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। और धर्मवीर, आप अपना कहानी बताइए। आपको क्या कितना में बैठ के बोलिए? हम बैठ के बोलो, ठीक है, होना है तो भी ठीक है, जो भी। हाँ, नंबर 416 जनरल धर्मवीर सिंह, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला। मैं 30 दिसंबर 1976 को रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट में सेना में भर्ती हुआ। एक साल की ट्रेनिंग करके 5 नवंबर मिजोरम में चला गया, बेंगलुरु आ गया। फिर 21 कुमाऊं ट्रेनिंग ली 2000 को उसके अंदर टोटली जनरल रहा तो फिर उसके बाद में लास्ट में 1989 में जमीन में चले।
अपने के कुपवाड़ा में हमने मतलब सेक्ट मिला मतलब सेक्ट के अंदर बाकी तो क्या बोल रहे हैं परमानेंट वन दोनों साइड के एक बंदा ऐसा है कि वो मेरी मोटर के पैनल के अंदर फिट हो गए फट गया और मैं भी फट गया साथ ये गाड़ी भी एक साल स्टॉक में निकाला और अपनी भैंस ले गए। अब मेरी दो बातें हैं, एक बात तो मैं सामने लेकर कहना चाहता हूँ हम विकलांग जितने भी करने बड़े आदमी गाड़ी में आते हैं हमारे पास पर्सनल गाड़ी तो किराए करते हैं किराए वाला मिलता है और टोल का कार्यक्रम फ्री उनके में विकलांग था। दूसरा पॉइंट मेरे ये कि सर दूसरा पॉइंट ये सर गाँव में हम लोग तो नहीं है किसी का पैर का जवान को वो बात क्या होगी और जीवन का लग दिया हाथ कट गया बड़ा ढूंढिया आग चली बड़ा कहानियां ये भाषा है लेकिन उनकी भाषा आप हम नहीं जोड़ सकते। मेरी भाषा है मानव तो ये सबसे जानते तो हमारा मरे हम आपको नहीं देख जाएंगे लेकिन हमारा लगा के सैनिक जवान से हमसे जीती किसी को शौक जाए इसलिए क्या कम तुम शौक से चले जा रहे ये मेरा पॉइंट है। दो तीसरा बुरा मत मानना भाइयों किसी को पता किसी को नहीं पता हमारी रक्षा मंत्रालय ने और वहां मुंडे फाउंडेशन की तरफ से 32 सीट ऑल इंडिया मेडिकल की किसके मतलब दक्षिण में पड़ रहा है वो क्या बायोलॉजी साइंस चलाओ बाहर में करवाओ नीट करवाओ और केंद्र सैनिक बोर्ड से अप्लाई कर दो आपका मित्र डॉक्टर बने था ये जिसको पता नहीं वो कुछ नहीं 32 सीट लागू है हमें ऑल इंडिया 32 है मेरा बच्चा पढ़ा है हमें थैंक यू मैं धर्मवीर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं वॉर वुंडेड के लिए वॉर डिसेबल्ड के लिए और हमारी सोसाइटी के बारे में खासकर गांव में जो सोसाइटी है उसके बारे में इसके ऊपर सब लोगों ने तवज्जो देना है। और उन्होंने ये मेडिकल के बारे में जो पॉइंट बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फ्री मिलेगा, इसका मतलब है कि मेहनत करके आपके लिए सीटें रखी गई हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए। देखिए रूल ये है क्वेश्चन आंसर का, अगर आपका इंडिविजुअल पॉइंट है तो मत बोलिए, सिर्फ उसके ऊपर आप क्वेश्चन करिए या कमेंट करिए जो कि हम लोगों ने सब लोगों ने बोला है। तो अभी आप जिसके पास कोई सवाल है पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। खैरिए इधर इधर ओके ठीक है समझ गए आप समझ गए। इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि स्टेट और सेंटर में अलग अलग है। ओके और सवाल? हाँ इनको दो माइक दो। सर ये नायक रणबीर ने जो कुछ नहीं किया था टोल टैक्स वाला। नाम बताओ नाम। एक्स राइफलमैन राकेश साहब डिस्ट्रिक्ट की है यहाँ और थोड़ा जोर से बोलो। सर ये नायक रणबीर ने जो टोल वाला जो क्वेश्चन रखा था सर उसमें आता है जैसे प्योरिटी 5 को उनके नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है रिकॉल टोल टैक्स नहीं होगा और वार विडो वार डिसेबल्ड ये जो कैटेगरी आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगस्त वो उसमें नोटिफिकेशन में शामिल नहीं है। तो यही निवेदन आपसे कि वो उसमें ऐड करवाने का करें।
ओके। और दूसरा ये है जैसे कैंटीन के अंदर आजकल और ये पॉलिटेक्निक के अंदर सिक्योरिटी अलग अलग सीनियर सिटीजन है, वार डिसेबल्ड है, वार विडो है, तो उसमें भी जो पहले था उसी की तरह जो है हमें मौका दिया जाए। धन्यवाद। Can I make a small point? Sir, can I make a small point? मैं एक छोटा सा पॉइंट देना चाहता हूँ। जैन साहब ने जो बात की कि परिवार और यूनिट का रोल एक बैटल कैजुअलिटी को वापस लाने के लिए, तो मैं अपनी बटालियन को कमांड कर रहा था उरी में, और वहाँ से कमांड पोस्ट मेरे इलाके में था जहाँ से रोड मुजफ्फराबाद, उरी से मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है। तो उस समय कमांड पोस्ट पे दिन में ही, रात में ही मूवमेंट हो सकता था। सुबह सुबह शेलिंग हुई और वहाँ पे एक जवान के स्प्लिंटर चला गया, वो इमीडिएटली कोमा में चला गया, और दिन भर हम लोग उसको इवैक्यूएट नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता था। रात में उसको लास्ट नाइट के बाद हमने इवैक्यूएट किया, और जब बेस हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने कहा, डॉक्टर थे जो फील्ड एम्बुलेंस के ओसी, उन्होंने कहा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा जब तक जिंदा है तब तक उम्मीद है, तो प्लीज इसको इवैक्यूएट कीजिए। तो पोस्ट क्यूआरटी होती है, करीब 80 लोगों का क्यूआरटी जाती है, उस समय जा रही थी, उस समय था। हम लोगों ने सारी बटालियन से इकट्ठा किए, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट वगैरह करके सिक लीव करके वापस आ गया यूनिट में, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, बड़ी मुश्किल से कुछ नहीं कर पाता था। तो मैंने उसको अपने पंडित जी के साथ बंदे में रखा, और मैंने कहा कि बंदे पे सब लोग आते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं। पंडित जी हमेशा एक पढ़ा लिखा आदमी जो मोटिवेशन जिसका काम कराना है, और विश्वास नहीं कीजिएगा 3 महीने के अंदर उसमें हमने रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट देखा। और उसके बाद आज वो बॉम्बे में है, रिटायर हो गया है, नौकरी कर रहा है, अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है। तो मतलब एक जो सर ने बात बताई मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कि एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसे भी नरेट करूं कि किस तरह एक परिवार, एक यूनिट किसी भी हालत में आदमी को वो बल देती है जिससे वो वापस एक नॉर्मल लाइफ जी कर सके। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई कर्नल साहब ने, क्योंकि अभी नए डायरेक्टर हैं हमारे वॉर वुंडेड फाउंडेशन के, और ये बात ठीक जो है, जो आप सब लोगों ने हमने बताया है, ये आपने नोट करना है, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में आपस में डिस्कशन करनी है। ये नहीं है कि एक आपके माइंड में कोई फिक्स चीज है, वही चीज बोलनी, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? यस प्लीज, आइए। लाइफ अशोक कुमार, 16 गन एरिया, कारगिल युद्ध का दिव्यांग सैनिक हूँ। और अशोक थोड़ा जोर से बोलो। कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई को बम गोलियों से जख्मी होने के बाद विजय पताका फहराई थी, और मेरे पिताजी 71 वार के इंजर्ड थे, और मेरे पिताजी के 2 भाई भी सेना में थे भारतीय में, और मेरे 2 भाई सगे भारतीय सेना से डिसेबल्ड है। हमारी गुड़गांव में जमीन 28 एकड़ जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, और मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी इंडिविजुअल। 20 साल के बाद प्रशासन ने मांगा जमीन हमारी, वहाँ कॉलेज बना दिए। ना ही तो कोई सेना मदद कर रही है, ना ही प्रशासन कर रहा है, पर मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। जबकि डीसी साहब ने मान लिया, प्रशासन ने मान लिया, सब ने मान लिया। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, और आप क्या मदद कर सकते हैं? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था अशोक, कि अगर आपका, सुनिए, अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो वो आप बातचीत बाद में करेंगे, बाहर करेंगे। ये जगह जनरल पॉइंट है, जबकि सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। बैठ जाइए, बैठ जाओ। आप वीडियो भारद्वाज को ले लीजिएगा। और कोई सवाल? हाँ, यस यस, गो अहेड। उधर वो पीछे लास्ट क्वेश्चन है ये। सर जैसे ये आपने बताया कि थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी आर्मी में क्या प्रोविजन है इमोशनल काउंसलिंग को लेके? जैसे कोई वॉर वॉन्डेड या कोई भी सिविल सोल्जर आता है हॉस्पिटल में, तो इमोशनल काउंसलिंग पे क्या काम होता है? क्या तो सोल्जर को काउंसलर्स मिलते हैं? तो मेरा एक क्वेश्चन था। इमोशनल काउंसलिंग की बात करें? हाँ जी सर, क्या काउंसलर अवेलेबल कराए जाते हैं, या क्या प्रोविजन है अभी करंटली इन द आर्मी? ये पिछले सेशन 1 में भी इसकी बातचीत हुई थी। बैठ जाइए इसमें। और
जनरल कार्डोजो साहब ने क्लियर किया था कि मेडिकल जो हमारी मेडिकल्स हैं उसमें बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ के लिए हैं। ये बात ज़रूरी है कि इमोशनल काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये साइकेट्रिक्स जो हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता है। यस प्लीज। देखिए, इमोशनल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, पर जो रिसीव करने वाला है वो काउंसलिंग दे रहा है उससे कनेक्ट होना चाहिए। और हमारे केस में जो मैंने पाया, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यूनिट ने साथ में एक ऐसा उसका बडी भेजा जिसके साथ इंजर्ड जवान का रिश्ता था और वो पॉजिटिव था, और उस व्यक्ति ने जो दिलासा सपोर्ट दी वो किसी भी प्रोफेशनल काउंसलिंग से कम नहीं। दूसरा, 2 केसेस के अंदर जिन लड़कों ने दिल छोड़ दिया उनकी माता को हंजार राइफलमैन ने दिल छोड़ दिया था। पलटन ने उसकी माँ को हाजिर कर दिया 24 घंटे के अंदर बाई फ्लाइट। माँ ने एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसको ठीक कर दिया। जो सिख होता है लड़का, तो जो इमोशनल सपोर्ट है वो बैटल फील्ड के अंदर पलटन से आएगी, इवैक्यूएट होने के बाद फैमिली से आएगी, और जो प्रोफेशनल सपोर्ट लॉन्ग टर्म है के बारे में अभी No more. That was the last question. We don't have the time. You can ask it later or discuss with the person concerned. Who? No, it may be a general recommendation, but we are short of time, if it is. All right. That's why I said that we should do it later. Well, gentlemen, in the end, I would like to thank all the panelists who have spoken so well, who have conveyed their ideas with a lot of josh, with a lot of conviction to all of you, and I hope that you will be able to absorb जो इन्होंने बोला है, जो हमारे पैनलिस्ट ने आपको अलग अलग चीजों के बारे में बोला है, उसके बारे में आपने सोचना है, उसके बारे में आपने घर जाके अपने फैमिली से डिस्कस करना है। जब आप बड़ा खाने के लिए बैठते हो, जब आप अपने यूनिट या रेजिमेंट में बड़ा दिन मनाने के लिए जाते हो, तो बातचीत करना है लोगों से, तभी ये चीजें जो हम बोल रहे हैं वो फैलेंगी और सब जगह के ऊपर फैलेंगी। इस सेशन 2 का आखिरी पॉइंट है एक वीडियो क्लिप जो कि आपको अभी दिखाया जाएगा। I'm from Paddington, but everybody calls me Kempy. I don't mind which one you call me. Okay. I like my real name. Right. You can still call me Kempy. Okay. And I am 5.5 and I come from Darlington. I did a 100-meter swim and I did a triathlon. My name's Simon Brown, and I'm from Leeds in West Yorkshire. And I was a soldier for 15 years in the army. And in 2006, I was injured while on a rescue mission in Iraq. I was shot by a sniper, but I was very fortunate to survive. And when I came home, I found out that I'd lost my sight, and I had to rebuild my life after being told that I was going to be a blind man and leave the army. What was the thing that you got shot by again? It was a little bullet, no bigger than the end of my finger, and it went in my face here. It came out here, and as I said, I was very lucky that I didn't get killed. Can you tell me why you swam 100 meters and why you did a triathlon? No one is soldiers. They think for us. I thought I could give a present back to them. Right.
by raising them money. I'm quite proud of the soldiers. Oh, well, I'm telling you now that the soldiers are also very proud of you, because I'm 38 and a half, and I can't do triathlon. And I also scared to go on my bike. That was quite a challenge for me. Your bike? Yes, because I'm afraid to ride it. Yeah, stabilizers. Yeah. I haven't learned how to do it with only 2 people. You like to challenge yourself, don't you? Yeah. Challenge themselves. That's right, they do. And you didn't die when you got shot in the eye. I didn't get shot in the... I got shot in the face, actually, not quite the eye, but it was close enough. And yeah, I didn't die, but I was lucky. And I got home. And then I have to rebuild my life. And it's because of the challenges that you do, and the money you raise, and the support you get, that people like me can get better. And that's why people like you are our heroes. And people like you are mine. It works, doesn't it? So what's this then? It's a tie-dye shaped in a heart. It's cool. That's very special. It's really a rock. All right. Real tie-dye. Fantastic. That's very special. That's right. You can keep the bag too. Keep the bag too? Because that's its special place. Ah. I bought you a present because you were special to me, because you have helped me, so I thought I could give a present back like that. You see, this is very special to me, because it's people like you that inspire me. What you said to me today is very kind. Thank you very much. Thank you. This was an extremely insightful session. May I now request the chairman of the session, General Oberoi, to please honor the panelists of this session. Will you please come here? अब हम रिक्वेस्ट करेंगे जनरल ओबरॉय साहब से कि हमारे पैनल के मेंबर्स को सम्मानित करें. इधर आप इस साइड वाले काफी देर से बातें होती रही और आई एम श्योर आप लोग को भूख लग गई होगी. खाने का इंतजाम व्हील चेयर के मेटल हमारे जो
डिसेबल्ड हैं उनके लिए, और लेडीज के लिए है पेवेलियन में, और बाकी जहां आप लोगों ने सुबह चाय पी थी वहां पे आप लंच कर सकते हैं। और 2:55 तक पे के ऊपर कृपया यहाँ पे आप लोग वापस आके पुनः अपनी सीट ग्रहण कीजिए। हम लोग तीसरा सेशन जो कंक्लूडिंग सेशन है, आखिरी सेशन है, धन्यवाद। पता नहीं लगता है सॉरी।
Start, we already delayed. Welcome back, everyone. We hope you enjoyed your lunch. Our third and final session today is on a subject that needs much introspection as it deals with policies and alternative avenues that can enable war-disabled personnel to lead a happy, successful, and fulfilling life. The session will be chaired by Lieutenant General P.C. Katoj, who had superannuated as Director General Information Systems in 2009. A third-generation Army officer, he had commanded a Special Forces Battalion under the IPKF in Sri Lanka, a brigade in Siachen Glacier, a division in Ladakh, and a strike corps in Southwestern Theater. He was part of the Indian contingent for the International Skydiving Competition in USSR in 1976 and has served as Defense Attaché in Japan with accreditation to Republic of Korea. An MSc in Defense Studies from Madras University, he is a graduate of the National Defense College, New Delhi. Post-retirement, he has authored over 2,080 articles in Indian and foreign publications and has presented papers in many countries besides India. He has authored 3 books, 2 dealing with special forces and 1 on Indian military and network-centric warfare. I now hand over the stage to you, sir. General Roy, sir, ladies and gentlemen, मैं सभी वॉर वुंडेड को सल्यूट करता हूँ। मैं शुरू में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देश का जो रिस्पांस है वॉर वुंडेड या वॉर कैजुअलिटीज के लिए वो 3 चीज़ों पर निर्भर है। पहला है इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है, जो जनरल होती है, जो सब कहेंगे कि बहुत अच्छा है। दूसरा नीति क्या है, पॉलिसी। जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। कल को आप अगर वॉर वुंडेड, ज़रूरी नहीं है कि आप माइन या गोली या बॉम्ब ब्लास्ट से हो, आपके ऊपर केमिकल अटैक हो सकता है, आपके ऊपर बायोलॉजिकल अटैक हो सकता है। और जो तीसरी कड़ी है वो सबसे मुश्किल है, वो है एक्सिक्यूशन, कि आपने जो पॉलिसी बनाई है उसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे वॉर वुंडेड के फायदे के लिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 1978 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर आए दिल्ली, तो राष्ट्रपति भवन में उनको कैप्टन BC राणा मिले, जो एक ADC थे। 15 डोगरा के जिनका पैर कट गया था माइन के ऊपर फिरोजपुर सेक्टर, तो बहुत प्रभावित हुए। ये ADC का काम कर रहा है। तो उनके साथ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर आया था उसने उनको बताया, जिमी कार्टर ने, कि आप इनको हेल्प करिए जितना करना चाहते हैं। तो 3 महीने के लिए विक्रम राणा USA गए, उनका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, उनको लेटेस्ट जो आर्टिफिशियल लेग है वो लगाई गई। अब आप आइए 2001 गल्फ में जो वॉर हुई, अमेरिका का आक्रमण हुआ। उस वॉर में एक डॉक्टर डॉग स्कोटे, उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया है जिसमें उन्होंने बताया कि जो अमेरिकन फौजें यहाँ लड़ रही थी उनको ये नहीं मालूम था कि उनके ऊपर जो बमबारी होएगी वो डिप्लीटेड यूरेनियम की होएगी। मतलब वो बम ऐसे बनाए थे कि जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेस्ट है उनके अंदर डाला गया। और वो डॉक्टर साहब का कहना है कि 72 घंटे के अंदर हमको यूरेनियम पॉइजनिंग हो गई।
और वो कहते हैं कि जो मैक्सिमम लोग अमेरिका के मरे हैं वो इसी शेलिंग में मरे हैं, और उसमें हजारों लोग को ये यूरेनियम पॉइजनिंग हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसका आज भी कोई इलाज नहीं। अब आप 31 साल आगे जाइए, 1 मार्च को 2022 को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया। उसमें उसने कांग्रेस से कॉल की है कि आप ऐसा लॉ पास करो कि हमारे सोल्जर्स को, जिनको इतनी बुरी तरह से टॉक्सिक एक्सपोजर हुआ है, उनको फाइनली जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिले और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट हो। मेरे हिसाब से ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कुछ नहीं होने वाला। तो आपकी कंट्री में भी आप ये मत सोचो कि पॉलिटिशियन और बाबू आपके लिए कुछ करेंगे, हमें करना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा। तो आज जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं उसमें सबसे पहला और आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी है वो ब्रिगेडियर विकास भारद्वाज करेंगे, जो अभी की आपकी पॉलिसी है वॉर वुंडेड के लिए, और क्या ऑर्डर्स और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसमें ये क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिगेडियर भारद्वाज और मैंने इकट्ठी नौकरी की है DGIS में। इनका पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हुआ था और इनका बहुत ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। ये जुलाई पिछले साल से DDG DIV रहे हैं और उससे पहले 3 साल डायरेक्टर DIAV भी रहे। तो इनका जो एक्सपीरियंस है इसमें बहुत ज़्यादा है। ओके, With your permission, sir. The Honorable Chair, illustrious co-panelists, respected General Vijay Oberoi, the founding president, War Wounded Foundation, General Cardozo, the vice president, General Asif Mistry, the president, takes over today, sir, and members of the War Wounded Foundation, our esteemed war disabled and veterans, ladies and gentlemen. Jai Hind and very good afternoon. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मैं हमारे वॉर डिसेबल्ड के समक्ष हूं, जिनकी अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान से प्रोत्साहित होकर हम जो आज की फौज की पीढ़ी है अपने कर्तव्य पे प्रतिबद्ध है। मैं आप सबको सल्यूट करता हूं। अगले कुछ क्षणों में मैं आपको जो आपसे मुतल्लक रखने वाली पॉलिसी प्रोविजंस है उसके बारे में बातचीत करूंगा, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप में से कितनों ने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के बारे में सुना है? नहीं, कुछ तो वो है जो मेरे से अभी लंच के बाद बात कर रहे थे, उनके अलावा तो किसी ने नहीं। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एक बहुत ही यंग और इवॉल्विंग डायरेक्टरेट है जो कि 14 जनवरी 2016 में खड़ा किया गया। आप लोग, कुछ लोगों को ये पता होगा कि जो एक वेटरन है, एक वॉर डिसेबल्ड हमारा सोल्जर है, या कोई एक विधवा है फौज की या नेक्स्ट ऑफ किन, उनके जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए, उन पर काम करने के लिए अनेक स्टेक होल्डर्स, अनेक एजेंसीज और डायरेक्टरेट्स हैं। और किस मुद्दे को लेके आप किस एजेंसी के पास जाएं, ये जानना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए और ये महसूस किया गया आर्मी हेडक्वार्टर पे कि एक सिंगल विंडो फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि हमारे वेटरन्स, हमारे विडोज और नेक्स्ट ऑफ किन, वेटरन्स में वॉर डिसेबल्ड शामिल, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक सिंगल विंडो खड़ी की जाए। इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स खड़ा किया गया। आप हमारे पास आइए, हम आपकी जो मुद्दे हैं उसको कंसर्न डायरेक्टरेट या ऑफिस में लेके जाएंगे और उनको सुलझाएंगे पॉलिसी प्रोविजंस के तहत। और इसको अपनी सर्विस, अपनी कार्रवाई को पूरी करते समय हम
रिस्पेक्ट, केयर और सपोर्ट, जो कि सुबह जनरल मलिक साहब कह रहे थे कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, यानी कि ये समझना कि असली जरूरत क्या है, उसमें कुछ कमी पाई गई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आर्मी हेडक्वार्टर, एजीज ब्रांच और डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स इस कमी को पूरा करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। हमारी जो विजन है वो क्लियर बताती है कि हम एक एम्पैथी के साथ काम करते हैं और हमारा मोटो है कि टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर व्हाट, यानी कि थामे आपका हाथ हमेशा आपके साथ। आपकी जो मुसीबतें हैं, आपकी कोई परेशानी है, आपका कुछ आपको लगता है किसी चीज में कमी है, वो पूरी होनी चाहिए, आप कृपया करके हमारे पास आए। जो डीआईबी का चार्टर है, सिंगल विंडो के अलावा जितने भी अन्य ऑफिसेज हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, उनके साथ हमारा बहुत ही नजदीकी तौर पर तालमेल है ताकि आपके मुद्दों को सही तरीके से जल्द उनको रिजॉल्व किया जाए। डीआईबी का दूसरा अहम मुद्दा है कि अपने वेटरन्स, अपने विडोज और एनओके के साथ लगातार संपर्क में रहना। इसके लिए हमारा एक वेबसाइट है, हम सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर पे भी अवेलेबल है। इसके जरिए से मैं आगे बताऊंगा कि हम जो लेटेस्ट पॉलिसीज है उसके बारे में बताते रहते हैं। आपका डेटा जिसके बारे में इतनी बातचीत हो रही थी, अपडेटेड डेटा हमारे पास है, लेकिन उसके शेयर करने में, उसको बांटने में हमारे जो देश के कुछ एक्ट्स हैं उसकी वजह से उसको कोई तरीके से खुली छूट नहीं है उसको बांटने की, शेयर करने की। इसके अलावा एक्सग्रेशिया और वेलफेयर स्कीम्स हम चलाते हैं सभी वेटरन्स, मतलब बैटल कैजुअलिटीज, फेटल, बैटल कैजुअलिटी डिसेबल्ड और फिजिकल कैजुअलिटी फेटल के एनओके के लिए और ऑफ कोर्स वार्ड्स के लिए और आपके वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए। जब हमारे जेसीओ और रिटायर होने से पहले डिस्चार्ज के लिए सेंटर्स पर जाते हैं, तो आपके समय कुछ साल पहले डीजीआर के तहत रीसेटलमेंट कोर्सेज वहां चलते थे, अब वो बंद हो गए। वो डीआईबी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये स्किल कोर्सेज चलाए जाते हैं ताकि आपको एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट मिले। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है ताकि आप अपना खुद का बिजनेस चला सकें। हमारा ऑफिस एजीज ब्रांच के अंदर डीजीएनपीपीएस के तहत दिल्ली कैंट में लोकेटेड है और इसके अलावा एक पूरा वेटरन्स वर्टिकल देश भर में फैला हुआ है। 30 कर्नल वेटरन्स हर एक एरिया और सब एरिया हेडक्वार्टर्स में, 5 डायरेक्टर वेटरन्स 5 कमांड हेडक्वार्टर्स में, सिर्फ आर्ट्रैक और नदन कमांड में नहीं है, और 226 स्टेशन हेडक्वार्टर ईएसएम सेल्स आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार बैठे। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स पर से 4 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें एक है पॉलिसी एंड आउटरीच, जो कि हमारा कॉड है, आप तक पहुंचने के लिए अन्य कार्रवाइयां करता है। पेंशन एंड एंटाइटलमेंट्स एक अहम सेक्शन है जहां पर तमाम पेंशन्स और आपके टीसीएचएस, सीएसडी और अन्य एंटाइटलमेंट्स को लेके सारी कार्रवाई की जाती है और आपकी जो भी इसके मुतल्लक प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है। रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर एक और बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे डायरेक्टरेट का, जिसके अंतर्गत तमाम एक्सग्रेशिया, तमाम वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं और आपके जिस स्टेट से कि आप डोमिसाइल हैं उसके रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है उसको हम स्टेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपकी जॉब्स के लिए AWPO, जिसके बारे में जनरल साहब ने कुछ देर पहले बताया, और DGR के साथ संपर्क रखते हैं ताकि आपकी नौकरी में आपको सहूलियत दे सकें। ये हमारा वेबसाइट है, अगर आप DIAB गूगल पे टाइप करेंगे सबसे पहले ये मिलेगा, इसको जरूर देखिए। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आपके मुतल्लक तमाम इंफॉर्मेशन एक जगह पर है। ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तमाम वेबसाइट जो वेटरन्स के रिलेटेड है उस सब के लिंक्स यहाँ पर हैं। तमाम एडवाइजरीज, पॉलिसी सब यहाँ पर है। कल कोई TCHS की नौकरी निकलती है, कहीं CSD में कोई नौकरी, उसके भी सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तकरीबन 2000 लोग हर रोज इस वेबसाइट को विजिट करते हैं।
आज की तारीख में तकरीबन 18.5 लाख वेटरन्स, विडोज, एनओके हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा फेसबुक जिसमें तकरीबन 4,500 फॉलोअर्स हैं और ट्विटर हैंडल जिसमें तकरीबन 15,500 फॉलोअर्स हैं। ये जो 2 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हैं, इसको जरूर फॉलो कीजिए आप लोग। जो ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप चाहे हमको फोन कॉल करें, चाहे SMS भेजें, चाहे व्हाट्सएप, ईमेल, किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क करें, चाहे किसी कर्नल वेटरन से संपर्क करें, हमारे लिए वो एक अहम कार्रवाई है। एक बार आप हमारे पास पहुंच गए, आपकी उस ग्रीवेंस को सेटल करना हमारी जिम्मेदारी है। तकरीबन 4,000 से 6,000 ग्रीवेंसेस, पिटिशंस, एप्लीकेशंस हर महीने DIV में आती है। हर महीने 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की पेंशन एनॉमलीज को रिजॉल्व कर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुंचता है PCDA या कंसर्न बैंक के थ्रू। इसके अलावा पिछले साल एक्स ग्रेशियो और वेलफेयर ग्रांट्स तकरीबन 53 करोड़ रुपया बांटा गया बेनिफिशरीज के बीच में। इन स्कीम्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपके साथ है। कुछ चंद एक पॉलिसी प्रोविजन जिसके बारे में सुबह से जिक्र किया गया। जब भी कोई हमारा सैनिक लड़ाई की हालात में डिसेबल्ड होता है, या तो वो इनवैलिड आउट होगा या उसको हम सर्विस में रिटेन करेंगे। इनवैलिड होने पर आपको वॉर इंजरी पेंशन लागू होती है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक सर्विस एलिमेंट और दूसरा वॉर इंजरी एलिमेंट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक एस्पिरेशन लागू होता है जो कि 100% डिसेबिलिटी पे 20 लाख है। इससे पहले ये 9 लाख होता था, मैं आगे बताऊंगा किस डेट से ये चेंज हुआ है। और डिसेबिलिटी की परसेंटेज के लिहाज से ये आपको मिलता है। इसमें ब्रॉडबैंडिंग लागू नहीं है। अगर किसी की 70% डिसेबिलिटी है तो उसको 14 लाख मिलेगा, अगर किसी की 50% है तो उसको 10 लाख, इस हिसाब से। अगर आप रिटेन इन सर्विस होते हैं तो आमतौर पर शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अगर शेल्टर अपॉइंटमेंट किसी वजह से विड्रॉ कर दिया जाता है तो आपको इनवैलिडेट आउट की तरह ट्रीट किया जाए। अगर आप सर्विस में रिटेन होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या तो आप पूरी तरीके से रिटायर होंगे या आप EMR लेंगे। इसके अलावा आप डिसेबल्ड होते हैं और आपकी डिसेबिलिटी घोषित की जाती है, आपके पास ऑप्शन है लमसम लेने का। अगर आप ये लमसम लेते हैं तो आपको वॉर इंजरी एलिमेंट नहीं मिलेगा और कैलकुलेशन के हिसाब से ये लमसम अमाउंट ज्यादा फायदेमंद नहीं है, वॉर इंजरी एलिमेंट ज्यादा फायदेमंद है। अभी जो आपकी कैलकुलेशन है, ये जो डिसेबिलिटी है ब्रॉडबैंड हो चुकी है, 3 बैंड्स में अवेलेबल है। अगर 75% से 100 है तो वो 100% मानी जाती है। इसके दौरान जैसे टेबल में बताया गया, आई एम श्योर इसके बारे में आपको पता है। मेन चीज समझने वाली ये है कि सर्विस एलिमेंट कांस्टेंट 50% देता है जो आपकी रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स थे। अगर आप जो हरे कॉलम में देखें, जिसके बारे में सुबह जिक्र हो रहा था कि डिसेबिलिटी एलिमेंट और वॉर इंजरी एलिमेंट सेम है, गलत। वॉर इंजरी एलिमेंट दुगना है डिसेबिलिटी एलिमेंट से। आप प्लीज इस बात को समझिए। जो आम तौर पे डिसेबल होके जाता है लड़ाई की हालत के अलावा, अगर वो 100% डिसेबल्ड है उसको 30% मिलता है सिर्फ। लेकिन अगर आप जो कि वॉर डिसेबल्ड है अपनी पूरी शर्तें करके जाते हैं और 100% डिसेबल्ड है तो आपको 60% ऑफ RE मिलता है, तो दुगना है। वॉर इंजरी पेंशन के बारे में बता चुका हूं। एक्स ग्रेशियो 20 लाख जो कि एक्चुअल डिसेबिलिटी पे मुनस्सर है। इसके अलावा जो 100% डिसेबल्ड है और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एक कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता है जो आज की तारीख में 6,750 रुपए है। ये PS डायरेक्टरेट के थ्रू आपको सैंक्शन होता है। अभी DIV के थ्रू जो मैं कह रहा था क्या क्या आप लोगों को सहूलियतें प्राप्त हैं। एक तो 6 मई 2020 से जनरल विजय ब्रो साहब ने अपने अप्रोच पेपर में लिखा है कि 10,000, 20,000, 30,000 था एज पर द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, वो सही है। लेकिन 6 मई 2020 से ये
अपग्रेड हो चुका है। अगर आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 60% तक है तो 4 लाख मिलेगा, 60 से ऊपर है तो आपको 8 लाख मिलेगा। अगर आप इनवैलिड आउट होते हैं तो आपको 8 लाख मिलेगा DIB की तरफ। इसके अलावा किसी ने सवाल किया था पिछले सेशन में कि ग्रेजुएशन के बाद नहीं कुछ मिलता। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स के दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 पर एनम पर चाइल्ड मिलेगा और आपको प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपए सालाना मिलेगा 2 साल के लिए। मोबिलिटी इक्विपमेंट जैसे व्हील चेयर है, हम आपको व्हील चेयर देते हैं, इसकी पॉलिसी है और इसमें पैसा नहीं मिलता। व्हील चेयर आपको नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर के थ्रू जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका मुआयना करने के बाद आपको रिलीज की जाएगी। सिमिलरली किसी ने कहा था हमको ऑटोमेटिक कार मिलनी चाहिए CSG के थ्रू। अगर आप कार लेते हैं आज की तारीख में उस कार की मॉडिफिकेशन के लिए या अगर आप ऑटोमेटिक कार लेते हैं आप हमसे 70,000 तक का क्लेम कर सकते हैं, तो वो तकरीबन आपकी कॉस्ट को वो पूरा कर लेता है। मॉडिफाइड स्कूटर्स, ये आपका अमाउंट लिखा हुआ है, स्कूटर और व्हील चेयर का कोई पैसा नहीं मिलता, ये आपको व्हील चेयर या मॉडिफाइड स्कूटर मिलेगा। आज की तारीख में हीरो का जो स्कूटर है वो दिया जा रहा है जो एलिजिबल डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, और ये 2 स्कूटर्स आप ले सकते हैं अपनी लाइफ टाइम के दौरान DIB के थ्रू। दूसरा स्कूटर 15 साल के बाद आपको वापस आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरे स्कूटर के लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ बाथरूम के लिए 40,000 रुपया, और जिसकी 60% से ऊपर या इनवैलिडेड आउट है, डिसेबिलिटी 60% से ऊपर है, उसको 1 लाख रुपया अपनी बेटी की शादी के लिए भी मिलता है। इसके अलावा AGI के थ्रू अभी जो यहाँ लिखा है नॉन पेंशनर, आज की तारीख में कोई नॉन पेंशनर नहीं होता, तो ये सिर्फ जो लागू है, ये जो पहला क्लॉज है, केवल ऑफिसर कैडेट ट्रेनिंग के दौरान अगर वो इनवैलिडेट आउट हो जाता है या डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको ये पहला क्लॉज लागू है। और 25 लाख के अलावा अगर डिसेबिलिटी 20% से ज्यादा है, अगर 100% डिसेबल्ड है तो उसका एक लमसम अमाउंट सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा किया जाता है और उसका इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। आप सबको पता है, आप सब जो वॉर डिसेबल्ड हैं, आपको CW डायरेक्टरेट से ग्रेजुएशन तक का तकरीबन पूरा का पूरा खर्चा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलता है। बैंक, आप सबका DSP अकाउंट होना चाहिए, उसके तहत डिसेबिलिटी प्राप्त है जो कि 20 से 50 लाख आज की तारीख में MOUs के तहत लागू है। इसके अलावा जो ECHS की सब्सक्रिप्शन है जो कि टाइम टू टाइम वेरी होती रहती है, वो जो वॉर डिसेबल्ड हैं उनको ये एग्जेम्प्ट है। जो हमारे की प्रोविजन के बारे में बात की हमने, जो 100% डिसेबिलिटी जो 20 लाख 9 लाख से बढ़ा, ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, उससे पहले 9 लाख था। इसके अलावा 1 जुलाई 2009 तक आपकी जो वॉर इंजरी पेंशन थी वो RE से ज्यादा 100% से ज्यादा नहीं हो सकती थी, ये सीलिंग हटा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी का जो लास्ट पे ड्रॉन या RE 2 लाख रुपए था किसी ऑफिसर का, उसका सर्विस एलिमेंट 1 लाख हो जाता है। 100% उसका ऑफ RE अगर 100% डिसेबिलिटी 2 लाख 3 लाख हो गया तो वो 1 लाख ज्यादा हो गया आपकी RE से। अब वो लागू है, पहले वो 2 लाख पे कैप करना पड़ता था। एंड PMI केसेस को ब्रॉड बैंडिंग नहीं था, जो वॉलंटरी आउट जाते थे, अब वो भी 2006 से लागू हो गया है, इंक्लूडिंग जो 2006 से पहले के रिटायरी। कुछ इनिशिएटिव जो आर्मी हेडक्वार्टर्स के दौरान एजीज ब्रांच के थ्रू लिए गए हैं, प्रोविजन केटर फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ वॉर वुंडेड सोल्जर्स। जो हम बात कर रहे थे कि रिटेंशन इन सर्विस में देखभाल नहीं होती, प्रमोशंस की दिक्कत होती है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि पोस्टिंग्स को कोडिंग यानी कि आपकी जो मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस है उनके लिहाज से की जाए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस बीइंग मेट, आपकी प्रमोशंस टाइम टू टाइम हो और पूरे पे एंड अलाउंसेस और सारे प्रिविलेजेस आपको दिए जाएं। डेटाबेस, बहुत जिक्र हुआ डेटाबेस का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज के बाद
बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑर्डर किया गया था। तमाम जो BC नॉन फेटल हैं वो 31,527 हैं जिनका डेटा पूरी तरीके से मेंटेन है, और ऑफिसर्स का डेटा अलग से भी मेंटेन किया जा रहा है MP5, और ये डेटा हर रोज अपडेट होता है। जैसे कि जनरल साहब ने बताया, हमारी फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर साल 1200 से 1400 सैनिकों की जान गंवाई जाती है ड्यूटी की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से, क्योंकि हमारा इतना रिस्क ओरिएंटेड जॉब प्रोफाइल है। इसमें से तकरीबन 150 से 200 बैटल कैजुअलिटी होते हैं। इनमें से जो अपने वॉर डिसेबल्ड होते हैं उनको भी हम एक्सप्रेशन देते हैं, उनकी भी आपकी इनिशियल रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आती है, तो वो डेटाबेस में दर्ज की जाती है। दूसरी चीज, जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाएं, उनका इंटरैक्शन 11 फरवरी 2020 के में 14 एजेंसी, जनरल कार्डोजो भी थे उसमें शामिल, चीफ साहब के साथ की गई। उसके बाद वो आगे नहीं हो सकी, उन कोविड था, आगे की जाएगी। ईयर ऑफ डिसेबल्ड किया गया 2018 में, जिसमें तमाम डिसेबल्ड सोल्जर्स से संपर्क किया गया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा गया और उनको सुलझाया गया। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में अप्रोच पेपर में लिखा गया कि सहूलियतें नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी 2017 में प्रोमulgate की गई। एक पैरालंपिक स्पोर्ट्स नोड BG खड़की में इस्टेब्लिश किया गया है, और आज की तारीख में ये जो नोड है, पैरालंपिक्स में जितने भी स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन थे सबकी ट्रेनिंग के लिए वो तैयार है। और हमारी टीम्स ने 34 इंटरनेशनल मेडल्स और 60 नेशनल लेवल के मेडल्स को जीता है आज तक। ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप देख सकते हैं, सुबेदार आनंदन जी 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर्स, शॉर्टकट में सोमन राणा और मेजर DP सिंह, जिन्होंने स्काई डाइव किया था। ये 7th मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेशन, जिसमें 6 गोल्ड इंडिया ने जीते थे। जो कॉमन कंसर्न है कि वॉर इंजरी पेंशन या इनवैलिडमेंट सिर्फ पेंशन रिटायरमेंट में मिलती है और उससे पहले कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मैंने बताया कि लमसम अमाउंट का ऑप्शन है, पर वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। वो एक कम्यूटेशन फैक्टर के तौर पर आपकी एज और आपकी सर्विस को लेके कैलकुलेट किया जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट के तहत हमको प्रोविजंस नहीं है, ये सही है। इंडियन आर्मी या आर्म फोर्सेस डिसेबिलिटी एक्ट से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि जैसे पहले जनरल साहब ने बताया कि ये नेशनल रिक्वायरमेंट है कि आर्मी को यंग रखा जाए, उसी तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है कि आर्मी को फिट रखा जाए। PWD एक्ट कहता है कि आप इतने परसेंटेज डिसेबल्ड को भी नौकरी देंगे, वो हम नहीं दे सकते। नौकरी के दौरान कोई डिसेबल्ड हो सकता है, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए टाइम टू टाइम चीफ साहब ने ऑर्डर दिए हुए हैं। और लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में 1997 में MP ने निकाला हुआ है कि किसी को भी हम लोग डिस्चार्ज जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपने यूनिट्स में भी देखा होगा, आमतौर पे यही कोशिश रहती है कि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट को विड्रॉ ना किया जाए। एंड लास्टली, the NGO working like war wounded personnel are hurdles to government agencies. ऐसा हम लोग नहीं समझते। हम सबसे सिनर्जाइज होकर काम करना चाहते हैं। हमारे डिस्कशंस लगातार रहते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर या वॉर डिसेबल्ड के बीच के साथ लगे रहते हैं। कल गुलशन, कल अमित साहब मेरे इंस्ट्रक्टर रहे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था IMA में। इनके साथ मेरी लगातार बातचीत रहती है। और डिबागे है, वहाँ पे कैप्टन महाजन है, कल हांडा साहब भी दोपहर में यहाँ थे पहले सेशंस में। इसके अलावा अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लैश हैं, कुछ जिनका नाम दिया हुआ है, सबसे DIV में बातचीत है। एक चीज का ये मुद्दा उठा था जो कल हांडा साहब भी बता गए, सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिसेबिलिटी पे मिलती है उनको, या उनको एक लमसम अमाउंट उसी समय मिलता है। ऐसा नहीं है, कोई डिसेबिलिटी पे उनको नहीं मिलती। उनको लमसम अमाउंट मिलता है कम्यूटेशन फैक्टर के तौर पर, जैसे हमको मिलता है। लेकिन हमको ये ऑप्शन है कि हम लमसम अमाउंट लें या वॉर इंजरी एलिमेंट को कंटिन्यू करें। वॉर इंजरी एलिमेंट या डिसेबिलिटी एलिमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के पास नहीं है, सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास। I'm done.
मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। कृपया करके DID आपका डायरेक्टरेट है, कर्नल वेटरन्स पूरे देश भर में अवेलेबल है। मैंने कई लोगों को यहाँ कार्ड्स बांट दिए हैं अपने, कृपया करके व्हाट्सएप पे आपस में बांट लीजिए। आपकी कोई भी समस्या है, किसी चीज के बारे में आपको सवाल उठता है, आप कृपया करके हम लोगों को हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा फर्ज है ये आपकी देखभाल करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाद में बहुत से क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो सुबह जनरल सापरा साहब ने आपको बताया था कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको जॉब दिला सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ये आपकी मदद कर सकते हैं, इनके पास पैसा है, ये डाटा नहीं रिलीज करना चाहते। अभी ब्रेक में इन्होंने ये बताया है कि अगर आप इंडिविजुअली सर्टिफिकेट देते हो कि मेरा डाटा रिलीज कर दो तो वो कर देंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैंने अभी देखा है, इनकी अपनी वेबसाइट पे 18 लाख से ज़्यादा वेटरन जो हैं वो मेंबर्स हैं। तो इनको पता होगा कि उसमें कौन वॉर वुंडेड हैं और कौन बैटल कैजुअल्टी हैं। तो ये खुद भी उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका डाटा रिलीज कर दें कि ना करें। दूसरा, जो WWF है वो आपसे सर्टिफिकेट लेकर के इनके पास दे सकती है, तो इससे आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिल सकती है। अभी दूसरा प्रेजेंटेशन होगा जो है लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन वॉर डिसेबल्ड पर्सनल एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट टू बोथ। मतलब जो वॉर वुंडेड हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके बीच में कैसे मेल मिलाप हो जिससे दोनों को फायदा हो, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो पैसा बनाना चाहता है पर वो वॉर वुंडेड को भी हेल्प करना चाहता है। तो ये प्रेजेंटेशन करेंगे कैप्टन DP रामचंद्रन। ये 10 साल शॉर्ट सर्विस में रहे हैं और उसके बाद 36 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे, तो इनका बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। पहली है इनका जो बांग्लादेश 1971 वॉर में ये टैंक कमांडर थे, तो उसका जो एक्सपीरियंस है। दूसरा है जो साउथ इंडिया के सोल्जर्स हैं उनके बारे में है। और जो तीसरा है, जो इंडियन आर्मी, तीसरी किताब है जो इंडियन आर्मी में लड़ाइयाँ लड़ी हैं ओवर द सेंचुरीज, उसके बारे में तीसरी किताब है। ये एक फाउंडर ट्रस्टी हैं एक NGO का जो है कलर्स ऑफ ग्लोरी फाउंडेशन, और ये रेगुलर इवेंट्स भी करते हैं आर्मी की जो फौज की हेरिटेज है और मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। तो अभी ये आपको 15 मिनट में प्रेजेंटेशन देंगे, आपको बताएंगे। प्लीज। Honorable Chair, General Roy, ladies and gentlemen, and the gallant war disabled warriors assembly, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं माफी मांगता हूं कि हमारा PowerPoint प्रेजेंटेशन ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया इंग्लिश में। कोशिश करेंगे तो हिंदी इट एज बेस्ट एज पॉसिबल। जो ये स्लाइड का टॉप राइट हैंड कॉर्नर जो लोगो दिखाई पड़ रहा है वो इट इज कलर्स ऑफ ग्लोरी फाउंडेशन which I belong to, which is engaged in promoting awareness of military heritage, as General Sahab was saying. I will be discussing how war disabled, how a long-term relationship can be built up between war disabled and corporate entities, which is beneficial to both. मतलब दोनों के बीच में तकड़ा एक रिश्ता कैसा बना सकता है ये छोटे लफ्ज में। Right. Now, this is the agenda I've structured my presentation on. We'll just keep it, I mean, we'll go about one by one. The case for a long-term partnership. I've analyzed this topic on the premise that the cornerstone of a long-term relationship has to be a robust placement scheme wherein the war disabled can find productive employment while being effective members of a
workforce of their corporate employees. This is possible because, as far as I understand, only a low percentage of the war disabled or rather low percentage of the disabilities are incapacitating, rendering the majority of war disabled capable of being successful workers. And there can be no better moral builder for them to find themselves working and earning. So I've also explored the as secondary and tertiary avenues, the channelizing social, the CSR initiatives and corporate sponsorships to support the war disabled. Now, okay. I'll take the corporate placement scheme first. This has necessarily got to be an exclusive one for the Army because most of the war disabled are from the Army. Ideally, a corporate placement cell should be formed under the auspices of the Army headquarters. The cell has to address 5 main areas. We'll again take it one by one. First is the awareness building about Army veterans. Now, I want to first highlight the existing misconception among the civilians at large about the employment potential of the Army veterans, armed force veterans in general. They seem to think that these veterans are only good enough for security jobs. This mindset has to be totally changed before we can build up any meaningful relationship. Therefore, the primary requirement is to educate the corporates on the availability of skilled and non-skilled manpower available within the Army. This can be achieved through a well-organized PR campaign. The most effective way to go about the campaign will be through direct mailers addressed to the CEOs of major corporate organizations, highlighting the benefits of choosing Army as their source of manpower. Besides the traits of discipline, integrity, loyalty, which is commonly attributed to soldiers, we have to highlight the hands-on experience of the veterans. Conventionally, the corporates recruit raw civilian hands with no work experience, solely based on their academic qualification, then put them through internship before using them. By recruiting veterans, they can simplify and economize this process. Therefore, the focal point of a campaign should be by recruiting veterans, they can get a ready-to-use manpower, saving on their expenses on training and stipend. Additionally, they also get a highly disciplined workforce, bringing in a new, rather better work culture than what may already have, increasing their productivity. That's what corporate success is all about. Therefore, there's no reason why the companies must not embrace a system where they just achieve that and realign their HR management policies accordingly. I'm suggesting a holistic approach, connecting the entire veteran community with the corporates, rather than addressing the issue of the war disabled, exclusively addressing the issue of the war disabled at this stage, because inducing the corporates to recruit veterans is the first step. So, sorry, I bent over. Yeah, before I go to this next slide, the same theme I was talking about the general ignorance among the civilians. I'll just play a video. Another Fauji like me who has been working with the corporates is talking rather passionately about it. And I'll just in India. You may not know this, but close to 40 to 50,000 ex-servicemen come out of the armed forces every year.
I'm not that concerned about the officers. The officers managed to do well. Think about a Jawan who joined the army at the age of 19 and for 20 to 22 years, 25 years in some cases, served in some of the most harsh places. Let's forget about that. That's part of what they signed up for. But let me tell you another dimension of their life. If an army Jawan is lucky, he will get 2 months of annual leave per year. If he is lucky. Usually they don't get it because of off deployment, but he'll get 2 months of leave every year. Do the math. For 20 years, he will see his family 2 months into 20. And for 3 months of the year, he doesn't even have the privacy of a room. He'll be in a barrack. And he will do that until the age of 40. And at 40, the government of India will chuck him out into the civil street. The only job we give them is opening doors, closing the job we give. And these are the same soldiers who build bridges for you when engineering companies can't build it, who build communication networks when communication networks have failed. They are the ones who reach out there and in every disaster, in every place, they operate foreign equipment. I was part of a mechanized infantry battalion, and our entire equipment was in Russian. Labels were in Russian, the manuals were in Russian, and 10th class pass Jawans can operate third generation missiles. They can fire third generation missiles. And our country trusts them during national disasters. We trust them when we send them to United Nations to represent us in peacekeeping. We trust them to rehabilitate entire communities which have been flattened by earthquakes in Latur or floods in Punjab or landslide in Himachal Pradesh. But somehow our corporate India doesn't seem to be able to trust them with even a small business role or a small entrepreneurship role. I think it's one of the most stupid things that we do, that we take this extremely highly trained, and by the way, you have to remember that our budget, if you calculate the entire, the training, the manpower, all of that is an academy for which you pay. It comes from your taxpayer money. And these alumni of the academy, you're under-leveraging them by just making them guards out there. We need to exploit their capability and leverage them as well. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. जितना बुरा हालत है हम देख लिया अभी I was addressing how to overcome these problems, some of them. The first, as I said, if you are able to convince the corporates to recruit the veterans, they will readily absorb the war disabled as well. So that should be the first step. However, for this exercise to be successful, we need to find the right man for the right job. So that takes us to matching corporate HR needs with army traits. That's quite a job. Somebody was talking in the morning about the data problems and mixing, how to, but we got to do it. Unless they know which trait in the army can be used for which sort of job available in the corporate sector. So this can be achieved only through close liaison with the corporate organizations. Mechanics of the placement cell. Placement scheme rather. The placement cell should have a website, obviously, with where the organizations who need personnel can register and requisition their personnel. The cell has to be stocked and equipped for digitalized and meticulous mapping of demands and available manpower for different categories. There has been an exclusive section for the war disabled. The thumb rule for the placement must be all parameters being equal between two candidates. The war disabled get the preference, and then now the drawback of creating a program exclusively for the war disabled is we may not be able to meet, find suitable candidates for every demand that we receive from among the war disabled. With an option to recruit candidates from among the other veterans, we can meet all the demands. A placement scheme has to be a seamless process where all demands for personnel are promptly met. Now, orientation and soft skill training, the next issue. Besides the coordinating placement, the placement cell has to forecast future vacancies,
from inputs received from the, showing the job description through inputs received from the corporates. By monitoring such data, it's entirely possible to find suitable candidates for, and where required, impart job-specific training to them. Such training can go hand in hand with the rehabilitation process of the war disabled. As a general policy, it might be advisable to train all the war disabled in soft skills like computer usage and communication skills. For one, by the nature of the injuries, the war disabled, it may be necessary for them to take up desk jobs or jobs which don't involve too much of physical work. Secondly, Hindi being the lingua franca in the army, they might find that their lack of proficiency in the English language may hinder them being successful performers in the corporate world. The whole exercise should be focused at training and equipping them to be successful corporate performers even while they're still serving. Now, psychological or preparation for a corporate transition. Now, what you heard in the video is only one side of the story. The veterans themselves compound the issue by not being assertive enough to find their place in the corporate world. The veterans, by and large, are handicapped by a psychological barrier in seeking successful corporate careers. Having served in the relatively safe armed forces environment with absolute job security, they're inherently shy of jobs which appear unfamiliar and generally opt for security and administrative assignments, which are with minimum challenges. This mindset is fundamentally flawed. Well-paying corporate jobs with good upward mobility involves certain amount of challenges at all levels, and it calls for initiative on the part of employees at all levels. For example, one of the areas which, or rather the area where you find maximum openings in corporate sector is marketing. All sales personnel from now, why is there marketing? Is because if a company cannot sell their product or service, all their activities come to naught. So all sales personnel, from young executives to the senior managers, they all need a flair for salesmanship. The veterans generally deem it beyond their competence and not even look at these assignments. It's not that formidable. You can always sort of get into marketing. It's not that difficult. So after all, salesmanship calls for a certain amount of aggressiveness. And aggressiveness is dominant in every soldier. It's only a matter of channelizing your aggressiveness to sort of meet goals in a different sort of area, or rather different environment than the battlefield. Now, you need to understand, these veterans, the structural, the structured thinking and analytical skills they develop during the service, and their dormant aggressiveness, as I said before, and perseverance. These are valuable tools which can help them get an edge in a competitive environment. Yeah. Now we come to the secondary avenue. Having 2 minutes completed with the placement, 2 minutes. I'll do the last ones. From a patriotic and moralistic point of view, it might appear that the prime area for focusing the CSR initiatives should be helping the disabled. But in a country like India, with so many social ills, poverty and malnutrition being not the least of them, they might find enough justification to
focus elsewhere, which they consider more urgent. Nevertheless, with proper PR, they could be enthused to allot at least a certain percentage of their CSR budget for the exclusive for the war disabled. One of the areas where I'm short of time, so I'll just first through it. One of the areas where we can they can give valuable assistance is in setting up medical centers in areas for catering for the special needs of the war disabled in areas which they lack. This will be extremely helpful in alleviating the troubles of the severely injured, like the paraplegics and those needing regular dialysis with no facilities available at hand. If ECHS could be associated with these such ventures and the centers empaneled, eventually the corporates will be benefited from this. Another area where we can the CSR can be brought to bear is setting up industrial training institutes. These institutes can train war disabled in specific trades before or after their retirement, which will help them in their subsequent placement. This will be rewarding for the corporates also, because they can source trained manpower. Industrial training can also help the war disabled set up SSI units. These SSI units in turn can produce accessories for the manufacturing plant of the corporates. So again, it is mutually beneficial. Corporates are getting a ready supplier, where these people are getting their a ready market for their products. And the third and a very strong partnership can be made through dealerships. The corporates can set up exclusive dealership units to be run by war disabled. Those who can afford can get franchiseships also. This entrepreneurial course of resettlement offers tremendous potential for growth and prosperity, not only for the war disabled, for the entire veteran community. There is a need to educate and encourage them to take up startups and start thinking as employers and not employees always. And this will. The last part of the talk is corporate sponsorship, the tertiary avenue which I was talking about. This is para sports is a major area where the corporates can further the cause of the war disabled by sponsoring major para events. Now these events are held in major metros. Now the NGOs and because that is where the corporates do their brand building. Now the others, the NGOs and veteran associations can conduct these events in other cities across the country, seeking sponsorship from corporate organizations. So what I'm saying is the NGOs, veteran associations, they all got to be involved in this process. So the corporate associations can also sponsor marathons. By not marathons, by corporate groups of war disabled to take part in marathons, those from rural areas, since a marathon takes place in cities. High visibility events like marathons, para sports, these all draw a lot of public attention, giving a fillip to the brand building of these corporates, bringing the war disabled to limelight, which is essential to pedestal them unforgotten the national conscience. In conclusion, I will say centralized corporate scheme devised and developed by the Army, supplemented by focused CSR initiatives and sponsorship mobilized by the veteran associations and NGOs, can certainly ensure a partnership between war disabled and corporate organizations that benefit with them both. Thank you and Jai Hind. Thank you. अगला प्रेजेंटेशन होना था फॉर्मलाइज स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर वॉर डिसेबल्ड पर्सनल और पार्टिसिपेशन इन पैरा ओलंपिक्स इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स। इसके लिए आना था डॉक्टर दीपा मलिक, जो प्रेसिडेंट हैं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। पर ये नहीं आ सकें क्योंकि इनके हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप कनेक्ट करिए जो
सुबह आपसे बात की गई थी कि यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं होना। डॉक्टर दीपा मलिक एक आर्मी फैमिली से हैं, उनकी आर्मी में शादी हुई है। 5 साल की उम्र में इनको स्पाइनल इंजरी हो, पर फिर ये ठीक हो गई। फिर इनकी स्पाइन में ट्यूमर आ गया और 29 साल की उम्र में इनको बोला गया कि आपका ऑपरेशन होगा, पर आप ऑपरेशन के बाद शायद चल नहीं पाओगे। पर उनका ऑपरेशन हुआ और 30 साल की उम्र में इन्होंने स्पोर्ट्स शुरू की। आपने इनकी फोटो देखी होगी शायद टीवी के ऊपर। इनको पद्मश्री खेल रत्न मिल रहा है, अर्जुना अवार्ड मिल रहा है, शायद देखा होगा आपने। तो स्पोर्ट्स इन्होंने क्या की, शॉटपट, जैवलिन, डिस्कस, स्विमिंग, मोटरसाइकिल भी। इनको मोटरसाइकिल चलाने का इनके पास लाइसेंस है। ये एक रोल मॉडल है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और मेरे हिसाब से ये वंडर लेडी है इंडिया की। क्यों? इन्होंने 18 इंटरनेशनल मेडल और 54 मेडल इंडिया में जीते हैं, जिसमें इनमें 2016 में रियो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 45 साल की उम्र में 2018 में जैवलिन चैंपियनशिप में इनका जो एशियन रिकॉर्ड है वो आज तक नहीं टूटा है। इन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं, जिसमें है पद्मश्री खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप, प्रेसिडेंट फर्स्ट लेडीज अवार्ड, प्रेसिडेंट्स नेशनल रोल अवार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्होंने इस सेमिनार के सक्सेस के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और जितने वॉर वुंडेड हैं उनको शाबाश और जय हिंद बोली है। हम सिर्फ इनको भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जल्दी से इनकी हेल्थ ठीक हो जाए। अभी अगला जो प्रेजेंटेशन है वो एक नरेशन है एक्चुअली एक किताब के बारे में, जो पहली किताब लिखी जा रही है वॉर डिसेबल्ड पर्सनल के ऊपर इंडिया में, और इसको लिख रही हैं मिसेस मेघना गिरीश। ये भी एक आर्मी फैमिली से हैं और उनकी शादी हुई थी एक एयरफोर्स पायलट के साथ। इन्होंने मास्टर्स किया है फार्मेसी में डिस्टिंक्शन के साथ और पीजी डिप्लोमा किया है एनवायरनमेंट एंड लॉ के लिए बेंगलोर से। इन्होंने एक एनजीओ के साथ भी काम किया है, एक्शन एड इंडिया, और एक फ्रीलांस डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हैं। शी इज अ प्राउड मदर of braveheart Major Akshay Girish, who led the QRT and courageously made the supreme sacrifice while saving lives of women, children, unarmed men in the terror attack in Nagrota, J&K on November 29, 2016. देश के लिए कुर्बानी दी है बेटे ने। फाउंडर ट्रस्टी हैं मेजर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट की, एंड इनको और इनके हस्बैंड को जो विंग कमांडर गिरीश कुमार हैं उनको अवार्ड दिया गया 2021 में इंस्पायर्ड इंडिया फाउंडेशन अवार्ड। ये अभी आपको नरेशन करेंगे, अपनी किताब के बारे में बताएंगे प्लीज। सबको कोशिश करूंगी कि हिंदी में बोलूं। और पहली बात तो ये कि तो मैं बात करने जा रही हूँ कि स्टडी है जो वॉर वुंडेड फाउंडेशन जो कि वॉर वुंडेड फाउंडेशन ने मुझे कहा है करने को। तो ये एक स्टडी है और ये आपकी स्टडी है। आप में से कुछ लोगों ने इसमें ऑलरेडी भाग लिया है, जो कि हम सर्वे कर रहे हैं, और ये सब जुड़ा हुआ है। सुबह से जितने भी सेशन हुए हैं इन सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज है हमारे वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स की, उनको हमने कैप्चर किया है एक स्टडी में। और ये इसलिए मुझे दिया गया क्योंकि हमने ऑलरेडी फेटल बैटल कैजुअल्टीज जो जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनके परिवारों के लिए हमने जो स्टडी की थी वो पब्लिश हो चुकी है यूएसआई जर्नल में, और वो रक्षा मंत्री को दी गई थी। DESW में उसकी मीटिंग हो गई है और ब्रिगेडियर भारद्वाज ने जो वो कुछ NGOs के नाम लिखे थे
उनमें हमारा भी है मेजर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट, जिनकी हमारी मीटिंग भी हुई थी फरवरी में। तो ये आपकी स्टडी है जो मैं आप ही को प्रेजेंट कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों ने उसमें भाग लिया है, यहाँ पे कोई गिरधारी लाल जी एक हैं उनमें से, और भी हमारे वॉलंटियर्स ने आपके शायद नंबर लिए होंगे ताकि वो कांटेक्ट करें आपको। तो बेसिकली ये वही डेटा है जो हमें मिली है, जो कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी जो टाइटल है इसमें लिखा ही गया है कि क्या गैप्स है, मतलब जो पॉलिसीज हैं, जो आपकी एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स हैं, उनको मिलने में क्या बाधाएं हैं या क्या गैप्स हैं, कितने आप में से उनको पा रहे हैं और कितनों को वो हासिल नहीं हो रही है। और मेरे गाइड हैं स्टडी में जनरल कार्डोजो। माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सुनाई दे रहा है? तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं साइड में। यहाँ पे स्टडी में हम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो डिसेबिलिटी रिलेटेड डिटेल्स हैं वो ले रहे हैं। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है तो एक्सेस कहाँ है, क्या आपने आगे पढ़ाई की, क्या आपको कोई जॉब मिलने में या एम्प्लॉयमेंट मिलने में मदद मिली, क्या आपको एक्सग्रेशिया, ट्रैवल कंसेशन, आपके बच्चों की फी रिएम्बर्समेंट, आपको कोई लाइवलीहुड सपोर्ट जैसे एजेंसी कुछ मिली है या नहीं, और आपकी क्या राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार को या आर्म्ड फोर्सेस को, या आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो क्या है, उन सबको हमने कैप्चर किया। ये अभी स्टडी चल रही है, इसे और कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेनी है, मतलब वो सभी इंडिया के वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स की जो स्थिति है उसको कैप्चर करने के लिए हमें एक सर्टेन सैंपल साइज को कवर करना पड़ता है। तो ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, दीज आर प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स। तो इसमें कुछ फिगर्स साइड में ऑलरेडी लिखी हैं। आपके जो एजेस हैं जिन्होंने अभी तक भाग लिए हैं 14 स्टेट्स में से, फ्रॉम 14 स्टेट्स, 39 और 79 ईयर्स के बीच के हैं। एवरेज एज 56 है। 72% से ज्यादा के 3 या ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं, मतलब वाइफ, चिल्ड्रन, किसी ने पेरेंट का भी नाम दिया है। 44% आप में से सर्विस में बने रहे डिसेबिलिटी होने के बाद, या तो फिर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली या पूरी सर्विस तक आपने सर्व किया। इसमें से 24% ने बोला है कि हाँ, हमें बैटल कैजुअलिटी होने के बाद कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब हमें कुछ स्ट्रेस हुई थी, लेकिन खाली 8% को उसकी कोई ट्रीटमेंट मिली है। किसी को भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी जो कि फेटल बैटल कैजुअलिटी की फैमिलीज को किसी को दिया गया। कारगिल के बाद तो सभी को दिया गया, बुला के दिया गया, ऐसा कोई नहीं है कारगिल शहीद जिसको की एजेंसी ना दी गई हो, लेकिन उसके बाद जनरली ये कम हो गई है। एंड आई थिंक वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स में से किसी को भी अभी तक जिन्होंने हमें सर्वे में भाग लिया उनमें से किसी को नहीं मिली है। और 52% कहते हैं कि आपकी यूनिट या रेजिमेंट आपके साथ संपर्क में है और बहुत सपोर्टिव है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, कितना इसको समझ पाएंगे मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। बैटल रिलेटेड डिसेबिलिटीज को हमने कैटेगराइज करने की कोशिश की है आपकी डेटा से। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो 37% है वो एम्प्यूटी है, या तो हाथ या पैर, एक या दो। और उसके बाद है 26% है जो डीप वुंड्स जिसे कहते हैं, किडनी में लग गई, ऑर्गन के अंदर बुलेट गोली लग गई है, दैट इज डीप वुंड्स। और बाकी जो भी कलर्स के हिसाब से विजुअल 11% की एक या दो आंख की विजिबिलिटी के इश्यूज हैं, बाकी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेरे पास खाली 5 मिनट है तो इसलिए मैं बहुत जल्दी करूंगी। एंड एज पर मेडिकल बोर्ड जो सबसे ज्यादा नंबर है 41%, बिटवीन 20 एंड 50% डिसेबिलिटी है, और जो 100% डिसेबल्ड है वो है 28%, जो इट्स क्वाइट अ नंबर। हॉस्पिटलाइजेशन पहली बार कितने महीने आप हॉस्पिटल में थे, वो 48% वर देयर फॉर मोर देन 6 मंथ्स। करेंटली आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती है वो अगला ग्राफ है। तो सबसे ज्यादा आप ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 75% जा रहे हैं, और 12% आर्मी हॉस्पिटल में, और 13% प्राइवेट में भी ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेस की किसी को डिफिकल्टी है, किसी को मुश्किल हो रही है। ये कुछ और ग्राफ्स हैं, आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, बट एजुकेशन में लिखा गया है कि 98%
कि सिर्फ स्कूलिंग तक एजुकेशन हुई है, और हम जानना चाहते थे कि क्या डिसेबल्ड होने के बाद किसी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी या उनको कोई सपोर्ट मिला, तो उसमें अभी तक हमें ऐसे कोई मिला नहीं है। ये मोस्टली बिलो ऑफिसर रैंक की सर्वे है सारी, हमने ये ऑफिसर्स अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और क्या आप अपने एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, तो 50% ने कहा कि पार्शियली, थोड़ा बहुत, और सिर्फ 36% ने बोला है कि पूरी तरह से उनको आपको जानकारी है कि हमने क्या क्या हमारी एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स है, हमें पूरी जानकारी है, वो सिर्फ 36% ने कहा है। और एक तो है ये नेशनल लेवल पे जो फाइंडिंग्स है, ये है हमने थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश की है अलग अलग स्टेट्स में क्या हालत है, और इसमें दिखाया गया कि स्टेट्स में क्या एक्स ग्रेशिया जो देते हैं वो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्स ग्रेशिया मिलता है कितने लोगों को मिला है। तो इसमें आई थिंक ब्लू इज यस एंड ऑरेंज इज नो। तो 82% महाराष्ट्र में कहते हैं नहीं मिली है स्टेट गवर्नमेंट की एक्स ग्रेशिया, और राजस्थान और पंजाब में थोड़ा सा बेटर है, 43% को एक्स ग्रेशिया मिली है। नेशनल लेवल पे खाली 31% को स्टेट की एक्स ग्रेशिया मिली है। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे कवर हुए हैं इसमें। ये कुछ है, क्या आप लोगों ने ट्रेन या फ्लाइट की कोई कंसेशन ली है, क्या आपको पेंशन रूल के हिसाब से मिलती है, तो इसमें ये अच्छा फिगर है। 91% कहते हैं हाँ, बट फिर भी 9% कहते हैं नहीं, हमें कोर्ट जाना पड़ा, हमें हमारी जो डिसेबिलिटी है उस हिसाब से हमें पेंशन नहीं मिल रही है। कोई कहता है हमें बहुत दूर देर तक लड़नी पड़ी फिर मिली। तो क्या आप मेंबर हैं किसी वॉर वुंडेड फाउंडेशन या रिवेव के, तो इसमें भी 35% कहते हैं कि नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छा लगा देख के कि क्या आप अपने बच्चों को या पोता पोतियों को फौज में देखना चाहते हैं, तो 85% कहते हैं हाँ हम भेजना चाहते हैं। हम मतलब वो है अभी भी कि देश की सेवा में अभी भी वही जोश है कि चाहे जो भी तकलीफ हो हम अपने बच्चों को फौज में देखना चाहते हैं। ये आपकी कुछ आवाजें हैं जो अलग अलग लोगों ने बोली है। अगर इसमें से किसी आपका नाम है तो आप बता सकते हैं। आई थिंक गिरधारी लाल जी एक है, सिपाही गिरधारी लाल राजस्थान। उन्होंने लिखा है कि मैं पैरालाइज्ड हूँ वेस्ट बिलो, मेरे पास एक मैनुअल व्हीलचेयर है पर मुझे अगर ऑटोमेटिक व्हीलचेयर मिल जाए तो अच्छा होगा। कईयों ने कहा है कि हमें इज्जत नहीं मिलती और हमें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज को हमें बुलाना चाहिए, फेलिसिटेट करना चाहिए, सोसाइटी में हमें मान सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए, और हमें CSD ECHS में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लाइन में हमको जल्दी देखना चाहिए, खड़ा नहीं रखना चाहिए क्यू में, और कुछ प्रोस्थेटिक लिम्स भी जो अच्छे कंपनीज की हैं वो मिल जाए हमें, तो हमारी मोबिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो ये बहुत सारे वॉइसेस हैं, इसमें से मैंने थोड़े से ही लिए हैं, कुछ केस स्टडीज भी हम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंट रेडी होगा। तो ये जो हमारे इंडिया के अभी 75 ईयर्स में अभी तक ऐसा कोई हमारे पास क्लियर कट बुक नहीं है जो आपकी अपनी कहानियां, अपनी डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बन जाए। इसका फायदा क्या होगा ये मैं बाद में बताती हूँ। आज कोई है नहीं डिसेबल्ड कैडेट्स, लेकिन जैसे हम सोल्जर्स की स्टडी कर रहे हैं वैसे ही डिसेबल्ड कैडेट्स की भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स कैडेट अलग अलग एकेडमी से बोर्ड आउट हो जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान उनकी इंजरी हो जाती है और उनका पूरा मतलब जो सपना था फौज में जाने का वो भी खत्म और वो बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये एक सिर्फ एक स्लाइड है कि अलग अलग एकेडमी से कितने लोग निकले हैं, और ये 75 कैडेट्स हैं आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के, मैक्सिमम आर्मी के हैं। इसका मैं ज़्यादा अभी इलेबोरेट नहीं करूंगी, इसकी एनालिसिस अभी जारी है। इसके आगे क्या क्या करेंगे हम, ये सब डेटा लेके इसको हम डिस्कस और एनालाइज करेंगे कि क्या पॉलिसीज है, क्या इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है, और क्या आपकी सजेशंस है, क्या सलाह है। बहुत सारे वेटरन ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पे और आप सबकी भी जो सलाह है उन्हें डालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये गैप को एड्रेस किया जाए, और जो बाकी NGOs होंगी या कॉर्पोरेट्स होंगी या सब होंगी वो क्या कर सकते हैं इस इश्यू के बारे में। ये स्टडी अगर पब्लिश हो जाएगी तो इट विल बी वेरी गुड। आप फर्दर एडवोकेसी सरकार के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी कर सकते हैं, ये हमारा मानना है।
ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स आज भी मौजूद हैं जिन्होंने आप लोगों के नंबर लिए। जिन्होंने नहीं इस सर्वे में भाग लिया है अभी, अगर आप लेंगे, जो भी आप कहना चाहेंगे, आपके जो मुद्दे होंगे आप उनसे बात कीजिए आराम से, अपने घर जाने के बाद भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। ये हमारे वॉलंटियर्स के कुछ नाम है, और जो हमारे वॉर वुंडेड फाउंडेशन और यूएसआई से जो हेल्प मुझे मिल रही है उन सब के मैंने नाम लिखे हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद। इससे पहले कि आप क्वेश्चन करें, मैं बिगड़े भारद्वाज से क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्या अपनी वेबसाइट के ऊपर आप एक फॉर्मेट डाल सकते हैं कि मैं वेटरन हूं, मेरे को जॉब चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं, बिकॉज देन ऑनलाइन आपको वो बता सकते हैं कि मेरा आप डेटा रिलीज कर दो। और इनके पास 18 लाख से ऊपर हैं, तो साथ में एक मीटर भी चलना चाहिए कि ओके 2 लाख रेडी हैं जॉब करने के लिए। काम तो बहुत है, पर अगर आप ये करेंगे तो बहुत हेल्प होएगी। इज इट पॉसिबल? नहीं, इनको जवाब तो देने दो पहले। सर, आपका जो सुझाव है वो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, लेकिन जैसे जनरल सावरा साहब दोपहर पहले सेशन में बता गए कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ही डायरेक्टरेट के साथ सेम कैंपस में लोकेटेड है, उसका नाम है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी जॉब सीकर है हमारा रिटायर्ड या रिटायर होने वाला, वो उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर होता है। मेरा काम है, डीआईबी का काम है कि आपको जो रिटायरमेंट से पहले डिस्चार्ज ड्रिल के दौरान आपको एक सिविल जॉब के लिए कुछ तरीके से तैयार करना, जो कि आज की तारीख में हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल कोर्सेज चलाते हैं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जॉब के लिए नहीं है, हमारे जो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन है, हमारा वेबसाइट इस साल के एंड तक अपग्रेड हो जाएगा, जिसमें वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल एक नई पॉलिसी आती है जो कि वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए कुछ बेनिफिट लाती है। तो जो हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं उनके पास हम एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली भेजेंगे कि ये नई पॉलिसी आई है, इससे आपको ये फायदा है, आप कृपया हमसे संपर्क करिए या ये आपको आगे का स्टेप्स लेना। तो जॉब्स के लिए AWPO की वेबसाइट पर रजिस्टर करना जरूरी है। और जैसे सुबह साहब ने बताया, जो पुराने MD AWPO हैं, कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो हमारे वॉर डिसेबल्ड है रजिस्ट्रेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि सारे जो वॉर वुंडेड हैं उनको डायरेक्टली आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट एजेंसी को जॉब करना पड़ेगा। और जॉब्स आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट एजेंसी को करना पड़ेगा। क्वेश्चंस? Good afternoon, sir. Firstly, thank you very much for excellent information I've been given to all of us this morning. I'm Major Goel. I took my premature retirement in 1994. Since then, I'm running a lot of businesses in different fields, particularly in education, and also working a lot for the placement of services in corporate and other sectors. So the basic problem which I have seen in the last over 20 years plus, that the jobs are available and they are fixed for the ex-servicemen, but the people are not job ready. So we really need to work on this to make them job ready, so that we know that these are the vacancies that are going to come up in the corporate sector. But when we go to them to place our people, they say aapke log to taiyar nahi hai, and those vacancies are given to other people who are not ex-servicemen or from these categories. In fact, I have gone to Dehradun. I've spoken to people, agencies which are placing army people, especially in the company, 7 states. But they are not placing the army people, ex-servicemen or other people, but they are giving jobs to civilians because there are no people ready. So my point is that we need to really work out on the preparation of the people for the job. We know jobs are coming, but we should start working 6 months
in advance to prepare the people for that. And any support required in that, I'm ready to do. Thank you. Sir, I would request you to get in touch with us. I have a separate section called the skilling and transition. And probably we could synergize and work for the benefit of the victim. So my company is already an STC partner. We are also with the Sector 3 Council. Yesterday there was a seminar, so I could speak a lot that time. And we have already trained people across India from various sectors. We are the largest center of ISMOU with more than 8,000 students in my country. So we could take it forward. Sure, I'll take your numbers. Thank you. दो सवाल है। क्या आप सोच रहे हैं कि में कोई सेल खोलेंगे और डिसेबल्ड? सवाल है कि आपने मेंशन किया कि RPWD एक्ट इज exempt as far as the armed forces are concerned. So it's the exempt. तो फर्स्टली जो आपका पहला सवाल है कि क्या एक सेपरेट सेक्शन, हमारे पास एक ऑलरेडी सेक्शन है विच इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर। इनका फोकस ही डिसेबल्ड वॉर वेटरन्स, विडोज, डिसेबल्ड सोल्जर्स के ऊपर। सो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जैसे मैंने बताया जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही है डिसेबल्ड वॉर सोल्जर्स के लिए, वो एक सेक्शन ऑलरेडी उसके लिए काम कर रहा है अंडर अ फुल फंड। And my director is already here. Now, second question is what aspect of the PWP Act is exempt to us? Manish? Mike? Section 20 and Section 34, under which the armed forces are exempt from the Disability Act, the RPWD Act, which by which we can armed forces do not have disabled. I mean, keep the armed forces fit, we cannot have disabled people in the army. But as a good gesture, what we've done, as brought out earlier, even said that no battle casualty war will be voted out from the army until unless he is self-treatment. That is a policy letter in case. But as far as RPWD Act is concerned, we cannot put anybody. Correct. Because we want a physically fit army. So we cannot have somebody who is disabled. Does the PWD Act lays down a percentage of disabled to be employed in at the time of recruitment? That is against the ethos of maintaining a fit and honor. आपने ये पॉइंट पिछले सेशन में भी दिया था, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया और मैं आपको इसका जवाब चेक करके दे दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक ऑटोमेटिक गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से महंगी आती। नो, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिक पॉइंट टेकन। इसका मैं सीएमसी डायरेक्टर से चेक करके हम आपको इसका जवाब देंगे। समझ गए आपकी बात, जायज पॉइंट है, पॉइंट हमने ले लिया आपका, इसका जवाब हम आपको दे देंगे सीएम डायरेक्टर से चेक करके। और अगर ये सहूलियत नहीं है तो कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट आगे लेके जाए। मैं चेक कर एनी हम चेक करके आपको बताएंगे। जायज पॉइंट। तो मेरा एक सजेशन लास्ट सेशन के ऊपर वो ये है, विजिबिलिटी के लिए जब रिपब्लिक डे परेड में
वेटरन वॉक करके जाते हैं सोल्जर्स, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे हमारे व्हील चेयर वाले बैठ के जा सकते हैं. Imagine दो लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल स्टैंडिंग विदाउट लेग्स ऑन दैट. What a great visibility it will give the nation in the Republic Day parade. That should be there. Thank you. सात सेशन क्लोज करने जा रहे हैं. मैं सिर्फ आप सब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ. हम लोग देखते हैं कि हमको और क्या मिल सकता है. मैं चाहूंगा कि आपका जो पीपीओ है उसको गौर से देखें, इसकी तुलना करें जो आपको हर मंथ पेंशन पे स्लिप मिलती है, क्या वो सही है कि नहीं. अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप व्हाट्सएप से हमको भेजिए, हम चेक करके बताएंगे. हाल में ब्रिगेडियर्स के ब्रिगेडियर साहब जो कि एक वीर चक्र हैं 1971 की लड़ाई के, वो वॉर इंजर्ड है और उनको आज तक डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है और वॉर इंजरी एलिमेंट नहीं मिल रहा है. तकरीबन 20 से 25 लाख के एरियाज मिले. मेरा कहने का मतलब है रैंक ये तय नहीं करता है कि आपको सही चीज मिल रही है कि आप कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट्स का मुआयना कीजिए और अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप हमारे पास आइए, हमारे पास भेज दीजिए किसी भी तरीके से, हम चेक करके आपको बताएं. क्योंकि जब आप डीआईवी में आते हैं कि ईसीएचएस के मतलब कोई पॉइंट है या जैसे सीएचडी की बात है, तो हम उसको पहले हल करेंगे और उसके बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम चेक करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, एक और देता हूँ. अगेन 71 वॉर की कैजुअलिटी है, उनकी विधवा हमारे ऑफिस आई. मुडालिया साहब यहीं बैठे हैं हमारे साथ, पिछले 5 साल से हमारे साथ हैं और वेटरन्स अफेयर्स में 7 साल से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है. जब उनके डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किया, हैरानी की बात है कि प्रति माह उनको 65,000 रुपया कम मिल रहा था और उनको 67 लाख के एरिया मिले. हमको इसमें कोई खुशी महसूस नहीं होती. हम ये सोचते हैं कि अगर ये पैसा जो उनका जायज था उनको सही समय पे मिलता तो उनको जीने का तरीका, उनके बच्चों की परवरिश एक अलग तौर से हो. तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए. नहीं समझ में आ रही है हमारे पास आइए, ताकि हमको ये श्योरिटी हो कि जो आपको एंटाइटल्ड है वो आपको मिल रहा है. थैंक यू. आपको दे दिया मैंने वही नंबर, आपस में बात कर लीजिए, मैं इसके बाद ले लीजिएगा. I think I'll conclude the session now. I'd like to thank WWF and USI for giving me this opportunity. And I also thank the panelists for some excellent presentation. Thank you very much. Thank you very much. So, may I now request Lieutenant General Asif Mistry to please come up on stage and honor the chairperson and panelists of the session. हम जनरल मिस्त्री को निवेदन करते हैं कि वे आके पैनल के मेंबर्स और चेयर को सम्मानित करें. Thank you very much, sir. I now request my co-host and the Executive Director of the War Wounded Foundation, Colonel Amitabh Amit, to please deliver the vote of thanks.
Good evening, everyone. I know you're getting restless. बैठिए प्लीज, बस वोट ऑफ थैंक्स बहुत जल्दी समाप्त होगा. और ladies and gentlemen, I thank General VP Malik, former Chief of Army Staff, for sparing time to be the chief guest at this seminar for the war disabled personnel. What the former Chief of Army Staff has said in this address has been taken note of by all stakeholders. He touched upon some very extremely important issues. Especially like to thank all the guests who have come and spared their valuable time in being with us. And 2 मिनट के लिए बैठ जाइए. I'd like to thank the chairs for the session, General Oberoi, General Katoch, and General Cardo, and the members of the panel, Lieutenant General Arvind Datta, Major General Hardev Singh, Major General Bhupesh Jain, Major General Deepak Sabra, Brigadier Deepak Sinha, Brigadier Vikas Bhardwaj, Major Navjeet Singh for their incisive observations on the issues taken up. Mrs. Deepa Malik could not be with us as planned, as she is undergoing surgery today. We wish her speedy recovery and good health. I thank Brigadier Vikas Bhardwaj, DTG Veterans Directorate for apprising us, and especially the war disabled, on the latest policies, orders, instructions, and provisions for the war disabled. Support of Adjutant's branch is very crucial to us and in all our projects, and we do hope that we finally manage to get the database of the war disabled person, which will enable us to help the war disabled personnel in taking on the challenges faced by them. Our thanks to GOC Delhi area and other officers of headquarter Delhi. Please, एक मिनट बैठ जाइए और शांत हो जाइए. और and Commander 35 Brigade commanding officers of the units of his command for going out of their way, meet our logistic requirements and looking after the large number of war disabled personnel who have come from different parts of the country. We also thank Subedar Major P. Dyalan and Dharmveer Sahab, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना इनोवेशन देने के लिए. I must not forget to thank General Goswami, Colonel Akhil Rathi, Squadron Leader Rana, and Ms. Shefali of the USI, and Colonel Khajuria, Deputy Commander, and Colonel Animesh AG of 35 Brigade for their support in organizing this event. In true spirit of armed forces, they will never no to any of our requests. My sincere thanks to Colonel Gulshan for his tireless effort in coordinating all the aspects of the event. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी war disabled सैनिकों का. आप अपनी परेशानियों और तकलीफों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए और उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ आने से आपने कुछ आपका फायदा हुआ होगा, आपको जानकारी प्राप्त हुई और इसी तरह हम मिलके आप लोगों की जो भी परेशानियां उनको दूर करने की कोशिश करते रहेंगे. I would be failing in my duty if I do not thank General Oberoi, the outgoing president, whose idea it was to set up the foundation, and General Cardozo, the outgoing vice president, who along with General Oberoi gave the war disabled a forum and a voice. The new team has large boots to fill. Our best wishes to General Mistry, General Hardev, and all the new directors of the foundation for taking forward the great work done by these stalwarts. Thank you very much. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहीं बैठे रहें. जो लोग वॉर डिसेबल्ड इधर बैठे हैं इस तरफ आ जाए. हम लोग एक फोटो खींचेंगे जब बाकी गेस्ट चले जाएंगे तो आप लोग के साथ एक फोटो खींचेंगे. तो कृपया आप लोग इधर आ जाते. इफ देयर इज एनीवन आउटसाइड यू कैन रिक्वेस्ट देम टू कम. एंड आफ्टर आप लोग बैठे. और आगे की कार्रवाई करने से पहले मैं आज के जो पूरे प्रोग्राम के 2 MCs है और जिन्होंने पर्दे के पीछे बहुत भागदौड़ करके ये पूरे सेमिनार का आयोजन किया, हमारे MCs है कर्नल अमिताभ अमित और मिस शेफाली ओबरॉय. उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी वॉर वुंडेड फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा मेमेंटो एक्सेप्ट करेंगे.
कर दो Thank you.